मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार?
मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन। है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन। है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन। है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन। है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन। है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन। है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार। Well, hello, ladies and gentlemen. Once again, we welcome you back to the Arunoday Esports Championship. And as you know, we are really nearing to the LAN stage. And what's very important is going to be the LAN qualifiers. And we are in it for now. Today is going to be the last day for this LAN qualifiers. And we have 4 amazing teams still battling it out to qualify into this, amazing events. When I say amazing, I just say it twice because it is that amazing, ladies and gentlemen. And I think I've been repeating this word quite a bit, so let me just throw it to Crucifix, who's going to give us a bit more update about the situation at hand. Yeah, I'm not really sure if I can actually keep up with you, my friend. I think you should actually take the reins on this one. But hey, Caster Desk, Shinryu, the man, the myth, the legend, and me. Hey, but what about the whole team section that we're going to have? We're going to have a match between Team Yama Esports and Team Crimson Echo. Yama Esports, well known, well loved. I think everyone knows them. I think everyone knows what they're actually capable of. But could you just give me a little bit of an introduction on the Crimson Echo? Because this is the first time I've seen them. I think for Crimson Echo, they have made quite a bit of stir around the community, not because they are a very dominant team, but because they have been, I think, rising as one of the new challenges, right? Because we have seen some of the teams being at the pinnacle of the Indian community, of the Indian gaming community itself for MLBB or ML MOBA 5v5 in this case, because we have a different version. But at the very least, I would want to mention that the teams, when they are forming their
startup, it's very important how they are building it. And I think Team Crimson Echo is one of those names that we have seen time and again being out there, because there's a mention. I mean, there are some people who have been quite experienced. For example, PYZ. I think you've heard that name from Evil Esports, right? So Oh, people like yeah. them have been already quite experienced all around the Indian gaming, because they have been there from a long time. And I believe such experience really brings a lot more elements out of the team than it would there with some other people. I mean, to be fair, yeah, I've actually seen PYZ, but again, the rest of the team are really not something that I'm actually, familiar with. I believe that they can actually shock me in ways that I actually, wouldn't expect. I mean, Yama Esports pulled one of the craziest things out of nowhere. They actually posted up the Mia all of a sudden between a match, and I'm just like, I yo, know, right? this is not supposed to be okay. This is actually not okay. But again, they actually ended up winning with Granger in the mid lane, well, physical damage in the mid lane, and marksman that's not been in the meta for like forever. But hey, talking about that, we're skipping through the drafts, my friend. Ban phase one going through. We've got the Gata Gacha, Zushin, and Kalia getting banned from the side of Crimson Echo. I think they want to actually keep up the keep away the zoning potential from the side of Team Yama Esports, cut off their ability to actually keep, a Crimson Echo on edge. I believe that's actually the plan here. But look at Yama Esports. They've got the Claude, a hero that's been rising in popularity, especially after, a little adjustments with the, Demon Hunter Sword, which again, when the ultimate state, it actually gives them a lot of HP regeneration. It's actually kind of crazy. Yuzong, a staple in the meta, and also Sora. Ban's done. We've got the first picks coming through. Yes, I think the ban itself reveals a lot about this current patch, where the heroes that can break your momentum, the heroes that can, break your formation, has been the one that have been eliminated throughout the drafting stage, throughout the banning stage, to be very exact. But Fair the enough. fact that you cannot take every piece out of the puzzle is something that's still gonna be creating problems. And since this is a best of five in the series, I believe we might just see different heroes being in the banning section. For now, the Hilda was left open, and I think Crimson Echo, they know it too, that if you wanna counter the squishy targets, if you wanna avoid facing an assassin, then you need to pick up this hero. This hero is make sure that you do not face the assassins. But what does this do? It kind of makes your draft limited, because you lack the crowd control ability. You do not have that, a pick off. But I mean, you have the pick off potential, but you do not have that, I mean, the CC ability, or in general, you're single targeted, right? You're not able to do or make multiple members back off at the same time. So you have to choose your target in this case. But then again, heroes like the Fredrin, like the Esmeralda, they have been popping quite off in this meta. They have been really good in their respective roles. And I think with the fighter meta falling off a little bit in this M7 patch as well, we are looking at the marksman rising again, isn't it? So the Claude ban, the Harith ban, quite expected. And then again, the East Shin versus the Fredrin. This is something I think we have been seeing, the classic matchup, isn't it? True. I mean, Yusachay can't really burst down Fredrin late game. I believe that the early game it's kind of easy, but again, he needs a lot of teamwork with his, compatriots to actually get down to Fredrin. But look at that, we've got the Lapu Lapu getting picked in the EXP in the gold lane. Look, the adjustments for the gold lane, I believe that they've increased the amount of gold that they get from the siege Yeah. minions. That kind of makes no sense, to be honest, because that allows the fighters to have a better mid game than, the whole idea of getting the marksman online quicker. Because obviously the marksman will get online quicker, but you're practically giving away free gold to the gold lane, fighters now, which makes no sense. Kind of counterintuitive if you think about it, but the second banning phase rolling up, we've got the carry getting banned, and I believe the Fredrin being there is the whole reason why, the carry got banned. They've got three frontline tanks, well, beefy heroes at least, not tanks, but Lapu Lapu is like a super, versatile hero, can do everything and just he's just versatile in general. But again, I think the carry was a very needed ban there. Excuse me for that. You're absolutely right. I think the carry was much needed ban out here, and the fact that you mentioned the gold right onto the cannon minions and everything, I think it's not therefore. I mean, basically, the idea behind it was for the late game, some of the heroes they can get the items quicker and get online, because the fighter they
fall off in the late game, kind of, or sort of, right? And the True. marksmen, they might be able to just do something. That's what the idea is behind that patch update. But then again, I think if you know the game mechanics quite well, you can just abuse anything. And this is something that you have Sure. correctly mentioned. The fighters, they can also benefit from that extra bit of gold from the get-go. And if they come online much quicker in the early game, I think the mid game is quite detrimental to most teams. That's where the game kind of shifts, it kind of slips out of your hand. And we have seen time and again, these fighters have proved it quite well. And again, you see the bans are really centric towards the heroes that can cause problems for these fighters. Whereas Crimson Echo, they are going for a very typical front to back composition, I would say, trying to protect their backline, having that frontline peel for them. So I think they need a few more heroes that can stand toe to toe against these front lines that Yama Esports have picked so far. But I still believe they lack little bit of damage from Yama Esports. Look, I'm gonna be very honest with you. You're absolutely right, but there's also this one thing that I actually want to mention. The only possible counters to certain heroes like Lapu Lapu is CC and maybe Kimmy or some other heroes like that. So the whole lineup for the side of Team Yama Esports is well drafted. They've got the carry getting banned off, so that means the tanks are gonna be safe, or at least in the late game. They might actually have more chances of surviving. The CC is gonna not be there in the gold lane to harass the Lapu Lapu, with the range, obviously. The Zushin not there, so the potential kiting and everything is not going to be there either. And we've got the Kimmy getting banned, so they have a free time to just roam around and do damage as they please. But look at that, Yama Esports, they go in and get the Khalid as the first pick for the second picking phase, man. I still believe this is way too tanky for the side of Yama Esports. Like, I do understand, I do get the idea that they want to just flank in, they want to dive in with everything that they have, but is that all you want to do? Because I still think the late game is kind of lacking. All you have for the late game would be the sustain, whereas Crimson Echo, they're really going for what I mentioned, the front to back composition with having three damage carries and two frontliners that can soak a lot. But then again, they can suffer at the same fate because you see the lack of crowd control, which we begin with, right? With the Hilda pick as well. Even the Terisla, the penalty zone is all that he has. Apart from that, there's not much crowd control that he can, add to the table for the side of Team Crimson Echo. But then again, they have the slowdown Oh, from the Eve, and then I think it should work somehow or the other, but they're very centric towards the team fight. Whereas Yama Esports, they are like focusing more on the rotation as well as the way they can put pressure onto those team fights during the neutral objective takes. man, I'm gonna be honest with you, dude. The only hero that I can actually see possible as a pure, nuisance to the sided team, Crimson Echo is Lunux. Literally everyone else is just this person that's just going to be there, allowing Lunux to have, an easy way to escape or engage whenever she wants, whenever she pleases. The sided team at Crimson Echo, I think they actually got a well drafted setup for themselves, but do you really think Yama Esports is just going to let them have this victory? Because, hey, we're in the land of Dawn, and we've already got Khalid jumping into the enemy buff, trying to invade. I think he's trying to just get some vision, get himself some levels, and he's just invading with a concussive blast. He's doing a lot of damage. Regeneration, no, regen spell at least, was baited out, set low on HP, can't really engage. Hilda now engaging into the fight. Yeah, it's already a setback that the Oh, oh, junglers will be oh, facing, and they're not done yet. Look at that Alum. Will be so aggressive, and that's a bit teasy. He's just want to be on the faces, but now he knows that he cannot escape out of that oh, tough oh. spot, so he has to let go of his life, but he did the work. He's lowered down the farm for the season Shin. Man, and he also got himself 200 extra juicy gold, dude. A first blood kill, dude, that's gonna go a long way. And plus, he's got himself level 2 now. Yusa Shin still stuck in level 1 trying to get his red buff in the mid lane. We've got a little engage. Yve taken a back. I think, obviously, Khalid Alam is going to be okay, A-okay. So I think it's all well and good, I believe. I think it's pretty calculated from their end. They just want to slow down the farm for this Ethan Shin, which typically will help Raren to just farm up much quicker. And then again, you have to remember that they do not have a marksman, so like lowering the farm would be very important. But PYC almost took down Alem out there, but the quick sand guard will heal him up, which is a very good sign. But once again, you can see
there has been no further disruption in the farming for this extension, which I think is much needed by the side of Team Yama Esports. Just once is not enough. They need to put more pressure on this extension to avoid him from contesting this turtle as well. But as the turtle is here, I think a setup of pressure around the turtle pit is inevitable by the side of Team Yama Esports. I mean, now they've got the advantage. Look at the Fredrin jumping in. He's got the taunt. He's got the damage with Beol behind him. Look, out. Penalty zone engaging in the enemy's faces, but I guess that's not going to be enough to get any kills. We've got the Mountain Shocker, but to no avail. The side of Team Crimson Echo have wasted so much of their resources that they can't really engage for the turtle. But look at that. Alim, a bit sleazy, got himself a lot of HP after eating a bunch of sand. I believe that's the way to go. You eat sand to actually, regenerate. Very smart. Absolutely. It's quite smart, and this time it's going to be Zitad, not Toby playing the golden. So a little bit of different approach, but I think it's still going to work. But again, Alam will be the one getting all the pressure, but the Hilda is quite missing out on the main objective, that is protecting his damage dealer, and the fate for this grandeur was almost sealed by the Esmeralda, right? That's what she says as a dialogue. But then again, he will be able to get back off, still holding on to the flicker, which is very important for him. Look at the level gap, dude. Raren, who's supposedly picking a hero that's slower in terms of jungling than Yi Shin, is now one level ahead, which gives him the... Oh, look at that. We've got the Raging Sandstorm. We've got the taunt. We've got the ult. Securing the kill for his team. Yama Esports have the unadulterated lead here, man. And it's not actually looking good for the side of Team Crimson Echo. Absolutely, I think this is quite bad if you're Team Crimson Echo, because you really depend on that scaling on your heroes. You do need riotous items, and as you can see, the goal is not really favoring them. For all of the members of Team Yama Esports are on the list right now. As of now, it's just gonna be the EXP laner of Team Crimson Echo just being around in the top 5, but still, it's not enough. You cannot just expect your EXP laner to do much. But again, Dark takes on the jungler. And the jungler's out. We've got PYZ also getting taken out. Roam down. Now we've got Yeve's ultimate. That's going to do a lot of damage, surprisingly. Fredrin's Appraiser's Wrath. Raren takes down one more enemy. 3 for 1. I believe that's a good trade, but I love the way that the side of Team Yama Esports choked down the enemy, Hyper. Seth was forced to go to the enemy red buff, and everybody, after taking the blue buff, just went to the red buff, choked him out, and made sure he was taken down. Well, obviously, Carl was able to do a lot of damage to Esmeralda, but that's not going to be significant unless, of course, he gets a kill. And as we talk about that, Dark taking a lot of damage. Lapu Lapu, now he's actually kind of slow, but top lane, we've got Zetad getting the kill onto Carl, and that's going to be a big problem for the side of Team Crimson Echo, because if they don't have Granger and all the damage that he deals, he's going to actually miss out on the turtle, which is going to be a free one if you think about it. Raren now engaging and taking himself the red buff, capitalizing on the ability of Yi Shin, inability of Yi Shin to engage on team fights right now. And that's actually kind of, sad at this point. It's very, very bad. It's quite bad, because if you get this huge of a setback from the get-go, it's going to be very difficult for Yi Shin to just farm up. And as you can know, without any crowd control ability, PYZ might be just next on the chopping block, just few hits away from being taken down, and that's the roamer being down right before the turtle, though. Oh man! Oh my God, dude! Look at the way that Alam actually beautiful. Oh, spot lane. We've got a stun. We've got Terizla getting taken down. No way, dude! This is actually kind of crazy. The farm gap is real, and this is going to be a big problem. Raging Sandstorm. We've got the engage from the Fredrin taunt, and we've got a kill. Lukem dead. We've got Khalid eating sand midway during a team fight, which allowed him to escape from that clutches of the death. Obviously, Mountain Shocker basically tickling Fredrin at this point. Yeah, man, they're losing a lot. They're giving a lot of they're giving a lot of leeway for the side of Team Yama Esports. They're doing whatever and anything that they want, and because of that, the gold is now almost of 5k towards the side of Team Yama Esports, and this economy is going to hurt a bit, and you can see they're not letting Team Crimson Echo rest whatsoever here. It's going to increase with that tower getting taken out, my friend. It's looking very dire for Crimson Echo. They've already lost the early game advantage, and then now losing up on most of the objectives too. They haven't gotten themselves even one tower. Not even one single hit landed on the enemy towers, man. This is bad. It's quite bad, actually, and you can see now the jungle is theirs. This is no more a neighborhood. It's their own hood. And again, more engage coming in for the side of Team Crimson Echo. Raging Sandstorm, but Alam gets caught. He's out. Nope.
I don't think so. We've got OWZ Arc? escaping, and we got PYZ getting taken out instead. Carl finally getting himself one kill after the humiliating death on the top side when obviously Esmeralda took him down one on one. It's kind of necessary, but hey, this guy, he's not actually giving up. I think he has a plan. I think he's not going to just let the enemy, snowball. He's trying something. I believe it might work, but we've got the taunt in the mid lane. We've got OWY getting taken down by Roran, who put himself in the position of, taking a lot of damage. He's now got a lot of damage ready if he wants to engage with the Appraiser's Wrath. He's just going to use it on the minions, man. That's, I mean, anticlimactic. Yeah, quite literally. But then again, you can see Yama Esports, they're not forcing the third total of the game. They want to take the lot and look for a quick end. As of now, the score is 3 for 12, really, really favoring the side of Team Yama Esports. And if this continues to go on, if this continue to let it happen, I think Crimson Echo, they will not get their scaling anytime soon. And if they don't, then this draft will completely fail. Yama Esports so far have dismantled the front to back, which Crimson Echo wanted to go for with their flankable draft. And it has worked really great because, these heroes, they lack the early game damage one, and even though they can get the vision, they can get the setup, but you can see they're killing them inside their own setup, inside their own RWM. They're not really scared of taking a fight, and PYZ, every time he goes in, we don't see him getting out of the harm's way, and he just gets taken down time and again. And VO is literally not even being very kind to this. So, PYZ, he just wait. quicker, but now Seth is in a hard spot. He's got to actually get himself away from this, terrible, terrible Esmeralda, who's been overestimating, himself, I believe. I think, Esmeralda in the gold lane is kind of like very difficult to play with, but she's got the sustain to actually out-sustain the damage of Marksman. But she definitely does need like the early game advantage. Okay, I think there's gonna be possibly no invade or engage. What is happening? Okay, thank God. I thought they actually just left the board. But look, we've got a Raging Sandstorm, we've got Yves RWM. Weol has just used the Brilliance ultimate, and now he's gonna actually, escape. I think nobody's gonna be taken out just yet. It's a good decision for not actually engaging as of right now. I think it's actually a good position from the side of Team Crimson Echo. It's still fine because I believe Yama Esports, they got a lot and they have to wait for the lot to be coming from the lanes, and then they should just regroup and re-engage by sinking the waves as well. That would give them maximum advantage of the slot push. But so far the holy defenses are still intact of Crimson Echo, so I think it's not gonna be a game over yet. But then again, Crimson Echo, if they just lose their members left and right, it's gonna be very difficult for them. And Yama Esports, they're just trying to poke them quite low, and they're just trying to make them commit that error, commit that early engage, bait their skills out. And even though Raren will not connect that Appraiser strat, but I think it's still enough warning shots for Crimson Echo to just back off for now. With a lot coming from the top lane, I think Crimson Echo would want to clear that first. No, but the way they actually executed that one was amazing. But look at Zetad actually engaging inside the enemy tower. Good position. Wait. Lapu Lapu not surrendering. He's going to go inside to the Nexus area and make sure his presence is known. We've got Lord marching in, but we've got Penalty Zone catching four people. And now Terizla is going to be taken down by Raw Red. Nobody's going to be taken out from the side of Team Yama Esports. They're not being very kind today. Oh, we've got engages from Khalid. He's going to escape with that flicker, though. Dude, this is beautiful. The way they have this much, coordination with their team, it's kind of crazy. But one thing that I want to mention is the fact that Lapu Lapu took the advantage of everyone being in the bot side of the map to actually, get one of the minions in, and take down the Holy Blast, and then let the Lord march in. We've got now another kill. Raw Red getting the kill onto the enemy Marksman. We've got him using the Appraiser's Wrath to no avail. So he's going to have to back off for now. I think 12-15 second cooldown. Yeah, I think he has to wait for now because he cannot really be pushing so much. But as of now, they have done the work. They have taken down the inhibitor, but again, on the penalty zone here. Why are you engaging, my friend? We've got Zetad engaging in the back line. We've got more damage coming in from Dark. He's not going to be nice to the enemies at all. PYZ getting taunted. Now is not going to actually have any routes to escape. Bot lane tier 3 is also going to get taken down. Everyone from the side of Team Yama Esports are a little too low. I think that's a good decision for them to back off. And we've got the Appraiser's Wrath almost taking down Carl, but he's going to have a little bit of HP. I think he's lucky today. Oh, it's been too bad for Crimson Echo. They are really pushed back to the edge of the wall or edge of the hill. And
this is just too hard for them to actually even go against. But once again, Yama Esports, they're not stopping yet. Fraser's Wrath hitting the Natalia that was just standing in front of him. But obviously, they got one kill. OWY. That is Charizla, by the way. Charizla is supposed to be tanky. How is he not tanky? But look at the Raging Sandstorm catching 2, 3, and now the RWM, but to no avail, my friend. We've got Viol going to the back line, making sure 3 Oh, kills were nah. taken down, and no mercy to the side of Team Crimson Echo, because it's going to be a wipeout, because Raren just decided he wants to bonk someone, and that's what happened. Is gonna bonk and he's gonna get the game to an end with this push. This is gonna be Yama Esports scoring the first point in the series. Game number 1 is theirs. And guess what? It was looking quite like a stomp. I cannot put it in other way because there were not much signs of life from the side of Team Crimson Echo that we got to see. But man, even with 4 tanky frontliners, Yama Esports made it work somehow or the other. Be honest with you, dude. The fact that they actually got Lee Shin into a corner, backed him off, that's what led to them actually having the overwhelming advantage in this match. I'm gonna be honest with you, if Lee Shin got any farm at all, I'm saying at all, because bro didn't even get any buffs until 9 minutes into the game. And that's kind of sad to say. Indeed. I'll be that guy and I'll just say it. Do not pick an assassin jungler or a squishy jungler against tanky lineups. This is basically the most, obvious thing to do. You've got to make sure you've got a little bit of tankiness to deal with the tanky frontliners and their invades, because tanky frontliners always like to invade on squishy heroes and delay their farm. Now take a Lancelot, take whichever hero you want, Yisan and Hayabusa. You put an Akai against them, and you're basically going to lose the game if they invade. You don't have no damage, you don't have any priority, so you're gonna lose up on objectives, kills, all of them. Absolutely, and I, really stand with that. I think even an Xborg would have been much better in this game Sure. compared to the East and Shin, right? Because the Xborg could have counted them down. If not the Xborg, maybe something else. But again, even if you take a look at the highlights in this regard, I think you can see already that Alem was always tailing this East and Shin, not making his life any more easier, but harder, of course, for obvious reason, because he wanted his draft or their draft to just scale much quicker. That is going to be Yama Esports. But then again, Crimson Echo, they really wanted to play that early to like mid to late game kind of power spike. But then again, it completely got dismantled in a way that Yama Esports, they read it quite well. They knew what are the winning objectives for Crimson Echo, and they just slowly but surely made all those objectives follow. First, they just made the farming speed of this Ascension low, then they focused onto the goal lane, and then even inside the RWM, they were not really scared to take a fight. You could see Dark not flickering but jumping forward with the previous fighter every time the RWM was there. He just wanted a free hit. And then I think the way this Hilda was supposed to use was always and every time counted out by this Lunox pick alone. And listen, just look at this, dude. The fact that, obviously Ellen was, tanking and, taking all the shots that Granger was dealing, I think that was very, very well timed, very well played from their part. Look at the Raging Sandstorm, bro. This one kill, this guy Yeah. just starts eating sand mid-fight like a champion. I think Fredo would be proud. Absolutely right. That raging sandstorm is something that they could not get anything done of. But then again, I think Yama Esports, they did it quite systematically. They were like not really trying to do multiple things at the same time. They were just making sure they do one thing at a time, which really, really, put the pressure onto his Crimson Echo. If you take a look at the draft, I mean, not a draft, but the gameplay as well, you see, they're just trying to pick anyone that is in front of them. They're not necessarily trying to just, kill all the members at the same time. They just targeting one by one, even though they have a draft that can, fight multiple members at the same time, Oh, but they're just doing one by one. First, they take down the Hilda in every team fight, then they put the pressure on the next members, and that's really important to notice because anytime they want to go in, is not looking very much on the same page. The synergy was lacking after that setback which Crimson Echo got, so they were kind of hesitant to make this plays happen, and Yama is supposed to complete charge of that situation, and they made sure that the side of Team Crimson Echo, they get thoroughly punished because of that reason. I'm gonna be honest with you, this is very, very one-sided. And we all saw that. It's kind of like very sad, but also Crimson Echo really couldn't stand a chance against the tanky frontliners of Yama Esports. Look at that engage inside the tower, man. They're not
very, very kind here. And I think that's how they're supposed to be. If they have good communication, they have to make sure they use it to the fullest. And that's what Yama Esports did. Four tanky frontliners, not a single late game insurance hero. I would, well, Lunux technically, but it's late, no late game except Lunux. No late game at all. I think they already knew that they want to end the game much quicker, and they had the confidence for some reason, and it kind of paid off, right? If it did not, I think they would have suffered the same fate with Crimson Echo was. But the way Team Crimson Echo could have punished them in the early game was very minimum, though. Well, I mean, it is what it is. We just witnessed something very, very hard to actually swallow. I hope Crimson Echo can actually come back from this one. And, well, obviously, I think they should draft a little more to the side of, getting the enemies down. I think, Xborg, heroes like Xborg, Alpha, they could have taken down all, the tanky frontliners. They could have dismantled them. But again, it is what it is. Player of the match, though, it's going to be Zetad, who had amazing engages, has a score of 6-0-11. And this guy is not very, very, very sweet. This guy was just in the enemy's faces all the time. Yeah, man. I think this Esmeralda pick alone was really, really making things quite difficult for the side of Team Crimson Echo. And even though it was not just the Esmeralda alone, it was like the entire team. I think being on the face of the enemy is already annoying enough for the opponents. But more importantly, this Esmeralda was winning the goal lane. It was lowering the farm of the Grandeur, which was much needed, which is much required for the side of Team Yama Esports to win this game quite comfortably. But then again, if you take a look at the items as well, you can see the lead because of the gold, right? They had enough gold in this game, therefore, like they could complete like many of their core items, many of their items which would really give them a upper edge in this game. But then again, for the side of Team Crimson Echo, they had their items, they were getting it done, but it was already too late. Even though it was just a 12-minute game, I think it was already late for them to, be in that stage where the goal difference was almost of 14k. No, I'm gonna be very honest with you. This is very difficult to swallow. I can't really see Hilda PYZ literally have 181 score. I know, like, I've seen this guy play. He's not someone who would actually get this kind of score, man. True, absolutely true. I do want to double down on that. But the fact of the matter is that this game there were like a lot of ways that Team Yama Esports could punish them. And even though he was not trying to look for those deaths, he was forced to commit those errors because of the taunt, because of the stuns, and then they have a Lunox, which is technically another tank killer, but in the mage department, isn't it? I mean, you can technically count her as a tank killer because obviously she's got the HP based damage. Again, heroes that have HP based damage are a priority against your, Yama Esports, at least with this lineup. They've got four tanky frontliners and they actually picked the hero that could have actually, countered them. I think that was a good decision. Head to head, we've got the mid lane versus the enemy EX, gold lane. Obviously, Lukem actually played very well. His sets were amazing. It's just that his team did not have enough damage to follow up on their sets. True. But surprisingly, 5,700 gold is for Lukem, who was the MVP from the side of Team Crimson Echo, and Yama Esports 10,000. That's doubled almost. Okay, you can just say almost because it's 700 gold. If you negate it, you're practically seeing double the amount of gold on the enemy side. Yeah, man. I think it's just the MVP versus the MVP, so not the perfect lane matchup, but still the way they were like denied to perform was really really important in this case in this matter. But again, if you take a look at the sandbag, Ovi, he got the sandbag, but just taking the damage was not enough because his team was not able to deal it back. The carry though is gonna be Lukum, but I think it was just too tanky lineup for Yama Esports. They had quite a bit of heal as well, so the region was just overshadowing the damage which was given out of Team Crimson Echo for this regard as well. But it was a hard game number one for them. I hope they can just break down what happened and just do something about it because this is a best of five series, isn't it?
True, man. Best of five or not, I believe that, Crimson Echo still does have a chance because this is just the first game. We've got four more games. If they actually get two victories in a row, they could actually just get to that point where they can actually get like the third one and if they get the momentum on their side. But for now, at least, Yama Esports have got the momentum onto their side. They've won the first match in an overwhelming victory, by the way. And I think the drafting really needs to actually get some work done because Crimson Echo really did not have any options ready to take down tanky frontliners. We've got Yama Esports now on the blue side. They've got the first pick. So what do you think they're gonna actually go for? They're gonna go for the same strategy, or are they gonna try something different like a Mia? I think they Okay. might just not troll this time around because it's the land qualifiers we're talking about. Their leader might just, bong the shit out. I mean, bong the hell out of them. So I think Fair enough. uh, they might just, Appraiser's wrath. reconsider. Yeah, appraise his strat in real life by him. So I hope like they do not troll around much. But then again, I believe for Yama Esports they can still pick up the Lapu Lapu because they really love that hero and they can really flex it quite well into the EXP, into the gold. Either way, it works. Or maybe the Esmeralda too can work. But I arguably believe the Fredrin could also be one of those heroes which they would like to go for the first week. So any of these three heroes, because for Wile he can just play any most of the mages, so he does not have a problem. The rest of the players, it's not like they're one trick, but they are really comfortable on these heroes, and these heroes are also the meta right now. So why let it go when you can just perform really well on them? So I think they might just revert to those heroes. Man, if they actually want to flex around with Lapu Lapu, why not play Lapu Lapu in the jungle? Because, I think I can actually expect Yama Esports to, play something like that and try to actually pull it off. And maybe they might actually just pull it off because, I've seen them play a Mia and win. So, nothing is impossible for these guys. They're just in love with the game, I believe, and they're showing it. So I think Yama Esports could actually go for a Lapu Lapu if they like it so much into the jungle side, but I wouldn't recommend it. But all is fun and games because this is a game. Shin, I believe that there's a little bit of an issue here. I can't hear you. Of course, I have to get nerfed, otherwise it'll be Yep, too obviously. difficult. I know, right? So then again, I think with the Esmeralda being banned, I think for Zitat, he has to go for something else. Maybe a marksman in this game. Oh, I hope not, because this guy was actually having a lot of fun with, fighters. I believe he could switch up to take a Lapu Lapu and have fun in the gold lane too. I think that's actually a good strategy. CC is still open though, so I think that's also a good idea. Who knows? Maybe the CC could be a good pick, but with this the Fredrin also taken out of the picture. But like I mentioned last game as well, every series, or not every series, every game you'll see some different heroes getting banned. This will open up the Zushin for the side of Team Yama Esports, and I tell you, Vile really loves this hero. I'm not even gonna lie, dude. The fact that they just forgot about the Zushin, Crimson Echo, you guys really focused on banning the heroes that Yama Esports did. You picked up on the previous game, and also Sora. Yes, Sora is reasonable, but like if you want to actually nerf the enemies, don't just give them free heroes, dude. I think the drafting was fine, I think, but they left the Zushin open. But they've got Kimmy and also Lapu Lapu in exchange for the Zushin. I think that's not a bad trade. I think it's still decent, the Lapu Lapu plus the Kimi combination, but they need a little bit more than that for the for getting this game secured. Because for this game, there are still a lot of heroes which are left open and can cause a problem. Maybe the roaming heroes like the Hilda is given freely, and there comes the heroes which they are really like to using, or they are really reverting to use these days. One, Dark really loves the this hero that is Arlot, and he has been really good on that, popping off quite well. And if you have heroes that can contribute to the crowd control, then the Arlot can dash much more freely. You have to consider that. And with the Guinevere, with the Zushin, is much more possible. So I think this Arlot will have a lot of free dashes because of the passive.
And then again, the Zushin can punish the tanky members. Once she jumps, you cannot use any of your abilities if you do not have a Purify or maybe crowd control immunity. And the only hero with a crowd control immunity would be the Lapu Lapu, that too in his previous fighter form. True enough. 1 second. Could I have 1 minute? I'll just be right back. I hope my voice does not go away once again, but then we're seeing the second banning phase where they will be banning of the Hilda. So they do not want this Hilda to be causing problems for the side of Team Yama Esports. Oh no, so for the side of Team Crimson Echo, but then again, Yama Esports, they will be still denying the options for the not the roaming department, for the jungling department. And I believe still Yama Esports, they need some good heroes into the jungle. For Crimson Echo, they need some good heroes into the jungle, and the assassins could be one of the ways to go. If they pick something tanky, then the Guinevere can punish it down, but it depends on which hero they want to go for. But what are the options that they can go for? Maybe the Lancelot, maybe the Hayabusa too, because it can counter the Zushin. But since the Hilda is out of the picture, I think the Hayabusa can perform. But then again, there's the Khalid, there is the Kalea, which are left open. These heroes can also cause a problem. And then there's the Grok too. I think the Grok just got banned right now. So we'll just see. Yes, it got banned. So the Grok is out of the picture. But still, some of the other heroes which can cause problem will still be there. And with this, the Ruby will be the final ban from the side of Team Yama Esports to just let them have an easier time onto the goal lane, I believe, because this Lapu Lapu's still being a flex can also go to the EXP lane. And as of now, Crimson Echo, they already have a marksman in the mid lane, so they can still try to just play for double fighter comp with a tanky frontliner, with another tanky frontliner. And with this, the CC joins the lineup of Team Crimson Echo. So this is still looking good, not very shabby, I would say. But the range is something I'm kind of worried about, because with the Karutkaza jumping in, it's only the Lapu Lapu which can follow him up. The CC does have a really good mobility. The Kimi can deal damage from a little bit distance, but then again, Yama Esports, they can really pick off the Karutkaza, the Lapu Lapu quite easily with the Zuxin, with the Guinevere, and even with the Arlot, they can make the positioning really, really advantageous for themselves. So as of now, Yama Esports, they still need to go for their goal lane as well as the roaming, and the roam still can put a little bit of surprise factor. I believe they can go for something like of a heal, it can still work, but then again, we need to see what will be the choices. But again, just 2 seconds remaining, we will be seeing what are the final picks for Team Yama Esports on the board. It's gonna be the Hellcat plus the Xborg. The Xborg against the CC, I really love that matchup because it favors the team. It favors the Xborg in some regards, but then again, the CC, if she gets pumped up much quicker, then she can actually punish them down. This Hellcat is still a question whether it's going to be a roam or a jungle, because the Guinevere 2 can be flexed out here. So both the heroes could be good. But then again, ladies and gentlemen, if you are just joining in, today is going to be the last day of the LAN qualifiers in the Arunoday Esports Championship. So far, 4 of the teams have already qualified, 2 more remains. So we have 2 teams already, I think 3 teams already qualifying from the Open Qualifiers. And then wait, I need to just reframe that. But then again, we have the last day today, and this is going to be the first match in the series. The second match is still due, and we will look how this game goes, as the Joy is going to be the final hero to be locked in to the draft of Team Crimson Echo. So really a matchup between the Joy versus the Guinevere, whereas the Hellcat is going to be a roam with the Inspire, something very new that we have not yet looked at. So we'll see how this one goes. But again, ladies and gentlemen, if you're just joining in, don't forget to like, subscribe, and share the stream, because it's not really over yet. This is not the finals. This is just the LAN qualifiers. And after this, you will be watching the LAN directly live from Arunachal Pradesh, most likely Itanagar, and the dates are yet to be confirmed. But then again, ladies and gentlemen, welcome back to the game number 2 in this first match of the series. And we are looking at Team Yama Esports taking on against Team Crimson Echo. This is a match number, I mean, it's first match, but the game point is not yet achieved. Yama Esports, they did win on the first game, but now they want to look
and apply pressure for this game number 2 as well, so they can get quite a bit of lead in the series. But it all boils down to the point how they can just avoid making any kind of mistake. And also for Kizumeko, this is their chance to just go for a reverse clapback. But again, you can see Raran getting taunted, can really get out with the situation migration for now, but the flicker also made it out from Wiley. Quite a bit of stretch that Yama Esports could have gone for. But then again, I want to correct one thing. This Hellcat will not go for the Inspire, he will go for the Execute, which can help him secure the kill slot easily. So most likely this is going to be a damage Hellcat, not your typical, tanky Hellcat, which I would not really also advise one to build. But then again, PYZ want to scout around the map, open up the vision for the team, whereas you can see already this Hellcat is putting or applying pressure towards this Joy, whose life will not be anything easier, if anything. But then again, OV onto the top lane has to be careful as well, because the Hellcat will be rotating around there, putting the pressure as well. The stun connects, but they do not have the skills to take him down yet. PYC with the rotation will help him down. Alam needs to get out, should have the dash back up. He's just trying to buy some more time. Put PYC really in a bad spot. He's just too overextended, does not have the revitalize anymore, I believe. He's trying to back off, but the pull-off will be there. There is the final hit, and Wiley will get the first blood, and one more kill into the pockets of Team Yama Esports. Dark takes down the mid laner. The Kimi gets taken down already. That is Lukum. Not Lukum, that is Ovi falling this time. That is actually Suzumi actually falling. They have switched the roles, but Wiley really extending the team fight without the flicker will get punished. And this is a really back and forth trade-off that we're looking at. So far, the turtle has spawned, and Yama Esports, they're not yet starting it. So are Crimson, they're still trying to start it around more, but Susumi needs to be a bit careful. He just got the skill head onto his face, but not yet taken down. But again, they're still trying to apply pressure out here. And Trinzumeko is still trying to know where the members of Team Yama Esports are before they just try to go for a little bit of more pressure. But then again, Obi wants to go in with the bravest fighter, wants to just get the kill onto Raran, but now he's applying the pressure on towards this Arlot that is Dark, but still able to get in with the vengeance. But here comes the electrifying beat. The rhythm of the Joy, actually not the electrifying beat yet, will take down Dark. That's the EX player down. Despite using the flicker, will not be able to survive. So this is a member down for Team Yama Esports, but the turtle fight is not yet over. As you can see, Crimson Echo, they're already trying to start it off. Raran is there near the vicinity, near the turtle pit. But will he be able to steal it out is the question. Again, the electrifying beat back up from the cooldown. And right now, Zitat will be joining the party. And the AOG will be dropped down. And the Violet Requiem will be immuning that. The AOG was absolutely perfect. We've gotten that right now. The final slash from Viol gets the kill on OWY. But hey, Shin, I believe that I'm seeing a Hellcat as the roamer. Yeah, man. This is the roamer Hellcat, the damaged one with an execute, man. Like I know what they're trying to do, but it's kind of risky if you ask me. Can I be honest with you? Why the execute? Why not petrify? And apologies, today is a busy day, and there was a lot of things that I had to do, so I'm just covering that up before I continue casting. Apologies again to all the viewers and to you too, Shin, for making you carry throughout the first 4 minutes of the game. But look at that, we've got an engage. And OWY escapes But once pretty again, easily. yeah, my life has not been easier either, man. This mic is just not helping me out tonight. But then again, the game should not be stopping out there. But so far, even with the setback that Yama Esports got, but up top though, the final slash does connect. But oh, he's still trying to survive, but will not be able to do so. He gets taken down. And now we've got a continuation of that team fight. Raran using his spatial migration. He will get caught by that, traction projectile, and I think that is going to be the end of Suzami? Suzami, is that what it is? Tsunami? Suzumi. My bad. So Suzumi is going to be taken down. Is there I missed out on a bit. I think there's some role swap. I think someone actually was substituted. Definitely there is. I think they just switched out one of the members to get Suzumi into the lineup and Oh, Carl696, obviously. But look at that. We've got Seth getting, a kill again. Hellcat being taken down. Revenge for the first kill last match. We've got Viol in a tough spot. We've got
no follow-up from the side of Team Crimson Echo, though. They have the advantage, the overwhelming amount of damage that they're actually dealing. But again, Yama Esports are definitely not too far behind. We've got, Dark engaging inside the tower. With the flicker, he's able to escape, but the AOG is probably going to connect, and it does connect. He's now between a rock and a hard place. But that sacrifice is actually kind of, very good, because now the Lord Turtle is going to be easily taken from the side of Team Yama Esports. The objective-based gameplay is there, but CC getting the kill on Hellcurt might actually just, equalize the score. So far, yes, they're trying to equalize the score, but it's not really enough. I think Yama Esports, they are just, healing them Look at- quite back up. I mean, it's a 1v1. I think this is a team fight which Xbox should be winning out. Oh, wait, the last insanity does not really connect on mid lane, though. Violate. Oh, wow, dude, that was not nice. But again, that's what they did in the first game. Yama Esports getting a taste of their own medicine. But now I think Dark and Raren not being there was the biggest reason why, Viol was taken down. I think, the coordination from the side of Team Crimson Echo has up-anteed, and I think it's actually working for them. I think Suzumi, the substitution was required here. I think that's actually going to change a bit in this game. Raren probably looking to engage. Does not use the spatial migration, uses the passive to actually jump and clear the minions instead. The ultimate, no ultimate. Oh, we've got the spatial migration, the Purify being baited out. We've got the AOG too, but Violet Requiem is able to actually, immune it. Lapu Lapu, though, getting the kill onto the enemy Hyper, Raren, and also one more kill on the backside. We've got OWY doing a lot for his team, but the engage might not actually just follow through to anything important. But again, then invasive attack from Viol, dude, it's crazy. This guy is not actually very nice either. Again, Zetad and, his friend Viol, kind of like, covering it up. We've got a Maniac! When did that happen? I mean, I did see the triple kill, but holy crap, that actually slipped my mind. Holy Moly, this is like quite unprecedented from anyone's end, and this is gonna be Crimson Echo putting quite a bit of pressure on even Yama Esports. They're trying to fight back, but it's not really favoring them. Sometimes they're just overextending at quite a false cause, and because of that, they are getting the advantage sometimes, but other times they're losing it, right? But with this Lord already spawning, I think we might soon see another skirmish about to happen. And I think Zetad actually taking the front line for his team is actually a good idea, because obviously you want Dark to get the final flash at the right moment, not, just use that as an engage tool. And Zetad is kind of understanding on that. Like, he's playing around that. He's allowing, Dark to get himself a good position. He's trying to actually, bait the enemies to and attack him so that Dark can actually come in and use the final slash. They are now starting with a Lord dance. It's not going to be a complete, commitment to the Lord. But they're not actually they decide on resetting the Lord, which is a good position. Everyone from the side of Team Crimson Echo is right there. I think Hellcurt is trying to split push. Might actually work, might not. Who knows? I think the split push should be a good option, but still they're applying pressure onto the mid lane. Will they survive that Violet too deep? Oh, Viol is going to get taken down, dude. Not actually kind of good, but look at that. We've got Zetad also getting taken down. Seth is going to trade 2 kills for a tower on the top side, but again, that 2 kills could eventually lead to an easy Lord for the side of Team Crimson Echo, because Raren is low on HP, cannot engage. CC is swiftly going to the top side to actually, counteract whatever push that Hellcurt actually bringing to the table. OWY trying to actually put some pressure onto the enemy EXP laner. Dark forced to go back. We've got Raren jumping in. He's got himself the ultimate, but it's going to be Alum that gets the kill on Kimmy. Unsuspectingly, Raren is now caught between a rock and a hard place. He's going to use the spatial migration. He's going to escape from there, but again, Lord for 2 kills and a tower? No, 1 kill and a tower. I think that's actually not bad. Not too bad, not too shabby. So far, I think it's still going to be favoring them, but time and again, they have been making those mistakes, and Yama Esports, they should not be willing to make such mistakes. For Crimson Echo, this is too good. I would say they are making Yama Esports come into those mistakes, and that's why they are getting that upper edge. And once again, up bot lane, though, it's going to be a 2v1, but still, I don't think so. There's a fight that Team Yama Esports are willing to take, and nor Crimson Echo. They want them to make a mistake, but the Lord not really taking advantage of, not really giving too much of a leeway for Crimson Echo to do anything. True, but again, the one thing that I'm actually kind of worried about, the ultimate from the Hellcurt has been baited out. Why was he running in circles?
He's just letting CC free hit him. What? And we've got the flicker and also the ultimate, the last insanity, taking down one of the enemies, OWY. And we've also got PYZ getting taken down too. But CC, the top lane, gets free farm, getting 3 hits onto the tower. But I still am kind of confused as to why Alum did that. Why would you do that? Why were you running around in circles? You can't kite someone that has target lock. I think we will never know. I think we'll never know the answer for that. But it's just that this Hellcat room is kind of not working whatsoever. Like he's trying to do the things he's supposed to do, but I think they're not just. I mean, it's questionable sometimes, like what he's trying to do. But then again, Crimson Echo, they're not really letting go of this mistake which Yama Esports have made, and they're taking full advantage of this one. When I said they can troll, it doesn't mean they actually should troll, but look at that, we've got the ultimate from the Zushin, but the stun from the Lapu locking them down, and we've got the AOG also committing to the enemy's faces, but again, no real kills whatsoever. I believe that the side of Team Crimson Echo does not really have the damage, unless of course they actually have Kimmy and also Seth together, but we've got Zedtad doing a lot of damage, true damage. He's now using the last insanity, doing a lot of damage to the enemy's faces. We've got Viol getting the kill on Lukem. We've got the ultimate from Seth coming up in the back line, but Viol is going to get 2 kills, but he does not have enough mana to actually commit to any fight whatsoever. It's going to be a shutdown. Maniac now, because Viol is taken down. Seth is not looking for a savage. He's going to look in to get the kill, no, get the tower. And Dark does not really have an option to escape from there. He's like fighting 2 people. Cannot really escape from this one. And Seth has the opening he needs to actually push himself into the tower and into the enemy nexus. Dark now trying to make his way to the tower. But I think there's not going to be an end game for the side of Team Crimson Echo just yet. We've got the final slash. 1 kill. Seth out of the picture. Killing spree for Dark. And now he's going to engage onto the Lapu Lapu, who is trying his best to, do some damage to OWY. But again, Dark is just too good with a Lapu, not Lapu. What is the hero name? Arlot, man. And Lapu Lapu stood no chance. Absolutely, I think this is just Yama Esports just reverting it back. But now with this lot that's getting pressured by them, just getting forced in by them, is this a really good call? I mean, it's a good idea if they actually could burst it down. Seth is down, and I think that's actually going to be a big opportunity for the side of Team Yama Esports to get a Lord and maybe push the tower on the top side. I think the Lord will march on the top side because they definitely do need an advantage now, and the Lord seems like a very easy choice because obviously once the enemy hyper is down, they can't really commit. They've got no damage to actually steal the Lord. We've got the CC, we've got like Kimmy, but Kimmy already used the ultimate. CC does not have enough, target lock onto the Lord. It will definitely target lock onto the enemies, so I don't think it's actually a good idea to engage. So they did take the opportunity. Yama Esports getting themselves the Lord was the smartest choice here, and Seth really made a mistake there. I don't think that was actually a good idea for him to actually, try to push the tower. Yeah, I mean, it is what it is, man. It is what it is, but so far, even with a lot, Team Yama Esports, they're trying to take down the tier 1 onto the mid lane and the bot. So there's yet, wait, mid lane? Oh, Bo is able to actually get the kill on OWY. We've got the final slash from the R-Lock, but now we've got Seth going to the enemy back line. Viol trying to run away for his life. I think that's actually a good idea for him because he can't really afford to, engage anymore. Unless, of course, the enemy Seth's ultimate is on cooldown. Electrifying Beats was off, on cooldown. I think that's actually a good idea for him to engage. But look at that. The amount of pressure coming in from Yama Esports, man. Crazy stuff. Absolutely. They got 3 towers down, I think. Yeah, I mean, they're still doing good with this lot. I think they got a lot of advantage of it, but what will they do next from here is a big question. I believe that Rodrin was able to escape from there, and I think he can't really engage anymore. Alim coming to help his team, but again, the enemies know that they can't really take a fight here. They're deciding on backing off, because obviously the 4,000 gold difference is going to make a big change. And let's face it, the Lord just got taken down. The minions are, going to put a lot of pressure. Top lane tier 3 also taken down. That kind of like equalizes. No, actually it does not. Team Yama Esports has 4 towers now, while the side of Team Crimson Echo only have 2. Yeah, I mean, it's still a very close game, but another skirmish taking place around the mid lane. I think this should not be a fight Yama Esports should be willing to take here.
Oh, but look at that. Seth is going to get the kill on Viol. And now Arla is going to be stuck between a rock and a hard place. 3 people against him, but Seth is going to be forced to go back. Zetsad is not going to be that easy to take down, especially not, right now, even with the Piraga armor off. Look at that, though. Elam has an opportunity to get the kill on Tsunami. Suzumi. Sorry. Tsunami as well, or, him. I think he got a new IGN today. Tsunami, not from Suzumi to Tsunami, man. But still decent. I think the way Seth has been making those plays happen for his team is what is keeping team Crimson Echo in this game. And if it was not for him, it would have been very difficult to actually secure those kills onto the backline. And I think this choice was working really, really well. But then again, there are times when he's not being able to secure all the kills, and that's where Team Yama Esports are clapping back. And anytime it's anyone else apart from Seth who's diving in, I think Yama Esports have an answer for that. But it's just that Joy, who is very difficult to catch, is causing problems for the lineup of Team Yama Esports. But then again, they have gotten that last lot, the previous lot. But with this next lot already onto the map, the team which can secure this, I think they have a much closer chance in closing this game and getting this point of game number 2 towards their side. I don't believe so. I think the Lord might easily be defended by both teams. Well, Crimson Echo might actually struggle a bit, but I think both teams could defend this Lord. It's a 16-minute Lord, unless they actually, delay it to the 18-minute Lord. Then it's going to be a little too difficult for Crimson Echo to defend against it. But Yama Esports, I believe that, with obviously Zetad, Xborg, and Arla, I think they would be able to defend it easily. I think it's a good possibility, but Crimson Echo still do stand a chance of defending it too. True enough. I think there is still some way or the other that can cause a problem. One thing that can happen could be a backdoor by either of the teams, because the mid lane inhibitor is down for Yama Esports, whereas the top lane inhibitor is down for Crimson Echo. So if they just make a mistake in reading the map properly, that could cause a very dramatic end to this game. True, but look at that. Alum is actually trying to run away. He's used the ultimate. He's turned off the lights, and I think that cockroach is very hard to catch when there's no light spam. But look at that. We've got an engage possibly. I think the ultimate from the Kimmy is not actually just used yet. We've got Seth using his ultimate, though. Firaga armor taken down. I think they're going to commit. Viola is going to get the kill on Zet, but Lukum is going to take down Dark in the process, and one more kill for, Tsunami, yeah, Tsunami's better. Suzumi. Tsunami's better now. I'm sorry. Okay. But they did lose. Yama Esports did lose two, of their allies. It's going to be an easy lord, possibly, even without, the hyper, if Raren decides not to actually engage. But I think he does have the retribution. He might be willing to take down the lord, but he needs vision. I don't think he's getting any. I think losing any more member would be... Oh, wait, they're going in. And I think that was actually kind of too late, but okay, Raren, that was not a good idea, my friend. You're gonna lead. This is going to possibly be an easy win for Crimson Echo, unless of course they fumble. They've got a few tanky frontliners, 3 to be exact, and they've got the Lord, the 18-minute Lord. I think Xboard will be able to actually defend against it. But look at that, we have got the AOG catching Dark and putting him in his place. Because all this time, he was actually a big nuisance for the side of Team Crimson Echo. Viol now, he's not going to be very, very easy to take down because obviously, Tsunami is going to be able to take him down, my bad. But they are going to stop the Lord from marching in on the base. Raren, surprisingly, respawning in 7 seconds. Zetad really just has to keep himself alive for a bit longer. But again, he's going to be taken down pretty quickly. Tsunami taking that kill and the Nexus along with it. This is it. This is going to be game number 2 coming to a close. And Team Crimson Echo actually equalizing the score. It's 1-1. It's not a 2-0, ladies and gentlemen. It's going to be Crimson Echo still showing signs of life, still showing spirit of fight. And guess what? That Hellcat roam didn't really work through for Yama Esports. They kind of baited on that. They kind of tried to use something different, but that difference was just not really favoring them in this matchup. But for Crimson Echo, I think it was a really good joy pick for them. Like, it really made a lot of difference. Because, you see, we saw 2 maniacs, and one of them were from Joy. I think, was both of them from Joy?
I'm just missing out on things. No, we saw one Maniac with Viol actually in the early game, and then well, she had the Sky Piercer. She had the Sky Piercer, so he was able to actually he or she was able to get the kill. I think it's a he. My apologies. He was able to get a kill, and he was pretty dominant throughout the early stages of the game. But again, later on we had Joy getting the Maniac to equalize the score and make sure that Yama knows they can't really mess around anymore. They did with the Hellkirk pick, obviously. They didn't have any hard crowd control with against the Joy, obviously. You've got heroes like Fredrin, Belleric, who are soft counters to the Joy, which is actually a very important thing that you need to have if you're going to engage against Joy. Look at that, though. Viola didn't have stand a chance. I mean, obviously, early game she did, and she was able to actually secure a few kills there. Look at Dark, dude. He's absolutely relentless. But again, the moment Set started jumping up and getting into fights, well, targeting Viola especially, he was able to actually shut down whatever damage the Yama Esports had to bring to the table, and that actually led to them True. losing the match, dude. Look at that, highlight. Viola was able to get one kill there. I think that was not the maniac that we actually expected. Absolutely. I think there were times where Yama Esports, they were really too aggressive for no reason. Oh, And I know their playstyle is aggressive, their playstyle is aggression, but then again, sometimes that aggression can be working against you. And in this case, we saw that. Like anytime there is a fight which Crimson Echo wanted to take, Yama Esports were very quick to respond. They were very quick to actually answer back. They were like, we want to take this fight as well. And that is not something you should be doing when the other team has the advantage. Out here, Yama Esports, they stand a very good chance in ending this game, but that overextension during those team fights, those overextension during, unnecessary fight takes, even in the middle, and you see 1v3, he's still taking that fight. Like, for what? And then Alan goes in to get what is the question. Like very questionable decision making sometimes by the side of Team Yama Esports, which is not good because if they want to make into the qualifiers, such error in decision making should not be happening. Such mistakes should not be happening in the first place. But for Crimson Echo to take advantage of such mistake is oh, here something it that is. really, yes, here it is, right? The Maniac by Wiley. But Viola. then again, I mean, he really placed himself really well in this one, but it was just the overextension gone wrong by the side of Team Crimson Echo. And Yama Esports should not be taking this fight. That's what I'm saying. But for Crimson Echo to be able to punish the members like this is really a sign that their draft or their lineup is This really one. focused on punishing, right? Yep, Hey, this look one at too. this one. This was absolutely horrendous. What was he doing? Bro, he's just running in circles. No, don't do that. No, stop repeating this one. It's actually giving me a headache. Oh my God, this was horrible. But look at that. We've got another one. Zed is absolutely is mistakes quite here. bad. Like honestly, it's quite bad. They should not be making this mistake. This is like basically fumbling around. And even though if they had picked that Hellcat to go for a split push or a backdoor, I think it was quite red by the side of Team Crimson Echo at the end. So they really forced out that Yeah. darkness fall, and this is the maniac that Set went for, and he even were able to get so much. But this is a very good outplay from Dark, I would say. Like he really outplayed this quite well. Really, really good on that hero that is the Arlot. But then again, the conversion out of this, that even at the Lord, where Raden went all by himself, was some of the questions that like remains in our head, right? Why are you doing this when the Lord is already taken down? Why are you taking a fight after the Lord? So these things can really, really make your lineup or your team to a point that are you doing the right choices? Are you really a strong team? Because being in the mythic leaderboard comes with a lot of responsibility. You cannot maybe making such minute mistakes, isn't Yeah, it? they're And the allowed reason to. I'm criticizing, Hey, come on, they're allowed to. They actually got I themselves all the way up see the there. reason. Yeah, I mean, I get your point of view, but again, like, let's just face it. Let them have fun. It's a game at the end of the day. See, the reason I'm criticizing them, or the reason not criticizing, the reason I'm pointing out these mistakes are because you are qualifying for the LAN, and these are not the mistakes you're supposed to be making when you Sure. want to play a LAN event, right? If it was just an online phase, I would say like, okay, make mistakes. There can be reasons like the internet issue, like so on and so forth, right? There can be a lack of proper communication sometimes that can happen, but if you want to go for the bigger stages, such mistakes should be avoided from the very beginning. You cannot be making this in the bigger stages, right? Because even True. though
you are playing good, you're playing aggressive, you're getting the advantage, but when you're making those mistakes, it stands out because that's a pattern that follows every game. Yeah, I'm kind of agree with you, my friend. When they actually make a loss like this happen, well, that's gonna lead the momentum to the enemy's side. They're gonna have more, of that, energy to actually fight you guys. I think that's actually a bad decision to actually give them the advantage over you, especially, mentally. But again, the score was almost equal. And let's just look at the items, dude. Zushin having the Sky Piercer, not a bad decision. But Hellkurt really should have just focused on pushing towers, if at all, in the early game he wasn't able to actually get the kill on Seth, make him regret picking the Joy. If that was not happening, I think then Hellkurt would actually be a bad decision. And well, that's what we saw. And well, the top lane circle movement motion thing that Alam actually did is still kind of like running through my mind. Why would you do that? A very good question, right? But then again, I think this joy really came as a surprise for Team Yama Esports, and it worked absolutely wonders for Team Crimson Echo. Really made the match quite easier for them to win from the setback that they had got from game number one as well. And I think picks like these, which are taken at the very end, can really cause a lot of problems when you're focusing on a draft that is supposed to play aggressive, because the joy can punish your backline quite easily. And I do understand that this is a very fighter composition that they went for. Even the Zoshin is more of a utility. Man, look at that dude. Poor guy. Dark played amazing, and well, Seth did too, but overall, I believe that Dark mechanical skills where they are a lot is absolutely amazing. I feel bad for the guy actually ending up losing this game. It's just, I mean, I think it's it's repeated problems of decision making in this game that caused the mistake, or that's caused the loss for Yama Esports. Crimson Echo being able to capitalize on that is something that is really a plus point for them. But how many times can they do that, or how many errors will Yama Esports will continue to make on from here? Will keep the thing, because this is not a best of three; it's a best of five. So they still have a lot of chances still left for them. I mean, in the end of the day, if it actually gets to 5 matches, I'm just gonna have throw pain. It's okay though. As long as these guys have fun, that's all that matters. But I wish they actually do take it seriously and play like, they meant to. Because obviously, like you said, it is the land qualifiers. It's something very important for these guys to actually keep in mind that this will define who you are and what you actually will be perceived as when you're going forward. If you want to have that fun kind of team personality thing, that's fine too. But most teams really don't go for that, and I think Yama Esports should consider it. I mean, it was not really looking they were going for a fun composition. It was more like they wanted to, it was like, they were trying to win this game, but then again, the way they were trying to win was completely read by the other team. So that's there. I agree, man. But hey, I mean, it's fun and it's fun and all. I mean, pick the Mia, pick the Hellcrit. Just make sure you actually, utilize it to the fullest, man. I think my mic is not favoring me today, man. So is my voice, my friend. It's okay. I think I'm shit talking too much. That's why it's the thing. But then again, ladies and gentlemen, we'll just go for a very short break to fix the issue on our end, and we'll be back right soon. So don't go anywhere. Stay tuned. The matches are not yet over, so we'll be meeting you right at the other side. एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी
Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon प्राइम वीडियो मजेदार
लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन? है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स,
Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Ladies and gentlemen, welcome back after those two amazing matches where one Crimson Echo actually got a victory in the previous one. They are back, and both of the teams, the main, are back to give us more action, more jam-packed excitement, and I'm pretty sure that now we are going to get into a match that we won't be able to forget because both of these teams really want the victory. And Yama Esports, you know, I hope they don't pick another Hellcurt. Anyways, on the casting desk, we might have a little bit of a change here. Crucifix, same as always, like the previous matches, but we got now Sebastian joining us. Hey, Sebastian, have you actually seen what happened in the previous game, friend?
Oh man, I fell asleep. But like, please, could you could you help me though? Like, I want to know what happened. Cause how the heck did Crimson Echo? I mean, they're a strong team, but like, they won against Yama Esports, like taking away a game. That's crazy, man. Like, whew, they're one of the top eights right now in the Mythic leaderboards, and like for them to do that to such a team is like crazy, man. Oh my goodness. It was such a devious thing for Hirayama Esports to actually pick up the L Kurt. They might have actually tried to actually, subdue the, joy in the early stages of the game so that they actually get an overwhelming advantage. They did have Rauren with, obviously Guinevere, which could have actually possibly made them have a good advantage in the mid stages of the game, especially with the, spatial migration and the ultimate. I think, that could have been a possibility, but apparently it didn't work out. And I think Yama Esports were trying to actually, switch over to a split push type of strategy with Hellkirk going and split pushing, while the rest of their team actually forces the enemies to stay in place, so that they actually have a objective taken. It didn't work out for them, but again, we've got the first banning phase done, my friend. We've got CC, Gatot, and Claude getting banned off on the side of Team Yama Esports. They have the first pick, and Crimson Echo go ahead and get the Esmeralda, Fredrin, and also Sora banned. I mean, they have to take away most of the, the jungle fight, tank jungles, yeah, because Rauren is really, really good, especially when it comes, when he has enough HP, he's just gonna go off, make these like, in a way, it looks like it's unnecessary fights, but he's just giving enough time for his team to come and just like, follow up with most of his sets. So that's one of the main things that Crimson Echo have to be looking out for. He did. I mean, I just saw the Guinevere. He did exceptionally well. And just as I've mentioned, like I've seen him play before. We call him MOBA Raren for a reason. His Fredrin is one of the best in India as well. And we see Yuzhong actually and Kimi being picked up by Crimson Echo. I wonder who they're going to be going, like who they're trying to use these two heroes for, because you don't. I mean, Yuzhong is always, technically one of the best EXP lanes to pick to go against any, any EXP hero. Even if it's Glue, or even if it's an SB, he still has like a fighting chance against them. But like to pick them off at the, immediately second with, in the first drafting phase for the team is quite surprising, because you need to have a backup plan for this. Either they might be going for dark, or it could be because, Ztad here is annoying Crimson Echo a lot with his roaming, so they have to do something about it. They have to make sure that at least their roamer, or I think maybe at least their jungler is not too surprised when they get ganked off. So yeah, they have to do something about that. True, but look at that, the confidence from the side of Team Crimson Echo. They go ahead and pick the Joy against, obviously the Kalea, a hero that actually is known to hard stun, hard CC any enemies that actually try to overextend or maybe even jump at the enemy. Obviously, cutting off someone who does not have a Purify is going to be a very easy, option for Kalea. And Joy, obviously, is going to go to the jungle side of things. So we'll just have to believe in Joy and his placements. Again, the side of Team Crimson Echo really do have a good, strong lineup. They've gone for the bans on the mid lane, though, because obviously Yama Esports don't have, the mid lane yet. Zushin, Lunux, very good options. But I guess Lunux could be played in, the gold lane too. But does anyone really play him in the gold lane now? Not exactly, man. Because because you want someone to at least sustain long enough, even if they have a lot of DPS. If your gold laner is just getting ganked most of the time, there's no gold farming for him. So Lapu, or it's more advisable to take off Glue, Lapu, and even sometimes I've seen Zilong actually immortal lobbies as well in the gold lane. Yeah, it's crazy, Crucifix. This meta is going nuts. No more meta, for MMs, which I feel sad, but I think Hanabi is kind of doing well, because, the most of the team compositions are going for a lot of group CC as well. So for her to at least have the Aegis to help her around with the shield, and the fact that she ignores CC while she has some form of shield, so it's kind of make do. But let's see, Moskov is going to be picked off as obvious. He's the best when it comes to DPS. I think, if not mistaken, especially with the golden staff. I don't know who the heck thought of it, but right now it's like probably the most used item set as well. Again, I mean,
No, like really, the Golden Star build on Moskov is actually one of the most used sets for him as well. And I feel really Wasn't bad because obvious? Wasn't it obvious? Because Golden Staff actually kind of reduces the cooldown of the first yeah, skill, it does and the second exactly. one, the Spear of No, Misery, because can be used constantly. I think like it's because kind the of thing no-brainer. is like the crit build had some form of damage more often than like the attack speed Trinity, yeah. bonuses that you get. So his Spear of Misery deals a huge ton of damage early game. So like just one Spear of damage, Spear of Misery onto the wall is like I think A death already sentence. more of a quarter. Yeah, exactly. More of a quarter of your HP for the MM immediately goes off, and he's gonna have Aegis, or he's gonna have Inspire, how they used to use it before, and he would technically he was technically like a finisher marksman more of with the crit build. But Sure. with the golden staff and everything, he's now made into an anti-tank hero. I really like that, and the fact that there's more It's always been that mobility way. on him, I think it's a lot better. And I'll be very honest with you. I always thought of him as, an anti-tank hero. I've always He played him is, with like yeah. golden stuff. I'm Mhm. kind of surprised that people actually play him with crit because, well, I'm a hero that I'm a person that loves crit. That's Yeah. why my name was Crit Cat at one certain point in my life. Let's With go. KK. Anyways, Oh, back to the whole thing. We've got a Tigreal getting picked from the side of Team Crimson Echo. I might actually be willing to see some good sets from their side, but look at that. They've exactly. got the Hayabusa. So I'm having this kind of like question here. Will Moscow be able to overcome the Hayabusa's early game presence? Do you think Yama Esports have got it in the bag, or is it going to be Crimson Echo that comes up stronger this time? Oh man, it's so hard to say because mid lane we got Kimi versus Farsha. Then again, the difference in burst is quite exceptionally high, especially in the early game. The moment level 4 hits, because Kimi is like kind of a DPS. She's still slash MM. So, ladies and True. gentlemen, we are in the land of dawn as the heroes here. They're finally getting their buffs as well. They're starting it in. This is, we say, the third match in the best of 5 series as well. So guys, please do stay tuned. This is still the best of 5. So please, guys, if once the match ends, please don't leave. We love you all. Do stay. And okay, there's an early aggression coming up Oh, already. PYZ already. So oh my goodness me, I've noticed how fast his shield is now. What the heck? what do you Oh, mean? the Oh, lethal. look at that. We've got an engage. We've got Seth getting taken up into the air by Kalea, and that's going to be first blood. Rawren getting the Oh first my kill, goodness. and VO following straight through with PYZ's kill. Because obviously, Rawren used the quad shadow to make sure that PYZ didn't have the sacred hammer. He could pull the enemies towards their side. So they did lack on the advantage. Look at the top side. We've got a lot of aggression from OWY, and that Shaw rescue keeping him alive, man. That's crazy. Like I don't remember it being that fast because I know I used to play Tigreal a lot for like season 20 Oh, he to got like buffed. 25 and oh wow, He got okay, buffed. that's like wonderful to see. I'm happy the old ones are getting, but Vile is showing a lot of aggression early game. He has to make sure at least Suzumi is not gonna get much gold, or at least level up to level 4, because that's gonna be an issue for Ztad here. Once the sets come in, Purify has to be forced out. That means that Tigreal is gonna be having a beautiful time, just trying to mark their carry as well. They need to work on that. Lukem is gonna be Oh, oh. forcing the farm. Alan jumps in, but Oh. okay. Oh, he goes Oh, in. we've He got the still goes in. electrifying. We've got the electrifying beast. We've got the feather airstrike. We've got Raw Red jumping Oh in. no. But Viola's gonna be the one getting the kill. But topside, off camera, we've got Dart taking down the enemy EXP laner, and that's gonna be a free turtle for the side of Team Yama Esports. They're not taking it easy anymore. The first match they did play pretty seriously with 4 tanky frontline and Arunux. But now, Oh no. now they're taking it even more seriously with Raven getting the Hayabusa and not being very merciful here is going to be a big problem for the side of Team Crimson Echo. Bot lane, I think it's going to be a winning lane for carry. Zedtat playing pretty well. Viol trying to actually set up for a kill. Oh We've my got the Feather goodness. Airstrike. We've got the... Oh okay, no. Alim, no, don't do that.
Oh, we've got the trash projectile going in, but no, nobody's gonna get caught. Alum is able to escape with a flicker. He's not actually being in trouble just yet, but PYC, the moment he actually unlocks his ultimate, is going to be a big threat for the side of Team Yama Esports. Again, though, Elam still has his ultimate ready, so I think it's going to be a possibility if they want to actually go for a fight. Look at Seth getting invaded again. Oh. We've got him jumping in with the second skill. He's going to actually use the electrifying beats, but look, Hayabusa is going to use the Ogi Shadow Kill, trying to do some damage onto Seth. He's not going to be able to run away from that, but Spear of Oh Destruction my goodness. locking in, getting 2 kills into the enemy's Wow. faces. Man, that's crazy stuff. Oh my goodness, the Spear of Destruction hit its mark truly well, and at least they had to get Raren out because he was poking a lot. He was poking around a little too much in the back lane there, and they have succeeded in taking him out as well. He's finally lost the blue buff, so he's not. We know now that he's not going to do much. But Alum makes a beautiful CC there. Oh my goodness. Oh, Traction Projectile does not actually commit to any fight there because obviously it missed. Carry does have a dash inbuilt in the kit, so I think it's actually a good idea, not to use your ultimate onto Carry, obviously. Yeah. But again, Alan trying to force Seth to use his Retribution or anything for that matter, so that, their team could actually get a free turtle. But look at that. Zetad trying to actually get the tower, but he's not able to. Spear of Destruction being used up is going to be a big loss on the resource department. We've got Dark engaging with the Lapu Lapu. We've got the ultimate from the Hayabusa getting a kill on Tsunami. I'm not going to call her Suzumi. He actually got that as well. I was kind of hoping, like, remember how we play Hayabusa and then like the Ogi Shadow Kill goes everywhere but the hero we want to kill. I thought it was going to go on like that, but luck was on his side and Raren was able to take him down as well. And you know what? I just have to mention how annoying it is to go against Alum here. Oh, and there we have it. He's in the front lane. He has heal. He has a huge amount of shutdown as well. The Awe here might be going in. I think he might be able to succeed in taking him down. And then we have the Petrify goes in. Dark is forced to use the Flicker as Seth was almost able to take him down, but the traction control. There we have it. Oh, no way, Raren finding another kill and emoting onto the enemy using all of his shadows, but now he's going to be in a hard spot here. Seth decides to actually go back, even though he could have actually taken the kill. But look at that Spear of Destruction finding its mark, making sure two of them, OWY with a shot residue, pulling the enemies away from Hell's Gates, and now taking them down. 3 people down in the mid lane. Now Dark trying to look in for an opening, but Luca is pretty smart on that, Moscow there. He's going to use the ultimate. I think Dark is not supposed to do this right now. The enemies are all right next to him, and I don't think it's actually a good idea to engage. Spear of Misery pushing him away, stunned. Oh my goodness. But again, in the end of the day, the penetration's not going to land through Zetad and hit Dark because obviously Dark, was off position a little bit. PYZ taking a lot of damage from Carry, and the true damage that she's dealing is going to be very, very painful later on. But now itself, it's going to be a very, very big problem for the side of Team Crimson Echo. But again, I think there's going to be an engage, possibly not. They escape. Man, I was just going to talk about how the Black Dragon might be a huge issue here, and it is. The thing is, like, the bonus HP you get from the bonus attributes basically you get from the Black Dragon form is truly amazing, and like the fact that, oh my goodness, we've got a beautiful stun. And we've got a Spear of Destruction coming in from the backside. We've got Luca actually doing a lot of damage to Zetad, who's surprisingly is, tanking it pretty well. But look at that. We've got Kimmy using the first skill to run away. But Lapu Lapu, I don't think that was actually a good decision. You could have just used the basic attack. But again, Zetad was able to get the kill onto the enemy marksman. Luke him down. And we've also got the enemy mage, Suzumi, down to Tsunami. I mean, why I call him Tsunami is because of the overwhelming amount of damage he was able to deal in the second game. Yeah. But look at that. Ogi Shadow Kill, missing its mark onto the enemy Hyper, but he will be able to take down the enemy, tank. I don't think it's a good idea to engage again from the side of Team Crimson Echo. I think it's actually, wise for them to stay back. Exactly, and it's working out pretty well for Yama Esports. This time, the second match was very, very problematic for them, but I think this time they're finally understanding why they have to ban certain heroes. They need to make sure that they have to go for,
pickoffs on like say at least Luka? Lukem, or at least on Lukem, because Lukem is right now besides OWY here, he's gonna be the most problematic, and they need to reduce his farm as much as possible, because late game Moskov, man, it is a huge problem, and like no turrets can survive. Alam goes in with the slam. Still survives though. The feathered airstrike True. pops in unnecessarily as well, but I think that's Oh, enough bot to lane, off save it. camera. Oh, Aurora in the bot lane takes down Lukem once again. We've mentioned this before, and Aurora is actually making it, come true in a way. What we're saying. I mean, he's smart, dude. He definitely has his own, set of tempo. He has his own tempo going on for him. But I believe that, Crimson Echo really are not that far behind. They've got like 6,000 gold gap. They could actually easily clear it if Tigreal gets a good set and Purify is not available on the side of Team Yama Esports. So they've got to make sure they actually make a good play. If they don't, Crimson Echo are going to lose even harder now. Top lane tower getting destroyed. Bot lane tower getting destroyed. I think that's going to be a big problem for the side of Team Crimson Echo. Everything is open. But look at that. Raren finally gets taken down by 4 people. Obviously, they were ambushing him, and that led to something very, very sinister. But the bot side, we've got Yuzong going for the big black dragon form. Catches Farsa, gets the Petrify. Will be able to find Farsa. Lukem gets a kill. And Zetad now doing a lot of damage to Lukem. He's going to be taken down. Seth is going to get taken down too. BYC, Maniac. no, run, Maniac. Okay, this is a third Maniac in this best of 5, man. Man, I immediately called it when Seth actually missed the dash onto Zetad here, and he missed the electrifying beats as well. The moment I saw Carrie with a half HP there, the moment she used up her her ultimate, it was down for them. It was an immediate shutdown, because no amount of defense is gonna help you sustain against Carrie. No amount of HP, and exactly the more HP you have, the more damage she's gonna deal to you. So she is in terms of it, I have to say, man, this is not gonna work out well, because Yama Esports are doing a pretty good job at defending their marksman. So sometimes they do miss a little bit, because Alam does need to go into the front line and pick them off one by one, or at least get at least 2 of them somehow. Even if she's just like a kind of like a single target based hero, she can still do a lot of shutdown when it comes to like a group CC and everything. She also has the heal, which I find it really annoying to go against, because right when you think it's just another tank, it's a tank that heals, not just him, the itself. Oh my goodness, the flicker! Tsunami Slam, and the flicker gets Zuzong out of the picture before the fight even began. Holy crap, Yama Esports are not taking any second chances on this one. They've got, Seth has got himself the Holy Crystal, but I don't think that's going to be enough to actually keep them alive. Purify is available on the side of Team Yama Esports, but again, we've got an engage from Seth, but he's going to take a lot of damage. He's being forced to go back. We've got the flicker, and also the Purify keeps him down, but one shutdown is going to lead to a big change into the... Oh my goodness, that was so Suzumi? close. Suzumi? Oh, he gets it. How The did lethal that happen? ignition. The lethal ignition of the bird. Yeah. The bird that follows after you get hit. I think that's one of the reasons why the lethal ignition too, I believe. Lukem, I think he's able to defend this. I think everyone from the side of Team Crimson Echo are gonna have a fun time defending this. Raren, stun, no follow-up though. That was close. I don't think even with the follow-up there, they would have been able to do something, because the shadow had been popped up already, and OWY does not have the Petrify to continue on, at least to get down. Oh my goodness, Alan might be in trouble. Oh, Spear of Destruction! Oh, Spear of Destruction almost hits its mark as well, but I mean, at least Vio lives to tell another tale. Hey man, that's an anime moment. That was ultra instinct right there. Exactly. Oh, I can't make that sound. Yeah, dude, you get the idea. Bro, crazy stuff from Viola today. Man. But look at the scoreboard though. It is 21-8. Although there's the kill difference is not really much in a sense. The gold is what's more important, because they are down very heavily, and Yama Esports are just in my way, I feel like they're kind of wasting time a little bit, and I feel like they have a good opportunity to kind of end it as long as they get the Kimi, because Kimi, then again, there's like 3 front lines. There's
There's Joy. You have to consider Joy a frontline. Oh my goodness! Feather edge strike pops in, but I think that was a little too early. But then again, it is late game, so her cooldown is going to be pretty lower than what she had in the beginning as well. But like what? Like as I was saying, like Joy, you have to consider Joy a frontline because she has the sustain, and with the 3 perfect beats on it, and the electrifying beats are just gonna sustain her a lot. At least 400 to 600 HP per beat. So that is like crazy work there. You do have vision, but Rarin has the retribution, saves it though. I mean, I don't think Moscow was gonna actually jump in. There was no follow-up from his team, and plus Alim was standing right there, dude. You're not gonna jump in onto the enemy tank who can actually crowd control you to oblivion. Even if you have a Purify, it's going to be a waste of spells. Especially, dude, in this given situation, I think Crimson Echo know this too. Exactly, they do. The only thing they can do right now is hope to get the minions in that they are clearing. Dark is just spammy recall. He's just having fun there. Yeah. I mean, for them, the second match was devastating. I think they wanted to go for a clean sweep, as Roran always says. He loves clean sweeps. Mentioned it to me before, and he just wants it. But for them, oh my goodness, he gets clean. Scary! Holy crap, the lightweight wheels are absolutely devastating the enemy. Dark going into the back line, but Viola is going to get the kill on Lucan. We've got right now BZ also getting taken down. Plants vs. Zombies is not going to... BYZ, sorry. I just wanted to make a Plants vs. Zombie reference, bro. But BYZ taken down, and Lord's going to just take down the base. Dude, just carry the game. That's going to be a big no-no for the side of Team Crimson Echo. They can't really give the carry away to the side of Team Yama Esports. That's kind of rough, but, well, we kind of expected this because Yama Esports took the loss and came back a champion. So it's 2 wins for Yama Esports and Crimson Echo 1. Do you think there's a possibility of a reverse sweep, or is it going to be Yama Esports that's going to come up on top? I'm thinking it could be like a good 3-2, my opinion. Because Crimson Echo are not backing down after this as well. This was like a clean start from Yama again. This is what they always do. It's like sometimes you have to give away, a game. Let's say you have to sometimes give away a game so that you can just like kind of read off your opponents as well. So that's what I think that's what they were doing in the second half. They were just testing the waters a little bit. And the third match is, they took it down easily. And now knowing that they are kind of going for a tanky, they know that carry is always open, and a good replacement for carry there would have been Ixia though, because she has a lot of what do I say? Like it's not really true damage. It's more like a CC control. AoE. Yeah, the AoE. And a lot of CC if you think about it, because the moment her ultimate goes, and she has a huge amount, like a huge wide range as well. So we have to consider that. But again, in the end of the day, dude, if you think about it, Carrie was able to actually melt down the front lines faster. But Ixia does definitely have like her own spotlight. But against I think like Tigreal, I think she'd be forced to play a little too safe, and I don't think that would be the best opinion. But, not best opinion, best option for them at least. Exactly. But look at that. We've got the MVP highlights going on, bro. I think this is the first 2 kills of the game, and I think Rawren was the one who was taken down. No. It was not Rawren. It was Seth who was getting killed by Rawren, and PVZ getting taken out with him. I think this was a good deserving, though, because PYZ was probably one of the main problems for their side, but Rawren was able to take them down as well. He gets the Oki Shadow kill here, really wonderful. And gets it off at least 2, 3, 4 hits onto carry as well. So the damage counting is there once again. Look at the damage, but he was taken down here, so which was quite sad. I think he could have done something here, but I mean it worked out well for their side. So that Spear of Destruction, man, big mention to that. Dude, 2 kills just with 1 Spear of Destruction. Yeah, count me in any day, bro. And there we have it. This part was really good though, because Dark was just exposing it and just making sure that Tsunami was just. Now I'm calling it Tsunami because of you. So now it's just. You're welcome. It was too. What do I say, man? He was just baiting him out, and Raran was able to take it off easily. And once again, there we have it. See the baits, man, coming in, because we know that
the carry is gonna try poke a little bit, even if it's not much. She's still trying to try and poke. That's the thing about it. About True, man. a Kimmy there. There we have it. Oh, Look at that's that, very bro. That well. was really beautiful. The way Very OWY well got this. Very well done. But look at that. Lucan got the last kill. Here's where Zetat actually just, shown. I think, no, I think this No, not is this part Lucum. yet. Yeah, it's not this one. But look, I think Zetat really did have his own time to shine even now. Yeah. He was able to get the kill on Malocum and allow Dark to actually get the kill on Tsunami. Yeah, Tsunami, I'm just going to call it. Suzumi. Yeah, Tsunami, dude. He is a tidal wave. He is an absolute menace. Because the moment he actually got swapped in, he was able to actually completely turn the game around. Look at that. Exactly. Raw Oh red. my goodness. Go in to the back line, destroying, dismantling. I wish, Hayabusa's ultimate had, a similar, follow pattern to Juggernaut's ultimate from Dota Yeah. 2. It would have been much Yeah. easier to predict where he would go. But Yeah, again, yeah, exactly, so random. exactly. This is where he got absolutely destroyed, but it was such. Oh yeah, this is the one where Zetat was like. Sure. Yeah, This the is look. maniac. They actually missed it, so that was the one thing where you see that he missed off that Oh. dash there, and that was the reason why he got that beautiful maniac on their side, and Yama took it really well. And by this time, carry was way too farmed. They could not do anything. Even if you had, all that defense, it's not gonna work because it's true damage. Look at Yeah, that. look at man. that ultimate, dude. Two people caught, two purifies. Game over for them, dude. It's kind of funny. Look at the bird. Look at the bird. Yeah, the bird. It came back right after hitting the enemy, allowing that, lethal ignition to just kill them. Dude, that's Exactly. crazy, man. And people, people still, I think people What? still would rather take Impure Rage, which I find it funny because, I mean, Impure Rage is good, like on heroes, say like Eudora, Gushin, because True. they have to, because you need a skill to follow up. But like on heroes that have like really high burst, say, Farsha here, for instance, I think Lethal Ignition would be much better. I mean, Karina, not exactly, because you need Killing Spree. Why? You need Killing Spree to kind of chain kills, because she is a chain kill hero. In the end. I mean, But there even we if you go. don't go killing spree, you can go temporal rain. It actually gives exactly. cooldown for the first skill. Like, it saves you in a lot of Actually. situations, man. Actually. Lethal ignition is not required there. Exactly, that's the thing. And there we have it. Player of the badge. This was very obvious that Abyss TZ was gonna get this. I was not Yo. surprised because he had the heal. He shut down all of the heroes that tried to gank their Fasha as well. So that was one of the main things that I really liked to seeing. The roamers of Yama Esports, Abyss TZ especially, because he was really wonderful in that, and he made sure at least carry was not touched as much as possible as well. That But sounds like in the suspicious. end, but he had to go into the front lane. He had to heal at least the Lapu. He had to heal up Hayabusa. He had to do a lot of stuff because she is in the end also a healer as well. So that was one of the main. This is why I find her so. I find her really imbalanced. But there we have it. She's interesting, if to say Yeah, the least. exactly. But again, you can really become a tank that can actually heal. Then you can talk about Minotaur too. I think Minotaur was Exactly. open, and I don't think the side of Team Crimson Echo really went for that one. But it is Could what have. it is. Tigreal is not bad either. He's gotten a buff, by the way. Most people Mm-hmm. don't know about this. They don't actually, they didn't actually check this up. It's actually surprising how he got a damage buff on the first skill and the ultimate, and now the speed on second skill is increased. It's actually kind of crazy how this guy got like a set of buffs that have made him a little more impactful in the games that he's picked in. It's kind of crazy, Exactly. man. Man, this is like so almost 10k difference at this point. 11, almost 11. So this is almost 9. Sorry, probably like 9 or 10. Yeah, okay, gold difference is there between these two as well. Got the emblems. We have it. Yeah, the lethal ignition. She's got the roaming thingy. Oh man, I forgot the name for that. Oh my goodness, for Fasha. The custom mage Farsa? emblem. She's got rupture as well, and then Wilderness she- blessing is yeah, what- the wilderness. Yeah. Oh Yeah. my gosh, that thing was like crossing my mind every now and every often. But then again, I just keep forgetting it, man. Even though I love using it the most on show, but it's like it's funny, man. But there we It have is. it. Head Head to to head. head, the two No doubt MVPs of the about it, bro. match.
Ah man, 247 though. I actually kind of expected a lot more from the Moscow. I mean, do you think the crit build would have been better in this current situation? Do you think it I would have think actually helped him personally, more? yes. As long as they had the C halberd, he had a C halberd, or at least the DHS instead of the, let's say, the, and usually you would take a what would you call it, the malefic gun. Yeah, usually you Yeah. would take that, but if you kind of swap it out with the C halberd, then it would have made a lot more better sense because you don't really Sure. need a pen. He already has his own personal pen as well. There we have it. I mean, The technically gold. speaking, yeah, he does, but he can't really penetrate, against high armored heroes with his basic Exactly. attacks normally. So I'd say that Moscow really does need the, what do you call it, malefic gun, Malefic because gun, mainly yeah. because this guy does not have range. This guy has the least range among all marksmen in the game Exactly. right now. So increasing the range on a Moscow, well, with the malefic gun is the way to go, I believe. You get like, Yeah, what do you I call it? agree. The Trinity, you go for the Malefic Gun. You probably have enough range to outrange most, non-Malefic Gun users. I think that would have actually been a better idea. But again, Moskov, underwhelming, but he did still get the MVP though. He did have his amazing sets. Like the first fight where he actually used the Spear of Destruction, he was able to get Raw Ren and Dark. And that came out from the dark, dude. All of a sudden from the bot lane, you see a big arrow just coming straight at the enemies. Like, Yeah. Swish. It just swish. It just hits off, like thing. And I think he would have done a lot better if I think most of the Spear of Destructions that he had used so far had hit Connected. its mark. Yeah. If it had connected, it would have been a lot more worse for Yama Esports. But they were able to do it well, or at least they might have given off, like, it might have been a longer match because the defense would have been different. But yeah, I think we should go on a Hey. short break. Crucifix. Before we go on a short break, a big shout out to the Ultra Instinct moment for Wheel when he was able to sidestep that beautiful Spear of Destruction. Holy crap. Anyways, guys, we will be right back. Have fun. Stay tuned. We will have more exciting games. This is going to either break or make the game. See you soon. एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स
Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स Amazon Prime Video मजेदार लोकल शोज का भरमार टीवी चैनल्स भी Ready everyone? है तैयार एंटरटेनमेंट जोरदार Are you तैयार मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Okay, hello everybody. We are back into the banger. It is Arunoday Esports LAN qualifier right now going at the stream. As you can see me here, it's your boy STZ in the casting desk. And with me, my bro Ricardo will be there. I think after any OT, we are back together in the casting desk after a long time. So I don't know if there will be the synergy gap because we bros never have that thing. We don't know what is synergy gap. So obviously that thing not gonna happen here. But what is gonna happen here? Let me tell you all. That is Team Yama Esports are facing up against Crimson Echo, and currently the score is 2-1 in a BO5 series. I mean, if one match win for Yama, they're totally into the LAN, totally into the Arunachal Pradesh. That is the Arunoday Esports LAN event, which is going to be happening in Arunachal Pradesh. So if Crimson Echo really wants to punch their ticket onto that LAN event, then they need to show their skills right now because this is a do or die set for them. Rick, you have been casting the last game. Crooks and Sindhu were there in the previous the first two games. So I mean, what do you think? Is Yama doing better, or is it Crimson Echo who are just gonna back onto the track? Oh man, just HTZ. The thing is, like, Yama Esports, they took the first, and then right when you think they want to take the second, they just want to test out what Crimson Echo is doing, and they give away they gave away the second match. They actually lost it in a really devastating way. But then again, they replied the third with a very, very dominating match with a huge, let's say, a huge goal lane and a jungle gap. So that was the main thing. And I'm not to forget Viol, man. Oh my goodness me, he was crazy with the Fasha, and he was doing a lot of work, a lot of burst, and made sure that Raran was getting a lot of the final touches, and the finishing as well was done a lot. And then again, we got the same respect bans coming from the previous, which is going to be the Fredrin ban for Raran again. We got Gato, Claude, and CC being banned out by Yama Esports. Similar, very, very similar. Even Sora is banned out, and Esmeralda as well, just like the last match. The last match I have seen, like I was there in the last 5 minutes, I believe, and the stats were being shown by our production. And like when I saw Abastisi onto that Kalea getting that MVP with a 1-1-19 KDA, it was so fascinating to really watch out those roamers at the heart of the game are getting the MVP, the most valuable player tag into their way. And so do the side of Crimson Echo. I've seen like Moscow was doing so great, but what can we say? There is only one winner and another one should be the loser. And this time also, like if Team Crimson Echo can't produce their best here, they might be going to be eliminated after a big round. I mean, obviously, I mean, just think about it. Like they are into the LAN qualifier. First, I will just clap my hand for them and for the Yama Esports as well. Every teams who just got selected into the LAN qualifier round are really into this tournament because they have given all their potential, all their energy throughout this tournament to be at this stage. But what can we say? We have limited slots onto the LAN, and tonight there will be two teams who are going. I mean,
going to get the advance into that selection phase, and two more teams will be having a sad face, and they'll be going back Exactly. to home. Of course, I mean they're at the home right now. Can't Yeah. go to the last place. That is the thing. But in the Yeah. meantime, while I was talking about all the spirit of the game, we can see all those picks coming in. That is the Kalea, Lapu Lapu carry being picked up by Yama Esports side, whereas Crimson Echo is going for that Harith and Yuzong and the Jushin into their hand. Like Yuzong, like a pick-off combo, having a Yuzong and a Jushin both into your team. Like you can actually go to the back line. At the Exactly. same time, you can give the hindrance onto the front line by having the Jushin. And Harith, Exactly. like Harith currently in this meta is not so much feat, but I mean Granger, Harith, Little, these guys are like evergreen. They are Exactly. suitable in each and every match. Agreed, man. And the thing is, like, if it something goes wrong, they can just pick off someone who can go into the, say, they can just swap lanes as well. And the thing is, like, his range and the Crimson Dashes are, it's really, really annoying to go against Harith because, it's not just, he can't really use immune for him. You need to get, Athena Shield, you need to get Radiant Armor, you need to go for defense, Rose Gold as well. Sometimes, you don't really need Rose Gold, but then again, there's a Harith. So you have to pick that off. His dashes are annoying. He has shield. He has really low cooldown. And to go against something like that in the gold lane is very, very annoying. And Crimson Echo, I think they're actually going to do good this time because they previously banned out the Zushin. It would have been a really good idea. But then again, the Hayabusa from Byron was way too, say, dominating. Yeah, a little too dominating. Even though, there was a nerf on his shadows, he didn't make that at least they did. I'm just glad they didn't really touch on his damage as well, because that would have nearly made a downfall of Hayabusa as well. But he's still being used. He's still viable. We got Yi being banned out here as well. We still got Clue open, Oopsie. and I hope we can see him in the roam though, because it's really, really good against Lapu as well. But let's see how it goes, man. Like having that Lancelot into the banning phase. Okay, sorry. Uh, Yeah, banning. Yeah, yep. Can you hear me? yeah, I can hear absolutely. Yeah. Yeah. So like I was talking about sorry, that was a technical glitch from my side, guys. And now back into the panel screen, I can see like Rarin and Violet are yet to pick their heroes, and like Jushin has already been there. So what can else you can go for in the middle, like a Kadita? No, Rarin Oh. is going for his go-to pick. That is the head of the jungle. Of course, like you never see this thing in What? any of the jungler's hand, but you're gonna see it onto MOBA Rarin's hand. And like Oh my this guy, goodness. the operation with the edit jungle in the perfect matchup. I love to see him. I mean, like he's so comfortable with it. And he don't care whoever it is in front of him. He gonna pick it out. He gonna prove it in front of everybody with the Fatamis into the hand of Viola. Like like the Nether Realm will be there, and so do the edits. Primal out. That is what you need here. Like the damage plus the stain both into your hand. It's just like Asura without Okay. ultimate form, without a cloud ultimate form. That is what I can say about Metal. But I'm not sure like if Crimson Echo can actually break this out, this formation, Exactly. or they can It's I mean, difficult, man. go for the best here, or they can do the fight back, or it is Yama Esports settling the score for them. But now we have the 5-4-5 Oh set. man. So you can quickly tell me what's your thought. Who is taking on Ah this game man, number? I think if PYZ would have taken the Minotaur, it would have been a lot better to deal with Viola here because in the end, Feramis's realm is the ultimate is very, very small HP amount of HP boost. And if he's able to take that out with the Minoan Fury, I think it would have been a lot better in my opinion. We have Rarin, we have Abyss, we have Dark here. They're all in the front line as well. But I love that Seth is gonna go around. He's trying to make sure he gets Zedad, as much as he can. He needs to do that because he played carry the previous match and they actually made it work. And he even got a Maniac, 3 Maniacs in the best of 5 series in 3 games. That is crazy, man. That is Crazy, very, very crazy. crazy for real. And Oh, now whoa. Yama Esports
Are you ready? Because the game number 4 is here in this BO5 series, and we are right now watching out one of the best game of the series. Because like this game gonna tell us so many questions, answers here. Because Crimson Echo, they need to show their best to get onto that fifth game decider. Yama Esports, they're winning it out. They're just going into the LAN. In the Arunoday Esports onto the Arunachal Pradesh, but now the quick reflection, quick displacement, you can see with the left player coming in. First blood will be there by the fracture, and another fracture double kill by beautifully being done by the No One. And with that, he goes back as well. 2-0 the starters without losing anything. Team Crimson Echo started so well at this point. Exactly. I think the burst coming in by Nolan and Khalid itself is very, very annoying. Level 1, they are capable of doing a beautiful 3v2 or even a 4v2 at that point, because they have a lot of group damage. He has his let's say his passive, Nolan's passive kind of pulls in opponents as well. So that is like one of the main things that I really love about his burst. It's really good, and it complements Khalid so well with his the dancing blades that he has as well. So we got Edith there already losing out a lot of farm for himself, not because he was taken down, but because Alam and Viral were taken down here and gave enough farm for Seth. He's got like 2+ stacks there, and a Petrify comes in. Looks like Dark might be going down to the hands there, but he's healed up by Alam as well, but he gets taken down instead. Oh my gosh. BYZ, he's going to be in trouble, but he heals himself. Seth comes in with a killing spree. Dark comes in with the bravest warrior there. He might be able to do something here, as Viola is going to be able to do something. And there we have it. BYZ still goes down to the hands of Dark, but Dark is taken down by Suzumi as well. Previous match, they were not able to take off the Zushin here, so I think they might be able to make it work this time, because they're going for comfort picks right now as well, actually. Of course, we can look at him. I mean, the way Rarin started it, I mean, not Rarin, it was actually the Nolan I was talking about. USA comes for the zone here. The total dance is going in with the Tsunami Slam coming in there. He went for the fracture, but then Rarin will be claiming the kill onto Suzumi, but there will be the total flames coming out by the Nolan. In the meantime, we're going to see the burst for onto here by none other than Dark, and we'll be going for that final blow onto him. And bot section, you can see that 1v1 still going in. Carry is literally having the upper hand against that Harris in the early phase of the game. Even though he's having the short range, but doesn't matter. He's clarifying himself there by just, melting him down. Oh man, that's the thing, man. It's scary, dude. The moment she gets like corrosion scythe or golden staff, it's the gold lane is done for. One gank, and there we have it. He's gone. Dark is able to heal up a little bit more. Suzumi is there waiting for OWY to kind of bait him off, but I know that Dark is not gonna he's not gonna fall for that very easily as well. EXPs, we have to look out for them. These two are really strong. Both, Dark and Aoi here, they're very good. In the previous match as well, OWY was able to pull off a huge amount of sets, especially with the Flicker. With the Petrify the moment, he got his Black Dragon form as well. So they have to look out for that. Raran still, I think he's fine for now, because he's using a tank, a tank / marksman, which I find it really amazing to see, though, because you don't see this often, and OWY gets taken down the top lane as well. AshGZ, take it away. That goes in there with a fracture, finds a kill onto the Yama Esports member. He'll be securing a double onto Rarin. The subscription bacon with the Lantern player comes in, and triple will be claimed by Seth here. What a way to go into the jungle and dominate it with an annihilating weight. Now he's going for his mania. Can he do it? Onto Zaytad. Beautifully he managed to dodge it out, but not so long. Lucam with the blow, with the burst, securing the kill on for himself. I didn't really expect that, but the Rising Sandstorm was perfectly on mark as well, and he was able to get off 3. He actually got 3 people, and oh my gosh, Seth coming in with a beautiful burst, but Dark is the one that takes him down, coming in with the killing spree. Suzumi might be going down here, and he gets a double kill as well. PYZ looks like he's in trouble, but Dark might be able to get away. The quicksand guard comes in as well. Lucam comes in. Kuro dashes are in, but Dark is still too tanky enough for that. Alam is going in. He does get the Tsunami Slam though, but Rarin gets the
Turtle on their side. Aoi comes in, knocks them up as well with the Petrify, but Aoi is going to be the one that gets taken down. The Black Dragon form is not enough as well. We got Viol coming in with a beautiful flicker as well, forcing it. Oh my goodness. Okay, lot of trades happen there, a lot of things happen there as well, a lot of micro being secured to the macro as well. I mean, if we're gonna talk about the bot tier 1 and the turtle, it's being claimed by Yama Esports guys. They are right now having the slightly upper hand into that macro section. But about the micro, it is kind of Crimson Echo having that one lead onto that kill. And talking about the guild, it is a bit same because you cannot just say a 600 goal lead as a big Yeah. lead for Yama Esports. It can be faded easily. It can be recuperated easily by the side of Crimson Echo at this moment. But in the meantime, Suzumi waiting for that spot, waiting for that perfect displacement being done by PYZ. But before that, the zone comes up with Dark going in with an aggressive setup onto PYZ. But he finds his way back into the safer zone, but onto the bot side. With that lane rotation comes up. Iole in a very bad position will be using that flicker. Oh, there we have it. Oh, the Tsunami Slam once again. Seth is taken down. Dark goes in. He might be going for the double kill here, but Suzumi is able to dash away from that as well. Black Dragon form has been popped up. Chrono dashes are coming in as well. Aoi is taken down by Z-Tide once again. Suzumi was not able to do anything for his team. Gash TZ, what? Oh, man. At this moment, Yama doing great. I mean, look at it. Waited for that perfect set, and then, I mean, you went for that and just got caught wrong-handed, red-handed, into whatever you can say it, but he just got there and got out as well. And in the meantime, the rotation to the top side is a perfect way for the side of Yama Esports because they claimed another tier for them, another structure getting down there. And there is invasion going in. Raptor comes in. He goes back into the safer zone at this moment. But in the meantime, you're going to see that the lane pressure is totally onto that top lane Yuzong. But onto the bot side, Raren is getting tormented, trapped down by 3 members, went for the Primal Rat. But his Primal Rat not going to be sustaining a longer because the Zumi will be penetrating him out, will be taking the kill for himself. But in the meantime, onto the top side, the second turtle goes into the hand of Yama Esports as the turtle rain has been completed. But what just happened there? Oh my goodness, one hit Aoi. Seth was so close to being taken down there. He, Alum actually missed it out because I think there was a tiny bit of a fraction of a distance that was that covered it a little bit where the wall was what do I say, like he couldn't get it over the wall on time, and Seth was able to get away from that as well. But the thing, oh man, the Raren was so close because the Primal Wrath would have been would have worked really wonderfully there. It's just he kept getting picked up like a baby by the Zushin here. And oh man, it's not working. It's not making it work out for their side. But Raren, then again, he might be able to do something as long as Viola is there. He needs to at least out there. Oh, Aoi, so close to being taken down. But okay. Everybody says that the Yuzong is a counter for the Lapu Lapu, but you play with the user who is so good with it, that is Dark. Now he's kind of pulling out Aoi's each and every move. He's kind of anticipating it so easily. Went for that beautiful setup with the Tsunami Slam comes in. Z-Tat securing the kill on just that there. Crimson Bacon actually as well as the Black Dragon comes in. Beautiful combo being done by the bravest fighter. But look at that damage. Look at that milk. Falls down triple for Z-Tat. He went for the Maniac. Savage comes up. Oh, he falls down. A wipe out for the Crimson Echo. Team Yama Esports. Z-Tad right now giving all those retards onto Crimson Echo's face. And not only that, he will be going for that mid rush with securing the tier 1 to the mid and now the tier 2. Vulnerable to the position to be taken down. What to be? It is already taken down. With the what just happened with the blink of eyes. You can see the whole mid got tormented. I mean, meeting Toby, I bet he's still keeping a very calm face, like a nonchalant face.
at this point. He did get the Savage. He might have, smiled a bit, but he's keeping it really cool because the match is not over. And this is just the fourth match. The fact that they actually got a Savage, it's like 4 Maniacs has been done already. And then we have it. Alum brings Seth into the fight as well, but it does not look good. But Retribution has been used up, but BYZ is able to take it. Godlike, a double kill comes in as well. Oh my gosh. Double for him, but what just happened? Why not the Retribution, Rarin? He missed it out. And who took it? Not Right. Seth. It was PYZ. Yeah. The roamer from Crimson Echo finds his way, but look Exactly. at that. This guy, Toby, he's on to a next level whenever he plays Oh, at not MM. good. But there you go. A little bit of overextension. Lukem falls down, but the previous fighter comes in there inside the tier. And not only Lukem falls down, 2 of the Holy Shields goes down there. Lord is coming in, but doesn't matter. The goal lead is so high. The damage spike is so high at this moment that the Z-Chat can alone melt out that whole lot. No need of Primal Wrath. I'm not adding it out as well. I mean, this was like kind of a bad loss in a way. Missing out the Lord because they could have ended it really quickly because they got a double kill. Just 2 left against 5 of them as well. And the fact, even if Raran does go down, they still have Dark and they still have Alam in the front lane. So it's like pretty obvious that they could have ended it early. But PYZ was, how did he even get that? Because I'm really sure. I think it was the concussive blast because that was really surprising. I saw him use up his skills as well. Quicksand guard had been popped up, a lot earlier before the Lord was taken down as well. I think the concussive blast was the one that did it. The retribution was like slightly above the line where it sees that we can. Like, you remember, isn't it, Ashley? Like the line that we see when we are able to retribution to make sure that it's able to kill the turtle or whatever jungle creep there is with the retribution. There's that fine line, and I think he moved it just above for PYZ to take it with the concussive blast as well. We have a very bad situation here for Crimson Echo. Almost, I think, a 3k lead here for their side, from the side of Yama Esports as well. They have only the inhibitor turrets left. They still have a really good amount of turrets defending for Yama Esports, and the second tier Lord is coming up as well. So this is not looking good. It's 13 minutes in, and I hope they're able to take this Lord once again, either to for the side of Yama Esports, because they can end it early and they can win a shot, and then we have it Dark going in for Lukem, but that is a really bad idea on their side. But then again, the follow-up comes, Vial goes in, the Tsunami Slam comes up as well, the Black Dragon form has been popped up, Vial might be in trouble here, Ztad looks like he could be in trouble, but he moves on to a really beautiful position there, gets a beautiful double kill. Once again, Lukem, Rarin is the one that takes him down, and denying a triple kill for his team. But Seth might be looking for a kill here, but he gets taken down. Ooh. Oh my gosh, he was so close to being taken down. Z-Dad was so close, man. Oh my gosh, what a beautiful set by Seth, but it didn't work out well. Dark was picked up like a baby, and there we have it. It's just two, and they're losing the inhibitor turrets as well. Ash, what is this? Minions into the way right now, going for that Nexus, which is open for the whole Yama Esports at this moment. The crown not gonna pop up. But look at that Rarin with the Primal Wrath will be taken down by Suzdumi. A lot of damage comes in. Viola falls down as well. Oh my goodness. This is the change. This is the momentum which just got displaced from the hand of Yama Esports to the hand of Crimson Echo. But look at that melt. Look at that damage from Toby. Zed He's literally, giving out the retard moments for whole Crimson Echo at this moment. But in the meantime, Crimson Bacon and the Black Dragon with the Crimson Vortex, everything just got thrown. Easy Lord comes out, even though the Dark went for the Bravest Departure for the zone. But what is happening at the jungle area? Legendary being claimed by Toby here, and he's going for the double. He'll be securing it as well. The Crimson Bacon used. Now went for the triple. Once again, he will be claiming it as well. The recall is happening there. Look out. Oh my goodness. Dark could have captured him out there.
Look Yeah. at that. I mean, this minion flow might gonna end up the whole scenario, whole Oh, story there we for have the it. side of. But they are trying their best to clear it out, locking down the base here. The crown is about to pop Oh, up this is because bad. another wave is coming in, and it Oh will be no. Toby finishing it off for Oh the man. side of Team Yama Esports. Congratulations, Team Yama Esports, for taking on the victory with a 3-1 score and getting your slot into the LAN that is obviously at Arunachal Pradesh in this Arunoday Esports. So many congratulations for the slot. And what a play it was! Like the first game was Toby's game. Savage, triple, gears, everything, guys. I mean, from structures to the economy, from Exactly. kills to the, couple kills, Yeah. everything was for Toby in this game. Like he was regulating the game as a god. I was not expecting the Savage, but like his positioning was really good, and this is like one of the main things. You blink carry, the range is not really good, so you're gonna have to use the Malefic gun. You need the Malefic gun for a reason, and that is to make sure that you're in a good enough position where they're not gonna be able to touch. The Ztod, and then Ztad here. Oh my gosh, I was thinking Toby, and I was thinking Ztad as well, and I call him Ztod. But yeah, it worked out well because oh my goodness, I was surprised, but then again, Raran with his favorite pick for the jungle works out once again, and this is why we see that Yamaha Esports they work together as a team. It's not just one guy carrying the team. It's all of them playing their roles beautifully, and they're making it work. And there we have it. The highlights are in Ashtz because this part was really crazy. I actually thought that Crimson Echo was going to take this game because of the way they played the first part here. Viol is taken down, and then Alum also is the one that gets taken down as well. I mean, even though Toby's got the MVP, but we're gonna see it out. Look at that round and round killing spree for the set, and he goes back, but he couldn't survive Yeah. the attack from Dark there, and he got down easily. At this point, you can say like the game was still on to the hand of Crimson. They were actually playing Yeah. well in the very start of the game, but then look at Mm-hmm. this turtle fight, which just changed out all those economical lead, but the turtle went into the hand, and now they just got acquired by Dark there. Exactly. And at that point, if you're gonna see Toby, what he was doing, he was taking out the tears into the bot. He was taking out the gold spike into his hand. But look at that. All these spikes, he never joined it out. He joined it Mm-hmm. when, I mean, it was needed. Like when he Yeah. got the damage into his hand, this was the moment when Seth got the triple kill. He went for that maniac with the dodge. Look at this dodge. You're gonna see the flicker dodge from Toby here. He went for the fracture, but Flicker comes up. That was the moment. I was like, beautiful setup from him. But then it was a kill for Lucum, Yeah. who managed to take out Toby. But then Toby never looked back. He never looked back. He just looked Yeah. into the eyes of each and every member of Crimson Echoes. Shut down. I think Killing spree for Nolan, Dark. Went like for the Nolan was double. so good as well. Like Nolan was such a good pick in this match, but it's just oh man, the carry was so farmed and Seth just didn't have enough damage anymore in the late game because they're like by that time everyone is tanky enough to do something about it as well. And look at that, Aoi, the beautiful timing coming up by the Viol though, that was really wonderful to see. And look at that once again, the Grand Slam. The tsunami comes in again. It was too much, man. Because like the follow ups from Yama Esports were, like say it was on point. Sometimes it was like a tad bit late, but they were able to do something about it as well. And sometimes it was like a bit too early. But like the thing was, they could still bring them down. That was the main thing that Crimson Echo was facing. And this one here, I felt so bad. I felt like if the Primal Wrath was it was popped up. It was popped up. But if Suzumi wasn't there, I think they would have fallen down there. But And this was the yeah, moment man. Mm-hmm. which was been awaited by everybody. A kill onto PYZ with a tsunami slam. Double went on to Suzumi, then triple onto Lucam. Sheesh. Maniac And then the onto minion. PYZ, and Savage was the moment changing point when the last kill got onto. Oh, Yeah. then I mean, two lots. If you're gonna see two lots, has been Yay. taken down by Crimson. But then the changing moment every time Zeptad was doing godlike, legendary after Exactly. legendary, slaying after slaying, slavering after slavering, each and every hit.
of Kremchenko. This guy is the real Exactly. problem for this game against Yama Esports for Kremchenko. I would Triple. say, I would have to say, man, like if PYZ was like kind of what you call it, if it was just him that, what do I say? If that time there, like in the top lane where they were fighting, if he had just like gone in before wait instead of waiting, it would have worked out well. I even thought that like they could have given some time to Harith for actually having the the goal lead, or maybe the recuperation of the gold. That could have been done a little bit of position wise, and or you can say like damage wise. Harith could have gapped the Mhm. four members of Yama Esports, but they didn't give him a lot of chances, and that was the reason team Exactly. Crimson Echo couldn't make their comeback in this game. But it doesn't matter. So far, the way they have proved themselves in this tournament, I loved it, man. I loved it. But Toby, I Exactly. mean, I just came for casting, and I was seeing Abastezi having the MVP, but then I saw like Toby, this player of the match, 12% damage taken. Doesn't matter. He's a MM. He's not a tank. But look at that Mhm. damage dealt, 32. 32% with a kill participation of 58%. I mean, this is Yeah, insane. And his item section was totally filled with a Coruscant exactly. Sky, with a Demon Hunter Sword, a Rose Gold Meteor. And he does have a Malefic gun here, and Yeah, so do the golden staff Dragon as well. Hunter Sword. And this is literally like so much penetration, so much attack speed at the same time with a sustain into his hand. 13-1-2. The KD is so fascinating, so decorated by him. And let me Yeah. tell you guys, let me remind you, in this 13-1-2, he do have a savage, he do have a triple kill. So like 8 kills was just from the couples. And solos were like, yeah, he already have taken a one double as well. So like this guy was totally insane in this game number 4. No momentum for Team Crimson Echo to actually make their way back into the game, or make their way back into the series. 26 16, a well start from Crimson Echo, just got devastated by Toby Zetab. Hey man, this is not a game that was easy to win for Yama at the same time as well, because the early games was really well played by Crimson Echo, and I love the way they at the end, they were able to do something about it in the in the later on stages as well. So that was the thing about it. Like they made sure that Zetot was able to uh say like they were able to protect him a lot as well. So I think, yeah, that's there we have it. We got the head to head, the MVPs of the team. It's gotta be Zitard and Susumi here. Beautifully well played from both these two, though. 'Cause I have to say, man, I really have to say, because they worked out really well. 58%, kill participation, but we have 88% from the side of Susumi as well. So that's really crazy, man. Didn't expect that, but oh my gosh, it was 88% of all the kills from the side of Crimson Echo that he participated in. So that was good. That was really good. Yeah, it was 88%. Like that was too high, like more than 80%, near to the 90% mark. Like each and Exactly. every kills, each and every assist has been there for Suzumi. But what can you do? Like when there is a demonic tank killer, a god slayer in your opponent's side, and you cannot stop him down. Like after having that much buff, that much like problems they just faced because of that carry. Otherwise, they could have settled the scores for a 2-2 and went for that fifth game decider. Rich guy, none other than Toby for you, ladies and gentlemen. The carry, and he got the carry. So who will get the carry? Obviously him. Oh, what plays, guys? With that, Dark is on to that. Like Sandbag, literally taking Yeah. all those damages for himself. And Wingman goes to Viole. If you remember, when the start for Yama Esports, when the Heat just got into the enter into the match for Yama Esports, was Viole onto the top side. There was a fight. Nolan comes in, got the kill free. There was Yeah. Lapu Lapu getting the kill as well. But then PYZ was giving out all those
setups for the side of Team Crimson Echo, and Yep. boom, Viola enters the scene, got the kill, and comes back as well. So like it is a start from Viola, ends with Toby. From mid to goal, Yama Esports managed to dominate the whole game for them, and good thing. And their fans a beautiful land qualifier into the Arunachal Pradesh, that is in Arunoday Esports. Last time I remember, like they were in the Hornbill Esports land qualifier, and they managed to win it as well. But due to some reason, they uh, did not manage to come into the land. This time, I hope they will be representing themselves into the land. And like back-to-back land for Yama Esports. If I will tell you, like after another Esports, they will be there in like Dawn of Unity's like that is Unity Showdown's LAN as well at Silicon. So obviously, like love to see them back to back into the LAN. But the wait is not over yet. Let's see, because last PO5 series at Arunoday Esports is yet to come. No, we're done. And, we're taking a short break and coming back soon. So stay tuned with us. Don't go anywhere, guys. Open up your chips packets and be there. Thank you. एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, आर यू तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स,
Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars,
Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars,
Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार। Entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars,
Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा Entertainment जोरदार, Netflix के सारे stars, Amazon Prime Video मजेदार, local shows का भरमार, TV channels भी Ready everyone? है तैयार, entertainment जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। Super fast Wi-Fi, unlimited entertainment. Airtel Extreme Fiber. Super fast Airtel Extreme Fiber आपके नए स्वागत है देवियों सज्जनों आप सभी को हमारे इस अरुणोदय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। और यहाँ पे आज हो रहा है लैंड क्वालिफायर दूसरा BO5 आज के रात का। यह है मैच ओनिक्स पैराडॉक्स बनाम टीम मिनट हाँ ये आ गया हमारे आंखों में वीकेंड। अच्छा वीकेंड का गाना तो मैं बहुत सुनता हूँ लेकिन आज जो है वीकेंड की टीम यहाँ पे खेलने वाली है। टीम का नाम पहली बार सुन रहा हूँ लेकिन इतना मुझे पता है कि इस टीम ने ग्राइंड बहुत किया है क्योंकि पहले से लेके अभी तक यहाँ तक आने का जो सफर है वो बहुत बड़ा था और उसको तय करना भी बहुत बड़ा था। तो इसीलिए टीम वीकेंड और टीम ऑनिक्स पैराडॉक्स को मेरे तरफ से 7 नहीं बल्कि 21 तोपों की सलामी क्योंकि उन्होंने इतना तक जो है अपना सफर तय किया। अभी एक टीम जो है वो आगे जाएगी यानी कि लैंड क्वालिफायर में और एक टीम जो है वो रवाना होगी अपने घर के लिए यानी कि वो लैंड क्वालिफायर में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी।
देखते हैं कौन सी टीम आज ये करती है, कौन सी टीम नहीं करती है। फैन्स का क्या कहना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ व्यूअर्स जो है अपना निर्णय, अपना जो उनका जो गेस है, वो हमें बता दें कि 3-0 होने वाला है या फिर 3-2 या फिर 2-3 क्या होने वाला है? कौन-सा जो है आपको देखने का मन है कि ओनिक्स पैराडॉक्स जो है वो यहाँ पर खेला अपना जमाए या फिर टीम जो है आपकी वीकेंड वो यहाँ पर क्लीन स्वीप करे। मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई शिन्रा भाई। तो शिन्रा भाई कैसे हैं आप? बहुत बड़े दिनों बाद आपके साथ फिर से कास्टिंग के इस डेस्क पर स्वागत है आपका यहाँ पर अरुणोदय ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर जो है हमारे दर्शकों के साथ घुल-मिल जाएँगे और उनको मनोरंजन का जो रास्ता है वो दिखाएँगे, क्योंकि ये आपका पहला कास्टिंग है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और इसी के साथ आज का ये मैच वो ज़रूर देखने वाली बात होगी एसटीजी और देखते हैं किस प्रकार से जो टीम्स है वो खेलने वाली है और किस प्रकार के जो ये मैचेस है वो होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहूँगा और जानते हैं आपसे भी थोड़ा-सा इन टीम्स के बारे में कि आपको कितना पता है एसटीजी? थोड़ा बताना चाहेंगे दर्शकों को भी और ज़रा मुझे भी थोड़ा-सा अंदाज़ा करवाएँगे? मैं आपको पहले से बता मैं आपको नहीं बल्कि दर्शक सबको पहले से बता दिया कि मैं वीकेंड का जो है ये पहला कास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ओनिक्स पैराडॉक्स बहुत ही बड़ी नाम है, भूटान की ये टीम की नाम थी, लेकिन अभी जो है इंडियन टीम ओह! बन के खेल रही है यहाँ पर, यानी कि इंडियन ओह! प्लेयर्स यहाँ पे होंगे। कुछ इम्पोर्ट्स जो जब से इम्पोर्ट लागू हुआ है, बहुत सारी टीम में हम इम्पोर्ट प्लेयर्स देख रहे हैं, भूटान के, नेपाल के, बांग्लादेश के और जो दूसरे-दूसरे देश चाहे जिनकी जो पिंग है, वो इश्यू नहीं होती है, वो खेल सकते हैं। वैसी टीमें जो है वैसे प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और टीम जो है जी? तो हाँ, टीम जो है वो आगे बढ़ रही है और प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पिक्स आता हुआ हमें बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर ये है एक कलेया, सोरा और हायाबुसा। सोरा की बात करें शिन्ना भाई, आपको क्या लगता है नया हीरो है? टैंक फॉर्म भी है इसका, फाइटर फॉर्म भी है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये हीरो जितना अच्छा साबित M7 में हुआ है, क्या उतना ही अच्छा साबित इस मैच पे होगा और अरुणोदय ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? अच्छा तो शायद से शिन्ना भाई का कुछ टेक्निकल ग्लिच जो है वो आ रहा है। उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे और वापस आएँगे, हमारे साथ जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट के इस पहले मैच में पहले गेम पे दूसरे मैच का ये जो मोड है, जो कि एक BO5 सीरीज़ ओनिक्स पैराडॉक्स बनाम टीम वीकेंड और आप देख सकते हो कि कैसे जो है यहाँ पर ईशन शिन को यहाँ पर लिया गया है टीम वीकेंड की तरफ से और ईव और कैरी। मेरा प्रश्न ये था कि लाइक शिन्रा भाई तो बोल नहीं सकते अभी, वो उनका कुछ टेक्निकल इश्यू है। लेकिन मेरा प्रश्न दर्शकों से था फिर कि लाइक 2 इस मेटा में 2 को के साथ खेलना और उसके साथ ईव और एक कोई सी हीरो, तो क्या वो सही रहेगा? क्योंकि जैसा जो टीम बना रही है टीम आप देख सकते हो कि ओनिक्स पैराडॉक्स हायाबुसा के लिए गई है। मतलब काउंटर है ईशन चिन का, पहले से सोच-विचार रखा था कि नहीं मतलब जब देखा कि वहाँ पे ईशन शिन आ रहा है तो सीधा हायाबुसा को देखिए हील के बदले और एक हील आ गया है, वॉकिंग गार्डियन हेलमेट का नाम देते हैं हम लोग बेसिकली मिनोटॉर को और ये मिनोटॉर जो है यहाँ पर जो है ले लिया गया है टीम वीकेंड की तरफ से और आखिरी 2 पिक्स सुंदर पिक्स ओनिक्स पैराडॉक्स यहाँ पर फार्सा और एस्परेल्डा पिक के लिए जाते हुए दिख रहे हैं और उसी के साथ-साथ लास्ट पिक यहाँ पर आता हुआ टीम वीकेंड की तरफ से क्या हो सकता है? वो प्रश्न है यहाँ पर। बहुत सारी पिक्स यहाँ पर खुले हुए हैं। और अगर देखेंगे तो मतलब ईएक्सपी में एस्परेल्डा के अगेंस्ट क्योंकि वहाँ पे क्लॉड आप देख सकते हैं क्लॉड आया हुआ है। एस्परेल्डा ईएक्सपी में जा रहा है तो एस्परेल्डा के अगेंस्ट पे अगर आप देखेंगे अभी अल्फा भी बहुत अच्छा चल रहा है। जूलियन भी आप ले सकते हो और ऑफ मेटा पिक्स के अलावा मेटा पिक्स जो है आप वहाँ वो भी ले सकते हो कि जैसे कि यूज़ोंग बट नहीं, यहाँ पर टीम वीकेंड की तरफ से जो है एलिस देखा जा रहा है। एलिस ईएक्सपी के लिए जा रहे हैं। शिन्ना भाई क्या लग रहा है? 5 के 5 बंदे तैयार है। कौन-सी टीम की ज़्यादा मतलब बहुमत रहेगी जीत में? जी, बिल्कुल और यहाँ पे स्कूशी थोड़े-से ज़रूर मेरे को दिख रही है। टीम विकेट के साथ देखा जाए तो 3 स्कूशी वहाँ पे रहेंगे तो हायाबुसा
कहीं न कहीं अपनी क्वाड शैडो लगाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी पे जो है बैकलेन की तरफ जाते हुए ईव या तो फिर यहाँ पे यूशिनशिन को निकालने का प्रयास करें और उनके साथ-साथ फारसा यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बिग रोल प्ले करती हुई दिखा सकती है हमको अपने जो है फेदर एयर स्ट्राइक के द्वारा। बात करें क्लॉड की तो क्लॉड भी कम नहीं रहेंगे। एज़ अ डीपीएस उनकी तरफ से यहाँ पे जो है टीम की तरफ से खेलते हुए हमें दिखेंगे और उसी के साथ केलिया यहाँ पे रहेंगे किडनैप करने के लिए। मीना वहाँ पे ज़रूर रहेंगे हीलिंग प्रदान करने के लिए और एलिस उनकी बात करें तो एक की रोल निभा सकती हैं अगर वो फाइट खत्म इनिशिएट करने के लिए जाएँगी या फिर जब रिसोर्सेज़ सारे यूज़ हो जाएँगे तो पीछे से अल्ट मार के पूरी टीम के लिए जो है एक चुनाव यहाँ पे जो है सस्टेन करती हुई, डैमेज देती हुई आगे जा सकती हैं। लेकिन दिक्कत जो है सबसे बड़ी जो टीम में वो दिक्कत देने वाली है वो है कैरी। अगर इनको जल्दी नहीं निपटाया गया तो ये जो है फिर अगर फार्म हो जाएँगी तो इनका ट्रू डैमेज पूरी टीम के लिए दिक्कत बन सकता है। और उसी के साथ देखते हैं किस प्रकार से ये जो टीम है वो यहाँ पे खेलती हुई जाएँगी। आप सभी के सामने प्लेयर्स नेम के साथ उनके हीरोज़ यहाँ पे दिखते हुए दिखेंगे लेकिन अर्ली गेम पे देखा जाएगा मिड लेन की तरफ मीनो को थोड़ा झंझोरा जा रहा है। इस साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी कशमकश हुई थी। पूरी तरीके से रिसोर्सेज़ सारे यहाँ पे जो है लगाए ज़रूर गए थे मीनो के ऊपर। फिर दोबारा उनको पोक किया जा रहा है। टूमो यहाँ पे मिड लेन की तरफ चलते हुए। इस साइड पे देखा जाए तो अभी रोटेशन आता हुआ हमको दिखेगा। यूशिनशिन अभी रेड बफ लेने का प्रयास करते हुए हमें दिख रहे हैं और फाइट किस प्रकार से छिड़ने वाली है वो ज़रूर बात होगी क्योंकि ईव जो है यहाँ पे पोक ज़रूर करना चाहेंगे लेकिन उससे पहले किलिया यहाँ पे मिनोटॉर के ऊपर फिर दोबारा यहाँ पे हमला होता हुआ बाल-बाल बचते हुए निकलेंगे और एकदम राहत की सांस ज़रूर ली होगी उन्होंने इस समय जिस प्रकार का हमें देखने को मिला था कशमकश होते हुए टॉप लेन की तरफ यूशिनशिन का जो है लेवल 4 होने का प्रयास वो पूरा होता हुआ दिखेगा। बॉटम लेन की बात करें तो अभी सिर्फ फार्म होने का प्रयास किया जा रहा है। मिनियंस हिट करने का वो प्रयास होता हुआ भी दिख रहा है एसटीजी। प्रयास तो बहुत सारी चीजों का दिख रहा है शिन्ना भाई, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हो अभी तक ना ओनिक्स ई स्पोर्ट ना ही वीकेंड ऑन थर्सडे किसी की तरफ से जो है नोटबुक का खुलासा नहीं हुआ है, यानी कि स्कोर बोर्ड पे एक भी किल नहीं लगा है। तो पहला खून अभी भी बाकी है, फर्स्ट ब्लड अभी भी आना बाकी है दोनों टीम की तरफ से। साथ ही साथ उससे पहले टर्टल यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। उससे पहले आप देख सकते हैं माउंटेन शॉकर रिलीज हुआ है। जोन क्या है इस बार, मिनोटॉर का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन्होंने डाइव किया है, हील किया है। लेकिन ये देखिए स्टारफॉल मून के साथ जो है पहला खून यहाँ पर चुराया है टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स के ईएक्सपी लेनर केजांस्की। बहुत सुंदर तरीके से सेटअप दिया था और बहुत सुंदर तरीके से फिनिश भी किया, अपने नाम पे वो पहला किल दिया। और अभी ये देखिए फारसा जोन आउट करते हुए, प्रॉपर जोन आउट, बिग ब्रेन, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए। उससे पहले थोड़ा सा जोन, थोड़ा सा पोक और पीछे हटेंगी टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स। ये देखिए टॉप लेन क्लियरेंस, ये जरूरत है थोड़ा सा। यहाँ पर हमने देखा था कि कल कैसे किड बॉम्बा जो है M7 में रंगरेलिया मचा रहे थे एस्मेराल्डा के साथ। तो केजेंस्की भी शायद इसी मतलब मोमेंटम को अपना बनाने के लिए और वो हर जगह पे अपना जो है छाप डालने के लिए वो लिए है। और ये देखिए वो खेला भी वैसा ही रच रहे हैं। दूसरा किल उनके लिए, रोटेशन दे रहे हैं, क्लियर आउट कर रहे हैं अपना लेन, फिर रोटेशन दे रहे हैं मिड लेन पर, और सुंदर तरीके से सिर्फ रोटेशन नहीं फिनिश अप दे रहे हैं, वो किल्स ले रहे हैं, वो माइक्रो अपना सेटल कर रहे हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो केजेंस्की जो है यहाँ पर ये लेन को प्रेशर्स नहीं दे रहे बल्कि किल्स भी ले रहे हैं और हर एक तरीके से जो है अपने टीम को जिताने की कोशिश रच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रैप डाउन करने की पूरी कोशिश, और पूरी कोशिश नहीं बल्कि ट्रैप डाउन किया था। पीछे हटेंगे, फॉलो अप आया है टीम विकेंड की तरफ से उनके गोल लेनर को बचाने के लिए, और बचाने में सक्षम भी। जी, बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे रोटेशन आता हुआ हमें दिख रहा था। लेकिन इस बार देखिए एयरफील्ड स्ट्राइक का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसी के साथ विन को यहाँ पे धाराशायी किया गया है। अंदर गए दूसरा, उसी के साथ शैडो किल लगाने का प्रयास, उसी के साथ क्वाइट शैडो का इस्तेमाल करते हुए पीछे आएंगे खूबसूरती से। एलिस यहाँ पे आना चाहती है, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे एक किल धाराशायी हो सकता है। किडनैप करके लेके जाएंगे टावर के अंदर, टावर का ज्यादा डैमेज किलिया हील करते हुए। बहुत ही खूबसूरत माइक्रो का इस्तेमाल हमें देखने को मिला इस मैच में, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। पीछे से एस्मेराल्डा फ्लिकर का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए एक किल और अपनी टीम के लिए जोड़ते हुए जाएंगे, और इस टीम के यहाँ पे अपनी टीम के लिए बेहतरीन किल की पारी, 5-1 का स्कोर होता हुआ। और इस समय जो ओनिक्स ई स्पोर्ट्स है यहाँ पे अपना जो है दबदबा बनाती हुई दिख रही है इस मैच की तरफ। विन आप देख सकते हैं कि रोटेट किया है, लेन एक्सचेंज किया है अपना,
थोड़ा सा जो है दिक्कत हुआ था उनके लिए, और उनके लिए जितना दिक्कत नहीं हुआ है उससे ज्यादा दिक्कत आडू के लिए हुआ है। आडू जो है लिटरली में लेन हार रहे थे केसंस्की से। और ये देखिए फेदर एयर स्ट्राइक आता हुआ 5-1 का ये स्कोर बहुत ज्यादा बड़ा था यहाँ पर, आपको देखने को मिल रहा होगा ओनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से। उससे पहले ये दूसरा टर्टल कैप्टन मैक्स ने ले लिया है, और इनवेड में भी जो है सक्षम हुए केसंस्की। यार आज दिन केसंस्की का ही है, जहां पे भी जा रहे छाप डाल रहे अपना, अपने लेन में हो, किल्स पे हो, इन्वेड करने जाते उस पे भी सक्सेसफुल होते। अगर आज वो, सच में बोलता हूँ, आज अगर वो M7 भी चले जाएंगे ना तो शायद M7 जीत ले वो। जी बिल्कुल, जुनून एकदम दिखता है बंदे का, और इस समय यहाँ पे वो जरूर दिख रहा है। सीन यहाँ पे चाहते हुए जरूर उस पे लगा जरूर था कि वहाँ पे होंगे, और खेलेगा खूबसूरती से वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से टावर डाइव पे लेके गए थे एलिस को सीधा टावर का डैमेज देते हुए, और हील जिस मूवमेंट पे उन्होंने किया, उन्हें पता था कि वो हील हो जाएंगे। एकदम खूबसूरत माइक्रो प्ले वहाँ पे जो उन्होंने किया था बेहतरीन तरीके से। और देखिए रोटेशन भी किस तरीके से आ रहा है टीम का, लगातार जो है 3 से 4 बंदे एक साथ रोटेट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए फिर से रोटेशन आएगा बॉटम लेन की तरफ, लेकिन इस समय वहां पे टैंक जरूर मौजूदा रहेंगे, लेकिन उनको पता है खेलिए अंदर जाएंगे जरूर, लेकिन मीनो ही पकड़े जाएंगे। चलिए मीनो ही पकड़े जाएंगे तो उनको ही सीधा धाराशायी किया जाएगा, किलिंग स्प्री यहाँ पे मिला जाएगा, उसी के साथ अच्छा खासा डैमेज आएगा क्लॉड का पीछे से। अकेले फिर दोबारा पकड़े गए। और देखिए यही दिक्कत होता है जब आप एक स्क्विशी लाइनअप लेते हैं, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। आपका एक बार टैंक धाराशायी हुआ तो पीछे फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। कोशिश थी कि वहां पे जोन आउट करे, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन अभी मीनियन फ्लोस जो है वो स्ट्रक्चर तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। टॉप लेन पर भी थोड़ा सा जो है दबदबा रहेगा, क्योंकि कैरी वहां पर जा रहे हैं और उनके पास कोई नहीं है डिफेंड करने के लिए। क्या हायाबुसा और केजन्स की रीच कर पाएंगे? लेकिन कैरी सतर्कता पूर्वक खेल रहे। विन पीछे हटेंगे, उससे पहले आप देख सकते हैं किल देखने को मिला है। नीलू यहाँ पर धाराशायी हुए हैं बिग ब्रेन की तरफ से, अपना ब्रेन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैट वहां पर इन्वेड करने में सक्षम रहे जरूर। रेड बफ को आंखों के सामने चुराया है ईशनशिन का, मौका ही नहीं दे रहे फार्म होने का। और आपको पता है कि जब आप एक ईशनशिन जंगल के साथ खेल रहे हो, आपको वो पावर स्पाइक चाहिए। जब आपको वो पावर स्पाइक नहीं मिलती है, जब आपको वो बफ नहीं मिलता है, जब आपको वो गोल्ड नहीं मिलता है, तो आपका जो डैमेज है, जो आपका गेम प्ले है, वो बिगड़ जाता है ईशनशिन में। तो जितना अच्छा हीरो है उतना बड़ा गैम्बल भी खेलते हो आप इसके साथ। सिर्फ ईशनशिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम, वीकेंड टीम के लिए जो है अभी काले बादल छाए हुए हैं शिंडा भाई, क्योंकि 6K ऑलमोस्ट 6K का गोल्ड लीड यहाँ पर बना रही है टीम ओनिक्स पैराडॉक्स। तो आप बोल सकते हैं कि क्या भूटान के इंपोर्ट्स जो है वो इंडियंस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, लेकिन यही वो बात जो है वो देखने वाली बात होगी। देखिए अभी भी मैकेनिक्स जो है ना गेम के, वो भाई वो ये क्या बहुत था? ऊपर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर स्ट्राइक के द्वारा यूशिनशिन को खत्म करेंगे, और उसी के साथ फिर दोबारा इस भैंसुर को उठा के फेंका जाएगा। ऐसे क्लाउड आते हुए सस्ते डीपीएस, उसके साथ क्लाउड शैडो लगाते हुए खूबसूरत प्ले ऑफ हमें देखने को मिला। और यहाँ पे अंत ये सीधा एलिस के साथ, क्या एलिस यहाँ पे सस्टेन करने का प्रयास करती हुई, लेकिन सही समय पे पीछे हटेंगे, लेकिन क्लॉड वो मौका नहीं छोड़ने वाले अपने हाथ से, और वो लास्ट का किल स्टील करते हुए लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिस प्रकार से जो टीम है वो खेलती हुई हमें देखी यहाँ पे। सेटअप दिया था 13-1 का ये स्कोर, डोमिनेटिंग वे से अभी तक इस गेम को आगे बढ़ाती हुई टीम ओनिक्स पैराडॉक्स बिल्कुल मौका नहीं दे रही है टीम वो वीकेंड ऑन थर्सडे को। और उससे पहले ये देखिए यहाँ पे रिटेलिएशन देखने को मौका मिल रहा है, थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश। सुनामी स्लैम आता हुआ फेदर एयर स्ट्राइक से फॉलो अप किया है, बहुत ज्यादा डैमेज हील यहाँ पर जरूर प्रदान किए, लेकिन पीछे हटे आडू बस फंस गए। यहाँ पर किलिंग स्प्री लेंगे फ्रेंस्की कैप्टन, यहाँ पर डबल किल मिलेगा फ्रेंस्की को, ट्रिपल नहीं केजेंस्की को यहाँ पर मिलेगा मेगा। 4 बंदों को यहाँ पर घायल किया है टीम ओनिक्स स्पोर्ट्स ने। उतना ही नहीं बल्कि 17-1 का ये स्कोर, ये हेवी स्कोर जो है वो रच दिया है उनके ऊपर। होली शील्ड 8 मिनट 53 सेकंड पर टूटता हुआ हर एक तरफ से। जी बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए मौका नहीं मिलता है। अब जब टीम इतना ज्यादा फार्म हो जाती है तो आप सिर्फ वेट कर सकते हैं कि सामने वाला जो टीम है वो कोई गलती करे या उनकी साइड से कोई गलती हो, और अगर उनकी साइड से कोई गलती होती है, अगर उस गलती का भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे
दोबारा मीनो को उठा के लेके जाएँगे केलिया। इस बार केलिया बिल्कुल भी मीनो को स्टार्टिंग से ही यहाँ पे बुली किया जा रहा है। उनको जो है अकेले छोड़ा ही नहीं दिया जा रहा है। जितने बार आते हैं वो सीधा यहाँ पे उनको रिस्पॉन्स की तरफ भेज दिया जाता है। एशिया का इस्तेमाल होता हुआ पीछे से आएँगे क्लॉड और उसी के साथ शैडो किल का इस्तेमाल करते हुए हायाबुसा लेके जाएँगे एक और किल। 2 बंदे धाराशायी होंगे। 3 वर्सेस 5 का यहाँ पे जो है सिनेरियो बन चुका है और यहाँ पे देखिए सुनामी स्लैम उसी के साथ उनको धाराशायी किया गया। 3 वर्सेस 5 यहाँ पे होता हुआ क्या यहाँ पे डिफाइन होने की क्षमता ज़रूर करना चाहेंगे, देखना पड़ेगा। अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रहेंगे ज़रूर, टावर का डैमेज लेंगे अच्छा खासा एस्मेराल्डा के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है डबल किल धाराशायी कर चुके हैं और उसी के साथ मॉन्स्टर किल लेकर जाएंगे। क्लाउड का यहाँ पे अंत होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिना कोई टाइम गवाते हुए ट्रिपल किल पे हायाबुसा और उसी के साथ ये जो मैच है जो ओनिक्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे खत्म करती हुई दिखेंगी और इसी के साथ वीगन जो टीम थी वो यहाँ पे धाराशायी होती हुई दिखी। एसटीजी क्या कहना चाहेंगे? ये डोमिनेट जो किया है इन लोगों ने इस प्रकार से कई बेहतरीन माइक्रो हमें देखने को मिला। वो खूबसूरत माइक्रोस कुछ प्लेस हमें जो देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं न कहीं मुझे लिखा कि लाइक अर्ली फेज़ में जो है केज़ेंस्की का दबदबा रहा, उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे फ्रेंस्की ने जो है वहाँ पर लेट गेम सँभाला, साथ ही साथ कैप्टन जो है वो टर्टल्स, लॉर्ड और हर एक फाइट पे मौजूद भी थे। एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूरा 100% टीम गेम था ये। टीम ने बहुत अच्छा खेला है यहाँ पर। मौका तक नहीं दिया वीकेंड को वापसी करने का, मौका तक नहीं दिया वीकेंड को गोल्ड में वापसी करने का, मौका तक नहीं दिया वीकेंड को थोड़ा-सा फ्लिंच करने का। और आप ऐसा दबदबा वाला गेम प्ले जब दिखाते हो, इतना जब मतलब डोमिनेट करते हो पूरे मैप को, तो सामने वाले की जो है कॉन्फिडेंस टूट जाती है। जितना भी अच्छा पिक हो लाइक उनके पास मिनोटॉर था, उनके पास आप देख सकते हैं ईशन शिन था। लेट गेम स्पाइक वाले हीरो उनके पास थे, कैरी था उनके पास। हमने पिछले मैच में देखा कि कैसे ज़ेड जो है, कैरी में सैवेज लिया बंदे ने। इस मैच में हमने उसका कुछ उल्टा ही देखा। लॉर्ड यहाँ पे भारी पड़ गए कैरी के ऊपर और जैसे कि मैंने बोला एरेंस्की लेट पे शाइन किए बंदा। केज़ेंस्की से स्टार्ट हुआ, एरेंस्की पे खत्म हुआ। टीम ओनिक्स पैराडॉक्स ने जो है छापा डाल दिया है यहाँ पर पहले मैच पे ही। 1 पॉइंट जो है ले लिया है, बल्कि 1 पॉइंट नहीं 11 मिनट के अंदर मैच को खत्म भी कर दिया है। एमवीपी यहाँ पर एरेंस्की अपने क्लॉड के साथ देखिए कितना ज़्यादा अज़ूबा दिखाते हुए पहले स्टार्टिंग में आप इनको इतना ज़्यादा जो है एग्रेसिव नहीं देखे होंगे। जब उनको स्पाइक मिला, टर्रेट ले लिया, गोल्ड बना लिया अपने लिए, तब जो है बीएमआई की मदद से एक-एक को जो है चुन-चुन के मारा है उन्होंने। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो धराशायी होने का वो मौजूदा मोमेंटम आया था लेकिन वो बच के निकले थे अपने बीएमआई की मदद से। फिर उसके बाद जो ब्लेज़िंग डुएट के डैमेज के साथ वो पियर्स कर रहे थे, वो अलग प्रकार का पियर्सिंग था। लेकिन केज़ेंस्की उस दौरान जो है अपना खेला दिखा रहे थे। ये देखिए क्वाड शैडो कनेक्ट हुआ था, आगे बढ़ेंगे, ये सुनामी स्लैम लगा था, प्रॉपर ट्रैप डाउन यहाँ पर किया था। लेकिन आप एरेंस्की को देखिए कितना सेफ खेल रहे थे और ऐसा ही है आप जब एमएम खेलते हो ना शिनरा भाई, आपको सेफ ही हुँ। खेलना है स्टार्टिंग में, कि आपको पता है कि आप लेट में कैरी करने वाले हो अपनी टीम के लिए। जी, बिल्कुल, लेट में ही कैरी करेंगे, आइटमाइज़ेशन के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं एमएम और उनका एक की फैक्टर यही रहता है कि आपकी पोज़ीशनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। देखिए, अगर आप गलत जगह पे रहेंगे तो हमें मारे जाएँगे और देखिए कितने खूबसूरत प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिला। फिर दोबारा वहाँ पे किडनैप करके लेके गए, स्ट्राइक का इस्तेमाल आया पीछे से, फॉलो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलिस किसी तरीके से उन्होंने कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। फिर दोबारा वहाँ से देखिए किलिंग स्प्री लेके गए, जाने का मौका ही नहीं दिया। एलिस को भागने का कोई प्रयास किया था उन्होंने लेकिन फिर भी उनको जो है वहाँ पे वो मौका ही नहीं मिला। फिर दोबारा से देखिए यहाँ पे एक और फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखेगी। बॉटम लेन की तरफ देखिए यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे कॉट शैडो लगाया, सीधा मार किया था पीछे ईव के ऊपर और उनको बचाने वाला कोई रहा नहीं। उसी के साथ कैरी यहाँ प्रयास करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही कम एचपी पे उनको भी पीछे हटना पड़ा और उसी के साथ सुनानी स्लैम यहाँ पे जिस प्रकार से दिया उन्होंने किडनैप करके लेके गई थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और यहाँ पे फाइट पूरा जो है खत्म होने की कगार पे आ चुका था। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे स्कोर चल रहे थे, वो जो फार्म डोमिनेंस ऑलरेडी था वहाँ पे उनके पास और उसी के साथ देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट लेने का जो प्रयास था, वो यहाँ पे खत्म होते हुए गया। 10 मिनट 30 सेकंड तक भी गेम ना चला। इतना जल्दी जो है ओनिक्स पैराडॉक्स को पड़ी है खत्म करने की इस मैच को। क्योंकि वो सुनहरा मौका आपको पता है ये जीतने के बाद जो है वो टेस्ट ऑफ विक्ट्री ही नहीं बल्कि टेस्ट ऑफ लैंड भी होने वाला है। ओनिक्स ई स्पोर्ट्स में ओनिक्स पैराडॉक्स पैराडॉक्स क्यों बुला रहा हूँ? दर्शकगण भी सोच रहे होंगे कि ऐश पागल हो गया है क्या? ऐश को दिखता नहीं है।
मैं बता देना चाहता हूँ, इनका टीम का पहला नाम जो है वो ओनिक्स पैराडॉक्स था, अभी ओनिक्स ई स्पोर्ट्स बन गया है। तो भाई सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे होता है हमारा, तो वो घुस गया है मेरे फीड में कि ओनिक्स पैराडॉक्स, पहले भी इनके लिए कास्ट किया था एक टूर्नामेंट पे, तो वो घुसा हुआ है तो बोलता रहता हूँ। माफ कीजिएगा, ओनिक्स ई स्पोर्ट्स, ओनिक्स पैराडॉक्स सेम टीम है, लेकिन इंडियन इम्पोर्ट्स यहाँ पे, लाइक इंडियन इम्पोर्ट्स नहीं, भुटान के इम्पोर्ट्स है, क्योंकि इंडियन टूर्नामेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही अच्छा खेला दिखाया। ये देखिए प्लेयर ऑफ द मैच, 71% किल पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, 19% डैमेज टेकन हुआ है, 33% डैमेज डील किए हैं। अपना पूर्ण विराम लगाने के लिए जो है सारा आइटम्स अपना बना दिया था। आखिरी एक आइटम बचा था, उसको बनाते तो और भी मैच में मजा आ जाता। लेजेंडरी लेने से बस 1 किल दूर थे। आई मीन गॉड लाइक लेने से और लेजेंडरी लेने से 2 किल दूर थे, लेकिन 11 असिस्ट उन्होंने दिया है। पूरे मैच में जो है उनका आप देखेंगे हावी रहा है। 12.2 का ये ग्रेड एमवीपी ऑब्वियसली एरेंस्की को जाता है। अटैक स्पीड पे गए थे, डेमन हंटर स्वॉर्ड और उसी के साथ कोरोजन स्काई, द मेगा आपका आपका मैलेफिक गन, सब कुछ बनाया था यहाँ पे, और आखिरी मोमेंट पे जो है गेम को टर्न आउट भी किया था। एक बहुत ही अच्छा डोमिनेटिंग वाला गेम जो है वो खत्म हुआ है टीम ओनिक्स पैराडॉक्स के हाथों में। 1-0 के साथ स्टार्ट किया है इस BO5 सीरीज को। क्या खत्म करेंगे 3-0 के साथ, या फिर दूसरे मैच में कमबैक का पॉसिबिलिटी है शिनरा भाई? जी, बिल्कुल, देखने वाली बात होगी यहाँ पे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला था इन्होंने भी। को पता था कि यहाँ पे उनका जो है लेट गेम में आने वाला है, तो वहाँ पे अ, अपने लिए टीम के लिए बेहतरीन तरीके से खेले, एक भी किल नहीं दिया। और कई बार जो है उनका जो पोजीशनिंग था वो बहुत बेहतरीन तरीके से मार्क उन्होंने बहुत ही सही-सही प्लेयर्स को किया था। उनको पता था कि कब समय अंदर जाना है, किस समय बाहर आना है। और 71 जैसे कि आपने कहा, किल पार्टिसिपेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसी के साथ यहाँ पे मैच रिज़ल्ट आप सभी के सामने आता हुआ दर्शकों, और ये रहे मैच रिज़ल्ट के सामने। 1 किल गया था सिर्फ, वो भी हायाबुसा का वहाँ पे जो है वो किल लिया गया था, जो अंदर गए थे। उसी के साथ बेहतरीन पारी यहाँ पे उन्होंने खेली। दूसरी साइड अगर देखा जाए तो यूशिनशेन 0-2-0 उनको फार्म ही नहीं मिला जो कुछ कर पाते। पहला आइटम ही आया था, दूसरा आइटम बन ही रहा था, मिड पे ही थे और वो बना ही नहीं। मैच जो है इतना लेट गए नहीं, उन्हें पता था ओनिक्स स्पोर्ट्स को, उन्हें पता था कि फटाफट से खत्म करना है मैच, उनको भी ज़्यादा लेट नहीं करना था। उन्होंने सीधा जो है एंड की तरफ गए। एसटीजी। जी, ज़रूर। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इस टीम ने पहला गेम को 24-1 एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता है। ये एक स्टेटमेंट है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें जितने भी गेम्स है, आगे जाकर लैन पे अगर वो क्वालीफाई करते हैं तो जिनके साथ उनका गेम रहेगा, उनके लिए स्टेटमेंट है कि ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स जो है, वो रेडी है। वो डोमिनेट करके हराने के लिए रेडी है, वो आपको एनाहिलेट करने के लिए रेडी है। और वो गेम प्ले से ही पता चल गया था स्टार्टिंग से ही, कैसे क्या जो किज़ेंस्की है, वो स्टार्टिंग से ही जो है रोटेट आउट कर रहे थे, रोटेट आउट ही नहीं बल्कि फिनिश अप भी दे रहे थे। और मैं 10 मिनट 30 सेकंड की बात कर रहा था, 10 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 9 मिनट 49, 9 मिनट 59, 49 बोल दिया गलती से, 59 सेकंड में इस मैच को खत्म किया है। 10 मिनट से 1 सेकंड दूर था टीम ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स ने इस मैच को खत्म किया है। तो सबसे फास्टेस्ट मैच अगर इस लैन क्वालीफायर का कोई है, तो मेरे हिसाब से यही मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जितने भी चार्ट है, दूसरे कास्टर से भी मैं पूछ लूँगा। मतलब मैं, लेकिन मुझे पता है कि भाई यही है सबसे फास्टेस्ट विन। तो क्या इससे इससे फास्टेस्ट होगा क्या सेकंड गेम, या सेकंड गेम चलेगा थोड़ा 15-16, 20-30? जी, बिल्कुल। और यहाँ पे आपके सभी सामने हेड टू हेड यहाँ पे रहे गोल्डन पे एलिस, उनके सामने यहाँ पे रहे थे एमवीपी ओनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से क्लाउड, और ये सभी के सामने 6011 वर्सेस 041 यहाँ पे रहे। डैमेज की बात करें तो यहाँ पे 23% से लेके 33% इनका रहा। अगर डैमेज टेकन की बात करें तो 19% डैमेज यहाँ पे क्लाउड ने लिया, और 32% डैमेज तो यहाँ पे जो टी एलिस थी यहाँ पे उन्होंने लिया। उसी के साथ टावर की बात करें तो टावर 46% यहाँ पे क्लाउड डैमेज के तौर पे रहे। टीम पार्टिशन की बात करें तो यहाँ पे एक 71% रहा क्लाउड का। दूसरी साइड पे देखा जाए तो एलिस का यहाँ पे 100% आता हुआ। तो ये आप सभी के सामने रहे। इसके सामने बाकी ये रहे सैंडबैग एस्मेराल्डा, जो यहाँ पे सारे हेवी हिटर्स के जो डैमेज है वो ज़रूर ले रहे थे। उसके साथ रिचका हमारे जो यहाँ पे क्लॉड, ये रहे एनएससी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए।
सिवेरेंस्की और केजेंस्की ही नहीं बल्कि ओनिक्स पैराडॉक्स के जो रोमर है पेरिडॉट पेरिडॉट भी यहाँ पर विंग मैन पे खड़े हैं क्योंकि वो असिस्ट उनका बहुत ज्यादा था। 18 टोटल असिस्ट उन्होंने लिया था। लेकिन कैरी ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर ले रही है नीलू। नीलू जो है वो है टीम आपके अपोनेंट साइड की टीम यानी कि टीम विकेट ऑन थर्सडे के। और आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने जो है यहाँ पर कैरी किया था अपनी टीम को। वो एक किल लिया था, सिर्फ एक किल नहीं बल्कि डैमेज भी दिया था थोड़ा-सा। और बट चला नहीं उतना। लेकिन आशा है कि ये दूसरे मैच पे जो है अपना कमाल दिखाए। क्योंकि मतलब हो जाता है शिन्रा भाई, कभी-कभार स्टार्टिंग गलत हो जाती है, चीज़ें अपने हिसाब से होती नहीं है और आपका गेम फँस जाता है वहाँ पर। तो लेकिन ये सेकंड मैच में जो होता है आपका रिडेम्पशन मैच बोला जाता है, कमबैक वाला मैच बोल सकते हैं आप या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि इस मैच पे जो है मुझे फाइट बैक देना है। तो शायद से BO5 सीरीज़ का कमाल ही यही होता है। BO5 सीरीज़ में एक मैच से तय नहीं होता है सिचुएशन। मैच आगे बढ़ता ही, बढ़ता ही, बढ़ता ही, बढ़ता ही जाता है। तो M7 में अगर ओनिक हार सकती है, तो फिर अरुणोदय ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में वीकेंड ऑन थर्सडे फर्स्ट मैच क्यों नहीं हार सकती? दूसरे मैच पे कमबैक क्यों नहीं कर सकती? इस चैंपियनशिप को जीत क्यों नहीं सकती? हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये होने के लिए वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है और देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे अरुणोदय ई-स्पोर्ट्स के चैनल को। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि लाइक करना पड़ेगा हमारे स्ट्रीम को, कमेंट करना पड़ेगा आप किसको हेल्प कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स के फैन हो या फिर टीम वीकेंड ऑन थर्सडे के फैन हो। और सिर्फ सपोर्ट कमेंट पे उतना लिख के नहीं बल्कि आप ये भी बता दीजिए कि आपका प्रेडिक्टेड स्कोर क्या है? आप तो बताएँगे, नहीं बताएँगे वो तो मैं चैट पे देख लूँगा लेकिन मेरे साथी मित्र शिन्रा भाई आपको क्या लग रहा है प्रेडिक्टेड स्कोर क्या होगा? 3-0 ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स या फिर 1-3, 2-3 फ्रॉम द साइड ऑफ टीम वीकेंड ऑन थर्सडे? थर्सडे में कौन-सा वीकेंड होता है भाई? मुझे बताइए कल मेरा एग्ज़ाम है। जी, कुछ लोगों का होता है स्टीजी भाई, कुछ लोगों का नहीं होता है और कुछ लोगों में से ये ज़रूर रहेंगे जिनका वीकेंड कल रहेगा। लेकिन उसकी बात करें आप प्रेडिक्शन की तो यहाँ पे शायद 1-3 की संभावना ज़रूर हो सकती है क्योंकि एक ना एक जो है यहाँ पे स्कोर ज़रूर करना चाहेंगे वीकेंड। कहते हैं कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। क्या पता जो फर्स्ट मैच में मिस्टेक हुई है, उससे ज़रूर सीखते हुए हमें एक यहाँ पे एक बेटर के साथ-साथ एक बेटर यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी वो आती हुई दिखे, एक बेटर सिनर्जी है वो आती हुई दिखे और उसी के साथ बैन सेक्शन की तरफ जाते हुए ज़रूर हम एक बार नज़र डालेंगे तो यहाँ पे हिल्डा बैन होती हुई दिखेगी, जूशिन ये टिपिकल बैन रहते हैं। ये जो है ये जो महाशय हैं, वो दूसरी साइड पे देखा जाए सोरा, इनको भी बैन करना इम्पोर्टेंट रहता है। ग्रॉक यहाँ पे बैन होंगे, उसके साथ ग्यूज़ोंग एक इम्पोर्टेंट बैन क्योंकि ये जो है अपनी लेवल 4 पे जब भी आते हैं तो टर्टल के ऊपर एक अलग से प्रेशर रहता है हाइपर्स के ऊपर। ये ज़ोन आउट बहुत ईज़िली करते हैं ये अपने अल्टीमेट के द्वारा ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में। तो एक जो है हाइपर के ऊपर अलग से प्रेशर आता है, तो इसको जो है बैन ही करना जो है ईज़ी रहता है, कि अगर आप बैन कर देंगे तो आपके चांसेस जो है टर्टल लेने के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेने के जो है वो एक चांसेस ज़्यादा वहाँ पे बढ़ते हुए दिखते हैं। तो दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वीकेंड पहला पिक यहाँ पे लैंसलॉट किया जा रहा है। शायद चाहते हैं कि इस बार जो है यहाँ पे डैश का उपयोग करते हुए पीछे की साइड जो बैकलेन है उनकी तरफ टारगेट किया जाए। लेकिन पहला पिक अगर आप लैंसलॉट लेंगे तो थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सामने के पास जो है काउंटर्स बहुत सारे ओपन रह जाते हैं। हालाँकि अभी मिनसितार भी ओपन हुए हैं, हालाँकि बफ भी हुए हैं, तो मिनसितार एक अच्छा पिक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। कूफरा ज़रूर यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है एज़ अ टैंक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और उसी के साथ देखिए यहाँ पे वाईएसएस दूसरी साइड पे आता हुआ मेरे को लग ही रहा था कि यूज़ोंग अगर बैन हुआ है, तो वाईएसएस आने का चांसेस ज़रूर रह सकते हैं और वहाँ पे देखिए वाईएसएस का आगमन हुआ है और यहाँ पे देखिए क्लॉड के साथ यहाँ पे आगमन हुआ है और दोनों ही बेहतरीन तरीके से रहेंगे और क्लॉड का जिस प्रकार से पिछली बार का परफॉर्मेंस था, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे भी आने वाला है। वाईएसएस उधर रहेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह सिक्योर करने के लिए। लैंसलॉट के पास थोड़ा-सा एडवांटेज रह सकता है रेटरी के अगेंस्ट पे। अगर रेटरी की तरफ जाते हुए हैं, तो शायद अपनी सेकंड स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक वो उम्मीद रह सकती है कि हाँ, चलो कि ये एक ऑब्जेक्टिव जो है मेरे हाथ में आ सकता है। लेकिन प्रेशर इतना रहता है सीजी भाई ऐसे जो मैचेज़ रहते हैं आपके ऊपर स्पेशली जब भी आपको लोग देखते हैं यहाँ पे, तो गलती होना जायज़ रहता है। अब जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है आप उम्मीद एक रहती है आपसे। आपके जो फैन्स हैं, जो इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव पे,
तो उनकी जो उम्मीद है उनके साथ यहाँ पे आप जो है लेके चलते हैं, अपनी टीम की उम्मीदें आपके हाथ में रहती है। और एज़ अ हाइपर जो मैं कहूँगा जो प्लेयर्स हाइपर करते हैं भाई उनके ऊपर बहुत अलग से प्रेशर रहता है। हर समय फार्म, 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 फार्म यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेना है, वो ऑब्जेक्टिव लेना है, तो वो वाली बात यहाँ पे रहती है। और इस साइड पर अगर देखा जाए तो ऑनिक्स मेरे ख्याल से इस बार ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। देखा जाए तो थोड़ा-सा सेम पिक की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एस्मेराल्डा यहाँ पे आ चुका है। शायद यहाँ पे जो है एक्सपी लेन पे एस्मेराल्डा में देखने को मिल रही है ईज़िली। और 2 पिक अभी और रहते होंगे यहाँ पे। देखना पड़ेगा किसकी तरफ जाएँगे। 3-3 पिक अभी हालाँकि हो चुके हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे देखा जाए तो केलिया बैन होते हुए हमें दिखेगी इस बार। तो नहीं चाहता कि अपोज़िट पे जो है केलिया यहाँ पे आए। तो देखते हैं कि आखिरी बैन किसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे सेलिना बैन आती हुई दिख रही है। वीकेंड की तरफ से यहाँ पे सेलिना बैन आती है तो शायद एबिसल एरो ना आए, उसका थोड़ा-सा वो होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे ईव बैन हुई है। तो पोकिंग यहाँ पे जो हो सकती थी ईव के द्वारा, उसको बंद किया जाएगा। और एक घटोत्कचा आए हैं। देखिए बेहतरीन पिक मैं कहूँगा घटोत्कचा यहाँ पे कैरी के अगेंस्ट भी है। देखिए कैरी भले ही मेल्ट कर सकती है लेकिन घटोत्कचा अगर वेंजेंस पे रहे हैं तो वो कैरी को भी डैमेज दे सकते हैं अच्छा खासा या होल्ड ऑफ कर सकते हैं इतनी देर तक जब तक पीछे से जो है बैकअप ना आ जाए। तो वो देखने वाली बात होगी लेकिन उनको यहाँ पे मेल्ट करने के लिए लूनॉक्स एक एक पिक लिया है जो मैं कहूँगा बेहतरीन पिक यहाँ पे आएगा ज़रूर। अरे, अरे, अरे! और यहाँ पे कैप्टन उठाते हुए रहेंगे लुई। थोड़ी-सी दिक्कत तो नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है लुई। सेकंड देखिए सेकंड जब भी इनका जो है लेवल हो जाता है, दूसरे ही लेवल पे इनका जो है पीक आ जाता है और वो पीक के साथ पोक एबिलिटी इनके पास ज़्यादा रहेगी तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि ऑनेस्ट इस बार जो है यहाँ पे इन्वेड करने के चांसेस थोड़े रहेंगे उनके कि जो है अपने एनिमीज़ के ऊपर वहाँ पे जो है बफ इन्वेड होने के चांसेस थोड़े-से हमें दिखे। हालाँकि खलीद वहाँ पे है और लूनक्स वहाँ पे रहेंगी, लेकिन लूनक्स यहाँ पे जो है उनको दिक्कत देने के लिए खलीद को दिक्कत देने के लिए यहाँ पे लूओ जो है वो मौजूदा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेड हमें होने के चांसेस दिखते हैं या नहीं? क्या लगता है इस चीज़ यहाँ पे क्या हमें इन्वेड अभी होता हुआ दिखेगा? मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्वेड होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। इन्वेड तो ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि उनके पास वो इन्वेजन पोटेंशियल है और अगर मैं मतलब गलत नहीं हूँ तो शायद ये डेंजरस ग्रास या फिर ब्रोकन वॉल का मैप है। क्योंकि जब आप खलीद और ओह! लापू-लापू के साथ उतरते हो तो वो मैप जो है ज़्यादा सूटेबल होता है। और ये देखिए ब्रोकन वॉल बोला था मैंने, ब्रोकन वॉल ही है ये। जी, और बिल्कुल। ये ब्रोकन वॉल वाले मैप में खलीद का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है। सिर्फ़ खलीद का नहीं, हिल्डा, बादशाह जैसे हीरो, जॉनसन जैसे हीरो का भी दबदबा रहता है, लेकिन जॉनसन आपको इतना कॉम्पिटिटिव वे में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लेवल 4 ज़्यादा टाइम लगता है बनने के लिए। फिलहाल के लिए उतर आ चुके हैं हम लोग दूसरे गेम पर। ये BO5 सीरीज़ का समा बना है ओनिक्स पैराडॉक्स यानी कि ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स बनाम टीम विकेन ऑन थर्सडे का ये दूसरा गेम है। BO5 सीरीज़ में पहली गेम में जो है बढ़त लाई है टीम ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स से बढ़त नहीं बल्कि दबदबा के तरीके से जो है जीती है उस मैच को। और अभी ट्रेडेड पिक्स किया है जंगल पर। पिछली बार ईशनशिन उनके हाथों में था, इस बार ईशनशिन अपने हाथों में लेकर दिखाना चाहते हैं ईशनशिन कैसा खेला जाता है और काउंटर वहाँ पे लैंसलॉट को पिक किया गया है। लेकिन लापू-लापू के सामने रहेंगे एस्मेराल्डा वो भी किज़ांस्की के एस्मेराल्डा और एरेंस्की जो है वो जा रहे हैं अपने कम्फर्ट क्लॉड के लिए। लास्ट टाइम एमवीपी लिए थे भाई क्लॉड से। 6011 का केडीए था और किज़ांस्की जो है उन्होंने स्टार्ट दिया था। तो क्या फिर से मतलब वो अपने पुराने पिक्स लेकर जो है फिर से दोनों लेन को जो है साइड लेन्स को जो है डोमिनेट करना है ये सोच है या फिर लाइक नहीं यार खेलना है तो अपने कंफर्ट में ही खेलना है मेटा वेटा तो कुछ नहीं होता। जी, बिल्कुल और देखिए यहाँ पे रोटेशन फिर से देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आता हुआ दिखा था। लेकिन फिर भी 3 बंदे सीधा रोटेट किए थे टॉप की तरफ, लेकिन जैसे ही फार्म आया वहाँ से वापसी आए, दोनों ही बंदे वहाँ पे वापसी आते हुए दिखे। अभी देखिए इंगेज नहीं किया है, वेट कर रहे हैं एक सही मौके का और तलाश कर रहे हैं एक सही मौके की। यहाँ पे खलीद अंदर की साइड थोड़ा-सा जाएँगे, पोक करेंगे घटोत्कचा को, लेकिन पीछे हटते हुए दिखेंगे हमको। टर्टल यहाँ पे स्पॉन होता हुआ और इसी के साथ ही टर्टल लेने के लिए यहाँ पे फाइट हमें देखने को मिल सकती है और इसी के साथ पोज़ीशन यहाँ पे लेते हुए दिखेंगे पीछे से आदू वहां पे आते हुए और उसी के साथ रोकने का प्रयास किया जा सकता है ब्लू की तरफ डैमेज देते हुए दिखेंगे और उसी के साथ बेहतरीन अल्ट आता हुआ दिखेगा। इप्सिन यहाँ पे टर्टल चुराते हुए जरूर जाएंगे अपनी टीम के लिए, परंतु वो टर्टल किस काम आएगा अगर यहाँ पे जो किल है वो लिए जाएंगे। क्या एक और किल लेने का प्रयास किया जाएगा? एस्मेराल्डा जरूर जाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे जो है एक बेहतरीन पारी क्लॉड पीछे से आते हुए
और एप्स्टीन का खात्मा करेंगे क्लॉड। क्या ही बेहतरीन रोटेशन, इसी रोटेशन की मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे डाइवर्जन प्ले जरूर किया जाएगा। क्या यहाँ पे एमएम को धराशायी कर सकते हैं? भाप जरूर लिया था वहां पे, और पीछे हटते हुए वहां पे कैरी। और क्या ही रोटेशन आया, देखा आपने, सीधा वहां पे गए थे, लेकिन कैप्टन को भेजा जाएगा सवारी करने के लिए। और उसी के साथ पीछे से एक बेहतरीन पारी आती हुई, और पेरी डॉट बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खेलते हुए। क्या ही कहूँ, इस बार तो बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन जो वीकेंड ऑन थर्सडे है वो भी पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने पता है कि चलिए नुकसान जरूर होगा, एक लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लॉड गलती कर सकते हैं। सेंसर का स्मॉल फ्लिकर अंदर जाके गए, क्या यहाँ पे आउट प्ले हो गया? जी हाँ, अरे भाई, बिल्कुल। और क्या ही बेहतरीन प्ले क्लॉड की तरफ से आता हुआ। थोड़ा सा ग्रीडी मूव था, थोड़ा सा जो है लालच आ गई थी यहाँ पर हमारे गमों के हाथों में, लेकिन गमों को जो है लालच के साथ जो है बुरी बला नहीं टला सकते। वो बुरी बला के साथ ही मृत्यु दंड के साथ स्वर्ग के द्वार जाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर रिवेंज रिडेम्पशन हमें देखने को मिला है ओनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से। डबल किल लिया था उन नीलू ने, लेकिन इस बार नीलू को जो है रोक दिया गया है मिड पर, ट्रैप किया है, ब्रिलियंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन बच नहीं पाए वहां पर। और ये देखिए जो जिसकी बात हुई थी, किजान्स की, अपने कंफर्ट के लिए गए थे, और कंफर्ट सिर्फ नहीं बल्कि उनके सामने उनका काउंटर नहीं, बल्कि वो जिनके काउंटर है वो खड़ा है। तो वो पूरी तरीके से लेन कट करके अभी डोमिनेट कर रहे हैं। और लेन कट के बाद जो है ये रोटेशन की बातें हो रही थी, लाइक ब्रोकन वॉल पे आप एक्सपैंडिंग रिवर वाला रोटेशन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली टीम का सेटअप जो है वो अपने हाथों में रहने वाला है। लेकिन पिछली बार टर्टल जो गया है वो गया था टीम वीकेंड ऑन थर्सडे के हाथों में। ये ब्रेवेस्ट फाइटर के साथ कर दिया, यहाँ पर 4 बंदों के साथ यहाँ पे लड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। उससे पहले यहाँ पर पंक्चर आता हुआ थ्रोन रोज का इस्तेमाल किया है, रोकने की पूरी कोशिश, लेकिन देखिए वो इन यंग रिएक्शन, वो डुअलिटी थोड़ा सा एब्जॉर्ब देता हुआ, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर दोनों खेल खत्म हुआ है। एक जंगल बनाम मिड का ट्रेड यहाँ पर उठाया है टीम ने, बस की नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मिड बनाम रोम, गोल्ड बनाम टर्टल, नहीं टरेट, आप बोल सकते हो गोल्ड बनाम टरेट, यहाँ पर ट्रेड पे लाया गया है टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से। क्या यारी, क्या रोटेशन था वो डैमेज स्पाइक, वो क्लॉड को वहां पे रोकना, उनको मुक्की देना पे बहुत जरूरत था, और वहां पे वो उन्होंने किया वो चीज। लेकिन अभी उनको रोकने के लिए केजांस्की वहां पर पहुंच चुके हैं। कैरी को जितना आप फार्म दोगे, जितना आप उसको गोल्ड दोगे, वो ज्यादा से ज्यादा जो है मेल्ट करने लगेगा लेट गेम पर। तो आपको कैरी को जो है पिछले मैच की तरह रोकना पड़ेगा, और पिछले मैच आपने जैसे 10 मिनट से पहले खत्म किया वैसे ही आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस गेम को लेट ले रहे हो तो उनके पास लेट गेम स्पाइक वाले बहुत सारे हीरोज है। लापू लापू है उनके पास कैरी है, उनके पास लूनॉक्स है, और ये सारे जो है टैंक किलर माने जाते हैं, सारे जो है बर्स्ट वाले हीरो माने जाते हैं। तो वहां पे रोकना मुश्किल हो जाएगा लेट पे, जब आपको वो लोग कॉम्बो सेट्स के साथ, मतलब कॉम सेट्स के साथ जो है अटैक करने आएंगे। लेकिन दूसरी टर्टल, इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी टीम ओनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से। दूसरी टर्टल को अपना बनाया है, एक एक टर्टल जो है बांटा गया है दोनों टीम की तरफ से। तीसरी टर्टल पे नजर रहेगी सबकी कि कौन बढ़त लाता है वो टर्टल पे, क्योंकि टर्टल स्लेयर का मार्क यहाँ पे मिलेगा तो किसी को ही नहीं। लेकिन टॉप लेन पूरा जो है इग्नोर किया है यहाँ पर। लेकिन टॉप लेन पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मिनियन फ्लो जो है वो टीयर पे जाता हुआ, माउंटेन शॉकर रिलीज किया है, यहाँ पे जोन आउट किया है, और इजीली जो है स्ट्रक्चर को अपना बनाएंगे निचले भाग में। और इसी के साथ ये देखिए टीम फाइट होता हुआ दिख रहा है। ब्रिलियंस यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पीछे हटे हैं, 4 बंदे जो है अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं टीयर 1 यहाँ पर फंसने की गुंजाइश में, लेकिन मिनियन फ्लो को जो है रोका गया है। यहाँ पर ये देखिए डाइवर्जन का इस्तेमाल, ट्रैप किया है यहाँ पर 4 बंदों ने मिलकर, रेजिंग सैंडस्टॉर्म फोर्स किया सेफ के लिए, डिफेंस के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मेगा किल केजांस्की अपने स्टाफल मून के साथ, लेकिन उनको जो है एरनस्की को ये देना पड़ेगा मृत्युदंड का सजा। वहां पर कैरी ने लिया वो किल, लेकिन अभी ये देखिए रिडेम्पशन चलता हुआ, एओजी आता हुआ, पंक्चर आता हुआ, यहाँ पर आडू को निकाला है, प्रीति एप्स्टीन ने जो है यहाँ पर एक किल निकाला है अपने लिए। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो कि किस हिसाब से गम्मो को जो है मृत्युदंड के साथ स्वर के द्वार भेजा है टीम ने। टॉप लेन पे देखिए स्प्लिट पुश चलता हुआ, वहां पर सेकंड टीयर पे नजर थी शनशन की, और बखूबी से काम कर रहे हैं। फैंटम एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल यहाँ पर 1v1 करने की पूरी कोशिश चल रही है, पंक्चर का इस्तेमाल किया है, पीछे हटने की कोशिश, मीनन फ्लो उतना है नहीं,
वो शायद रोक ले, लेकिन नहीं, वो बच के भाग निकलने में जो है कामयाब रहे। और उस बीच उस दौरान जो है तीसरी टर्टल जो है वो आ गई है मैप में। देखते हैं कौन लेता है तीसरी टर्टल। टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स के पास ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं कि उनके पास ज्यादा सेटअप्स है तीसरी टर्टल लेने का, लेकिन अगर वो ले लिए तो मानना पड़ेगा, लेकिन तीसरी टर्टल लेने का चाहत नहीं है। लॉर्ड लेने का चाहत है, टर्टल बदला है लॉर्ड पर, और शायद लॉर्ड अटैक करके जो है जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना चाहते हैं प्रीवियस मैच की तरह, क्योंकि उनको पता है कि जब कैरी को लेट गेम स्पाइक मिलेगा तो मुश्किल होगा इस मैच को निकालना। तो इसीलिए हर एक तरीके से टरेट वगैरह पुश कर रहे हैं, मैक्रो को जो है कलेक्ट कर रहे हैं, और एक साथ माइटी पुश के लिए जा सकते जी, बिल्कुल। जो पारी है यहाँ पे ओनिक्स स्पोर्ट्स, वो चाहती है कि इस मैच को भी जल्दी से जल्दी खत्म करे, लेकिन इस बार जो है पहला जैसा फार्म डिफरेंस अभी तो नहीं है। तो डिफेंड करना थोड़ा यहाँ पे ईज़ी हो जाएगा। लुनॉक्स क्योंकि वहाँ पे रहेंगे, लैंसलॉट उनके साथ रहेंगे, उसके साथ-साथ कैरी भी है। तो लॉर्ड जो है ईज़िली मेल्ट किया जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो मैप प्रेशर है, वो लगातार अभी जो है बढ़ता ही जाएगा। और इस लॉर्ड के साथ देखिए अर्ली लॉर्ड पे रहेगा, डिफेंड करने के चांसेस ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टीम है ओनिक्स स्पोर्ट्स वो ज़रूर चाहेंगी कि एक वाइप आउट उनको वो मिले किसी तरीके से। और चलिए टॉप का जो है होली शील्ड वहाँ पे वो ज़रूर टूटेगा, और उसी के साथ ये टर्रेट लेने का प्रयास करेंगे ज़रूर। लॉर्ड वहाँ से आता हुआ टॉप लेन की तरफ से मार्च करता हुआ, और उसी के साथ अंदर जाएंगे ज़रूर, एजी का इस्तेमाल करने का प्रयास, 2 बंदे स्टन करेंगे उनके बीच में, और ये टर्रेट लिया जाएगा। क्लाउड अंदर की साइड गए थे अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए, और उसी के साथ 3 बंदे धाराशायी हो चुके हैं। अकेले लाइन से यहाँ पे रहेंगे, क्या यहाँ पे डिफेंड होने के चांसेस रहेंगे? पंचर का इस्तेमाल, लेकिन अकेले फंसेंगे बीच के, और उसी के साथ अच्छा खासा डैमेज आता हुआ। कैरी किसी तरीके से प्रयास करना चाहती है, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा है कि वो सीधा धाराशायी होंगे, और उसी के साथ ये पारी यहाँ पे खत्म होती हुई दिखेगी। एक अर्ली गेम, एक और गेम खत्म होता हुआ हमें दिखेगा। 10 मिनट से पहले ये दूसरा मैच यहाँ पे एसटीजी एंड होता हुआ। जी, ज़रूर। अ, जी, बिल्कुल। और उसी के साथ जो है ये पारी जो है यहाँ पे 2-0 की हो चुकी है अब, और 2-0 पे आना मतलब समझ लीजिए इसके बाद एक आखिरी प्रयास रहेगा यहाँ पे। अगर इसमें भी चूके तो फिर जो है यहाँ पे आपका पत्ता जो है साफ होता हुआ हमें दिखेगा। जी, ज़रूर। क्या गेम था, क्या डोमिनेशन फिर से दिखाया है। क एक एक टाइम के लिए लगा कि नहीं यहाँ पे कमबैक हो सकता है, यहाँ पर जो है फाइट बैक कर सकती है टीम आपकी विकेट ऑन थर्सडे, बट लेकिन नहीं, वो मौका तक नहीं दिया उन्हें ओनिक्स पैराडॉक्स ने। लॉर्ड लिया, टर्रेट्स लिया था पहले से, सीधा हमला किया वहाँ पर, अटैक किया, और अटैक का जो रिजल्ट है, वो टीम ओनिक्स पैराडॉक्स के हाथों में आई। 2-0 ये स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं, 10-10 मिनट के अंदर ही जो है मैच को रोक के खत्म कर रहे हैं। मौका तक नहीं दे रहे मैच को लेट गेम प्रोसीड होने का, मिड गेम की स्टार्टिंग में ही जो है मैच खत्म कर रहे हैं। मिड गेम के एंड तक नहीं जा रहे, या फिर लेट गेम का स्टार्ट करने नहीं दे रहे। उनको पता है कि लाइक पिछले पिक्स की तरह इस बार भी वही सेम पिक्स ही लिया था, तो तीसरे मैच में शायद मैं बोल सकता हूँ, शायद मुझे मुझे मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं नहीं बैठा हूँ टीम विकेट ऑन थर्सडे के दिमाग में, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बैन, रिस्पेक्ट बैन्स देखने को मिल सकता है। एरेंस्की का वो क्लॉड वाला पिक, और कज़िंस्की का जो है आपका एस्मेराल्डा वाला पिक, ये दोनों पिक को रोकने की कोशिश करना है। और उसी जगह आप देखिए कि लाइक हमें पता है कि कैरी का जो काउंटर है वो है क्लॉड और ब्रॉडी। ये दोनों है कैरी काउंटर, क्योंकि उनके पास है मोबिलिटी। कैरी का शॉर्ट हैं। रेंज होता है, तो अर्ली गेम पे कैरी को रोकना मतलब बनता ही है। और दूसरे हीरो जो है उधर लापू-लापू के काउंटर है एस्मेराल्डा। तो दोनों लेन जो है आप हार रहे हो, क्योंकि आपने उनको काउंटर पिक दे दिया है, और वो सिर्फ काउंटर पिक नहीं है उनका, उनका कम्फर्ट पिक भी वही है। तो दोनों लेन जब हार रहे हैं, तो पॉसिबल चांसेस बढ़ रहा है मैक्रो सिक्योरेंस का ज़्यादा टीम ओनिक्स पैराडॉक्स के लिए, ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स के लिए। कि आप देखिए लाइक जितना जल्दी लेन कट कर रहे हैं, मिनियन फ्लो को रोक रहे हैं, उतना जल्दी रोटेशन दे रहे हैं। मैप डेंजरस ग्रास, ब्रोकन वॉल्स का है, लेकिन रोटेशन जो है सिन्हा भाई, वो एक्सपैंडिंग रिवर वाला आ रहा है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उन उन पहले ही जो है वो लेन कट कर रहे हैं, मिनियन फ्लो को खत्म कर रहे हैं, दबदबा रख रहे हैं लेन पर, लेन को विन कर रहे हैं,
और तुरंत जो है दूसरे लेन पे, दूसरे फाइटिंग ज़ोन पर जंगल हो, टर्टल हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव्स हो, वहाँ पर जो है अपना आदान-प्रदान कर रहे हैं। और इसको रोकने के लिए आपको या तो विनिंग लेन खिलवाना पड़ेगा या फिर आपको कहीं न कहीं एटलीस्ट अगर दबदबा टॉप लेन पे हो रहा है तो आप बॉट लेन पे जाके गैंक करो। अगर दबदबा बॉट लेन पे हो रहा है तो टॉप लेन पे जाके गैंक करो। तो ये वाली टैक्टिक्स यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी टीम वीकेंड ऑन थर्सडे को या फिर भाई थर्सडे में वीकेंड नहीं होने वाला है। सब साईं बाबा की कृपा लगेगी क्योंकि थर्सडे साईं बाबा का पूजा होता है। तो वही वही जो है वही आचरण लाना पड़ेगा क्योंकि भाई 10 मिनट से पहले मैच खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसा बात नहीं कि कमबैक होगा, फाइट बैक होगा, मैं इतना बिल्डअप करके बोलूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई 10 मिनट से पहले जो है मैच खत्म। हम अगर अभी रिप्ले की बात करें, रिप्ले कुछ था ही नहीं, 10 मिनट का रिप्ले क्या दिखाएँगे? पूरी मैच ही दिखा सकते हैं हमारे प्रोडक्शन। तो वही चीज़ है, लेकिन वीकेंड ऑन थर्सडे इतनी दूर तक जी, वो सफ़र उन्होंने तय किया था शिमरा भाई, लाइक जी। जी। हाँ जी, टूर्नामेंट से स्टार्टिंग से जो है तय किया था। लेकिन इस बार एमवीपी ना एरेंस्की को मिलेगा, ना ही काज़िंस्की को मिलेगा। इस बार एमवीपी जो है, वो जा रहा है पेरिडॉट के हाथों में। पिछली बार विंगमैन थे, सबसे ज़्यादा उनके पास असिस्ट था 18 का। इस बार 11 की असिस्ट के साथ 4 किल्स भी लिए, एक बार ही जो है उनको डेथ मिला है। 4-1-11 केडीए ऑफ अ रोमर, हार्ट ऑफ द गेम होते हैं और आज रोमर शाइन कर रहे हैं भाई। पिछले मैच में मैंने देखा कैसे एबिस्टीज़ी ने अपने कलेया के साथ एमवीपी लिया और इस BO5 सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि ओनिक्स पैराडॉक्स के पेरिडॉट जो है, वो यहाँ पर ले रहे हैं। सिर्फ़ 1 जीत दूर अपने लैन क्वालिफ़िकेशन से, फिर 1 जीत दूर वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना पाँव रखने के लिए टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स। क्या लग रहा है शिमरा भाई? क्या खत्म करेंगी कहानी इस तीसरे गेम पर या फिर कमबैक, वापसी, फाइट बैक, हुँ, रिडेम्पशन जो भी आप बुलवा दो? जी। देखिए कमबैक कमबैक करते हम तो रह गए, लेकिन कमबैक आया नहीं। ये दूसरा मैच यहाँ पे 10 मिनट के अंदर खत्म हुआ। थोड़ी कोशिश और करनी पड़ेगी। देखिए, आपने जैसे कि कहा था यहाँ पे ड्राफ्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ड्राफ्ट थोड़ा अलग तरीके से खेलना पड़ेगा यहाँ पे। उनके जो कम्फर्ट पिक्स हैं वो बैन करने आपको पड़ेंगे। रिस्पेक्ट बैन आपको देने पड़ेंगे ही, तभी जाके इस गेम का जो स्थिति है वो थोड़ा-सा अलग हमें बनते हुए दिखेगा। लेकिन वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप इनके जो है कम्फर्ट पिक्स वो बैन करेंगे और थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी में अपना जो है निरंतर लाते हुए दिखेंगे हमको। जैसे कि आपने कहा यहाँ पे क्लॉड बैन होना चाहिए। क्लॉड को सबसे पहले बैन करिए, दूसरी तरफ पे एस्मेराल्डा वहाँ पे जो है बैन हमें होती हुई दिखनी चाहिए। अगर वो बैन नहीं होगी, तो ये दिक्कत जो है वो लगातार हमें बनती हुई दिखेगी। जी, और ये देखिए यहाँ पर स्कोर्स आता हुआ एटलीस्ट पिछली बार की तरह नहीं हुआ है। पिछली बार तो एक ही किल मिली थी टीम वीकेंड ऑन थर्सडे को। इस बार एटलीस्ट जो है उनको एक बहुमत मिली है। 7 किल्स का जो है सिलसिला यहाँ पर बढ़ा है। थोड़ा-सा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है लेकिन वो लेन प्रेशर, वो टरेट राइट। डिफेंस, वो हुँ। लेन सिक्योरेंस में जो है थोड़ा फँस गए हैं। उसके कारण ओनिक्स पैराडॉक्स बहुत ही जल्द जो है मैच को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। जी, ये बिल्कुल। देखिए आप एम्ब्लेम सेटअप बहुत जल्द आने वाला है और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन-सी एम्ब्लेम काज़ेंस्की यूज़ कर रहे हैं भाई। ये देखिए आप ब्रेव स्माइट है उनके पास और साथ ही साथ वो टाइम के लिए वो कूल डाउन के लिए लिए है और साथ ही साथ रप्चर पेनिट्रेशन के लिए वो डाले हैं। तो ये अच्छी वाली प्रायर एम्ब्लेम है 1313 इनकी भी केडी देखिए 13 असिस्ट दोनों ही विंगमैन है। भाई विंगमैन किसको मिलने वाला है मुझे देखना क्योंकि भाई ब मतलब हाँ, हाईएस्ट असिस्ट को मिलता है तो शायद एरेंस क काज़िंस्की को ही मिलेगा विंगमैन यहाँ पर। कैरी कौन होगा यहाँ पर? कैरी ज़रूर काज़िंस्की रहेंगे 604 के साथ और गलती से हुँ। काज़िंस्की का नाम लिया मैंने, बिग ब्रेन को यहाँ पर मिलेगा विंगमैन। बिग ब्रेन देखिए 1-3-13 के साथ है। और हाँ, काज़िंस्की की बात करें आप वो टेनेसिटी के साथ गए हैं और इम्प्योर रेज के साथ वो गए हैं। तो वो सपोर्ट एम्ब्लेम भी लगाया है अपने लिए थोड़ा हील के लिए, थोड़ा एब्ज़ॉर्ब के लिए। तो ये बनता है भाई मतलब वो सोच-विचार देखिए एम्ब्लेम में ही दिख रहा है कि वो एक्सपीरियंस की झलक जो है वो एम्ब्लेम में दिख रहा है। ऐसे ही वो भूटान के बेस्ट टीम नहीं है और ऐसे ही भूटान के इम्पोर्ट्स जो है कामयाबी नहीं दिला रहे हैं टीम ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स को यहाँ पर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे किसी के साथ जो है यहाँ पे हेड टू हेड आता हुआ दिखेगा हमको और यहाँ पे ये हेड टू हेड के तौर पे लापो-लापो और उनके अगेंस्ट में यहाँ पे देखें तो घटोत्कचा
वो दिखते हुए हमें दिखेंगे। 0-3-5 यहाँ पे लापू-लापू कोशिश उनकी रही ज़रूर, लेकिन सामने यहाँ पे उनके जो थे, वो कोशिश पूरी हो नहीं पाई किसी तरीके से। मारना ज़रूर गए थे, अल्टीमेट वगैरह मारा ज़रूर था उन्होंने। और यहाँ पे देखिए 29% डैमेज टेकन, और डैमेज गिवन की बात करें तो 29%, डैमेज टेकन की बात करें तो यहाँ पे 26%, उसी के साथ 5% उसी तरफ पे रहा था, और 71% यहाँ पे रहा टीम पार्टिसिपेशन का। उस साइड पे देखा जाए तो 94% घटोत्कचा का वहाँ पे उधर की साइड पे रहा। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है टो टू टो लड़े, लेकिन वो लड़ना क्या रहेगा एसटीजी भाई, अगर आपके 2 गेम्स यहाँ पे 10 मिनट के अंदर खत्म हो रहे हैं, थोड़ी सोचने वाली बात है कि आपको थोड़ा-सा सोच-विचार करना पड़ेगा, और ये सोच-विचार हमें नेक्स्ट गेम में दिखेगा या नहीं, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे आएँगे, सैंडबैग यहाँ पे रहे हमारे इगास्की, जैसे कि आप कह रहे थे कि एस्मेराल्डा वो रहे, फिर शिकाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे वाईएसएस इनसेंग, इनके साथ चलते हुए दिखे, और कैरी जो है यहाँ पे इनको मिलता हुआ जैसे इनको उस साइड पे देखा जाए तो बिग ब्रेन जो रहे यहाँ पे, वो रहे हमारी लूओ, बेहतरीन तरीके से विंगमैन के तौर पे चलते हुए, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे 13 असिस्ट थे इनके, तो बेहतरीन तरीके से। और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए जाएँगे हम लोग, और इस मैच में आखिरी मैच हो सकता है यहाँ पे टीम वीकेंड ऑन थर्सडे का, तो देखना पड़ेगा इनको, जो है थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा एसटीजी, ये आखिरी मौका है, अगर यहाँ पे जी-जान नहीं लगाई तो लगता है कि हाथों बैठ सकते हैं यहाँ पे लैन क्वालिफिकेशन से। क्योंकि ये मैच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ये मैच नहीं जीतोगे तो आगे फिर क्वालिफिकेशन आपका जो है क्वालीफाई कैसे करोगे? उसी के साथ इस मैच की तरफ आगे बढ़ते हुए जाएँगे, और उसी के साथ ओनिक्स स्पोर्ट्स रहेंगे इस बार हमारे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो है टीम वीकेंड। देखते हैं इस बार किस प्रकार के जो ड्राफ्ट है वो हमें आते हुए दिखेंगे। चलिए, यूज़ोंग यहाँ पे पहले ही बैन होंगे, तो शायद ओनिक्स स्पोर्ट्स फिर दोबारा से वाईएसएस की तरफ जाते हुए हमें देख सकते हैं। सोच-विचार तो है वाइसेस जाने का या फिर अपना कम्फर्ट क्लॉड या फिर एस्मेराल्डा वो जाने का। रिस्पेक्ट बैन की सूची रखी थी मैंने, शायद जी। मिले इस बार देखने के लिए, लेकिन नहीं, 7 बार बैन हुई इस टूर्नामेंट पे। हिल्डा को यहाँ पर बैन किया है। फिर से वो ब्रोकन वॉल वाली मैप में यहाँ पर ज़रूरत है इन सब ब्रोकन वॉल वाले हीरोज़ को बैन करना। और ये देखिए दूसरा बैन यहाँ पर आता हुआ टीम ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, और ये बैन जो है जी। और कौन-सी उसकी हीरो तरफ देखिए, कैरी बैन आता हुआ दिख रहा है टीम वीकेंड की तरफ से। कैरी यहाँ जी। पे बैन होता हुआ, और देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं जो सोरा बैन हो रहा है वहाँ पे, ओनिगी स्पोर्ट्स की तरफ से, हमारे एसटीजी भाई थोड़े से पैराडॉक्स में फँस चुके हैं, और बार-बार ओनिक्स पैराडॉक्स ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक पैराडॉक्स के अंदर फँस चुके हैं अभी एसटीजी भाई। उनके सबकॉन्शियस हाँ, माइंड में वो मैं फीड हो सोचा चुका है, जैसे बता रहे मैंने थे मतलब सोरा कि ना, सोरा ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे बीट्रिक्स दिखा। तो मैं सोचा कि यार बीट्रिक्स है क्या? बीट्रिक्स क्यों बैन जी, किया जी, यहाँ पर? बिल्कुल। इसमें आपकी गलती नहीं जी। है एसटीजी भाई। वो एक्चुअली में वो है वही। अगर वो सिर्फ़ बाल अपने डाई कर ले बीट्रिक्स और अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा ले, तो वो सोरा ही लगेगी देखिए पूरे तरीके से, और बहुत सारे एडिट्स में देखा भी है। चलिए, यहाँ पे ये अब क्लॉड तो बैन आ आता गया। हुआ दिखेगा इस बार, रिस्पेक्ट बैन बिल्कुल, ये आपको सेकंड मैच से ही करना चाहिए था, वीकेंड जी। ना, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो बढ़िया बैन मैं कहूँगा। उसी के साथ चलिए, क्लॉड आपने बैन किया, और उसी के साथ यहाँ पे आगमन होगा एक और यूटिलिटी अपने एमएम लेन की तरफ से यहाँ पे आते हुए एरिथ। टूर्नामेंट में बेहतरीन तरीके से चलते हैं, हालाँकि नर्फ हो गए थे, लेकिन अभी भी टूर्नामेंट में का दबदबा यहाँ पे रहेगा। दूसरी साइड पे देखा जाए तो सीसी यहाँ पे ली गई है। क्या सीसी यहाँ पे गोल्ड लेन की तरफ जाने वाली है, या फिर ईएक्सपी की तरफ फ्लेक्सिबल पिक यहाँ पे रहने वाली है, और उसी के साथ एप्स्टीन यहाँ पे उठाएँगे जूशिन। शायद यहाँ पे जो है अपने क्रिम्सन लैंड लाल्टन से उठा के एप्स्टीन आइलैंड लेके जाना चाहेंगे, देखते हैं या किसको यहाँ पे उठा के लेके जाएँगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो दूसरा पिक आता हुआ दिखेगा हमको हायाबुसा, और उसी के साथ यहाँ पे ईव का आगमन होता हुआ दिखेगा। चलिए, ईव यहाँ पे आ चुकी है, और ईव यहाँ पे रहेगी तो पोक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है ईव के द्वारा। और हायाबुसा पिछले बार जैसे खेला था इन्होंने और एक स्पोर्ट्स की तरफ से बेहतरीन पारी चलते हुए
और गॉड शैडो बेहतरीन तरीके से लगाए थे, टारगेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए थे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है एक्स टीम को, यहाँ पे थोड़ा-सा जो है एप्स टीम को थोड़ा-सा संभल के रहना पड़ेगा और गॉड शैडो से बच के रहना पड़ेगा। चलिए उसी के साथ यहाँ पे फेडरिन उनका आगमन हो चुका है, एक फाइनली यूटिलिटी जंगलर आता हुआ हमें दिखेगा। बढ़िया रहेंगे ये आगे सस्टेन करने के लिए, डैमेज देने के लिए और एक चेन सीसी प्रदान करते हैं अपनी टीम के लिए, जो पीछे से जो है यहाँ पे जूशिन उनका जो है फ़ायदा उठा सकती है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो और सीसी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, अभी ये बात जो है ना मैं जो टीम यहाँ पे ओनिजी स्पोर्ट्स है, उनकी तरफ से मैं हैरिथ की तरफ से डर रहा हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों एक अलग-सा वो लग रहा है कि हैरिथ कुछ ना कुछ यहाँ पे करने वाले हैं खतरनाक सा अगर ना क्रोनो डैश के साथ। और देखिए वो दिक्कत रहता ही है, उनको पकड़ना थोड़ा-सा दिक्कत रहेगा। अगर आदू के हाथ से निकले हैरिथ, तो फिर जो है डैमेज वो बहुत खतरनाक देने वाले हैं। जी। मैं शिनरा भाई ये बोल रहा था कि लाइक हैरिथ वाला पिक थोड़ा जल्द नहीं आ गया क्योंकि फेडरन आया है वहाँ पे, जूशिन आया है, इतने सारे स्टन अभी जो चेन सीसी की आप बात कर रहे थे, टॉन्ट्स आने वाला है बहुत ज़्यादा, कर्टन हुँ, कॉइल आने वाला है, कर्टन कॉइल के साथ अगर आप देखेंगे अपेजस रैथ का बहुत बढ़िया कॉम्बो बैठेगा। तो इतने हुँ, जल्दी मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी हो गया वाला पिक। यहाँ पर शायद से नतान जा सकते थे, अच्छा रहने वाला था। टैंकी किलर भी बन सकता था, लेकिन हैरिथ भी बन सकता है अगर स्टालियम स्काइप का आरंभ होता है उसके बिल्ड में। लेकिन देखते हैं कि लाइक अभी हाल-फिलहाल में इतना ज़्यादा स्टालियम स्काइप वाला हैरिथ देखने को मिलता नहीं है। होली क्रिस्टल भी चलता है, लेकिन मैजिक पेनिट्रेशन बहुत लेट बनता है। होली क्रिस्टल जो है ब्लेड ऑफ डेस्पायर है मैजिक आइटम्स का गाइस और उसको बनाने हुँ, में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब जी, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं भाई बनाने में और जहाँ पे पैसे लगते हैं और पता है कि टाइम लगता है तो थोड़ा-सा बिल्डअप करना भी टाइम लगेगा। लास्ट टाइम में क्या जी, होता था कि क्लॉड होता था आपके हाथों में, कोरोजन स्काइप होता था और इज़िली पुश करते थे। तो इस बार 10 मिनट्स के अंदर खत्म करना मुश्किल लग रहा है थोड़ा शिनरा भाई। तो मैच 15 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। अगर 15 मिनट नहीं गया तो फिर चलिए। जय साईं बाबा, ओम साईं बाबा, मुझे माफ़ देखिए करना, ओम साईं राम। जी, बिल्कुल, माफ़ ज़रूर किया जाएगा आपको लेकिन यहाँ पे एस्टेस का आगमन हो गया है, तो लेट गेम की तरफ थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखेगा, तो फेडरन यहाँ पे और ज़्यादा सस्टेन करने वाले हैं। वो हील की प्राप्ति उनको होती रहेगी यहाँ पे अपने मित्र एस्टेस के द्वारा। लेकिन देखने वाली बात होगी देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी वो हायाबुसा बने रहेंगे। वो हायाबुसा जो है यहाँ पे कॉट शैडो लगाते हुए पीछे बैकलेन की तरफ जा सकते हैं और सीधा जुशिन को जो है वहाँ पे उनको मार किया जाएगा। तो थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एस्टेस लिया है यहाँ पे तो कहीं न कहीं एक बचाने की संभावना ज़रूर रहेगी। एक साथ हील जो है अच्छा खासा आएगा। बफ हुए हैं अभी हालाँकि सारे सपोर्टर्स के ऊपर जो है बफ अच्छा खासा आया है। तो उसमें जो है बढ़िया बढ़त हो सकती है। तो इस साइड पे देखा जाए तो पीरी डॉट की तरफ यहाँ पे लापू-लापू आएँगे एक बेहतरीन और उसी के साथ एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बदांग आए हैं। तो एक बढ़िया यहाँ पे सेट हमें देखने को मिल सकता है। बदांग की वॉल के साथ यहाँ पे पकड़ सकते हैं 2-3 बंदे और उसी के साथ अगर पीरी डॉट का अल्टीमेट लगेगा तो फिर बचना दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सेट हमें देखने को मिल सकता है टीम ओनिकी स्पोर्ट्स की तरफ से लेकिन वीकेंड भी इस बार प्रयास करना चाहेंगी। इस बार अगर जाते-जाते भी वो एटलीस्ट ऐसा कुछ करके जाएँ जो उन्हें याद किया जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे शिनशिन का आगमन होता हुआ आएँगे लैंसलॉट एंट्री करते हुए लेकिन देखना पड़ेगा इनके पंचर पे वो ताकत रहेगी जो इस टीम को भेद पाए क्योंकि ये मैच अभी आखिरी ये हो सकता है टीम वीकेंड के लिए तो पूरी जी जान यहाँ पे लगानी पड़ेगी टीम वीकेंड को और इसी के साथ तीसरा मैच जीतने के लिए यहाँ पे प्रयास करेगी टीम ओनिकी स्पोर्ट्स। ये मैं एक चीज़ बोलूँगा शिनरा भाई, ये फेडरन ईएक्सपी मुझे समझ नहीं आया अभी तक। फेडरन ईएक्सपी काम करेगा क्या यहाँ पे? और अगर आप फेडरन ईएक्सपी उठाए हो तो फिर लाइक मतलब इस्टिस और लैंसलॉट कैसे मतलब भाई? इस्टिस के पास फ्लोरिन एंजेला होता तो एक बात होती भाई, लैंसलॉट के पास मोबिलिटी है, इस्टिस मोबिलिटी तो नहीं है ना लेकिन उनके पास, या फिर स्प्रिंट लेके भागना पड़ता है वो। तो लैंसलॉट देखो यहाँ पे ईएक्सपी जा रहे हैं शायद। लैंसलॉट ईएक्सपी रिट्रिब्यूशन फेडरन के हाथों में ये थोड़ा-सा नया चीज़ देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर पता चलिए नहीं क्या लैंसलॉट विद फ्लिकर ये नया मेटा हमें आज देखने को मिल रहा है। लगता है गोल्ड यहाँ पे वीकेंड गोल्ड जो लैंसलॉट है भाई। यहाँ पे जी। टीम वीकेंड जो है यहाँ पे मेरे को लगता है एसटीजी भाई, उन्होंने वीकेंड आज पहले ही बना लिया है 2 मैचेज़ के बाद और अभी जो है यहाँ पे लैंसलॉट फ्लिकर के साथ आ रही हैं। तो देखना पड़ेगा किस प्रकार से इस फ्लिकर का इस्तेमाल करेंगे लैंसलॉट या फिर धाराशायी होंगे यहाँ पे। और देखा जाए बॉटम लेन की तरफ पे तो थोड़ा-सा कशमकश ज़रूर होगा।
और उसी के साथ एसएस वो जो है लीथो की तरफ जाते हुए दिखेंगे। फेडरेन यहाँ पे ब्लू बफ से स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। बदांग पोक करने का प्रयास करेंगे एप्स्टीन को, लेकिन पीछे हटते हुए जाएंगे। हायाबुसा यहाँ पे उनको पोक किया जा रहा है अच्छा खासा। आदू इस बार सीधा मार्क किए थे उनको ऊपर, लेकिन पीछे हटते हुए दिखेंगे और उसी के साथ फार्म की तरफ जाएंगे अभी भी। लेकिन मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, लेंस लॉट आखिर में उठाया है आपने और कोल्ड लेंस लॉट, ये थोड़ी बात मेरे को पच नहीं रही है एसटीजी। भाई मैं तो बोलूंगा कि गलत साबित करो कास्टर्स को। अच्छा लगता है कभी कभार। लाइक मैंने अरुणोदय पे ही कास्ट किया था, नहीं अरुणोदय नहीं, आपके साथ अगर याद होगा गुशन हाइपर आया था, हम दोनों ने मजाक ओ उड़ाया था, फिर गुशन हाइपर ने मैच जिताया था। जी तो बिल्कुल। वो भाई वही है, अगर मजाक उड़ा रहे हो तो भाई गलत साबित करो। मैं तो रेडी हूँ भाई देखने के लिए कि लैंस, क्योंकि मैंने पकीतो गोल्ड देखा है, मैंने चौ गोल्ड देखा है, तो लैंस गोल्ड देखूंगा आज। मजा आएगा मुझे भी, कास्ट करते हुए भी मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा, हर एक चीज से। ये देखिए यहाँ पर आदान प्रदान हील का हो रहा है। लैंटन प्लेयर आता हुआ, ये आ गया है रिवर टर्टल, पहला टर्टल आता हुआ। उससे पहले टोंट ओ बहुत ही बढ़िया तरीके से एप्स्टीन ने यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉट जो है सिक्योर किया है, और उतना ही नहीं एरनस्की को वहां पर फंसाया है लैंसलॉट ने। सुंदर तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल लैंसलॉट का गोल लेन पर, गलत साबित करते हुए यहाँ पर एक्सपर्ट्स को, और साथ ही साथ गलत साबित करते हुए यहाँ पर हैरिथ के पिक को। टीम विकेट ऑन थर्सडे बैक इनटू द बैंगर ऑनलाइन हो चुके हैं, 2-0 के साथ इस मैच को स्टार्ट किया है। ये ड्रीमी मैच है, ये उनका डू और डाई सेटअप है। उससे पहले ये देखिए फिश क्रैक आता हुआ, रोकने की पूरी कोशिश एप्रेसिस रेट के साथ होगा, नहीं आया मुसा। यहाँ पर ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर जो है टीम ओनिक पैराडॉक्स यानी कि ओनिक ओ साई बचते हुए निकलेंगे, लेकिन समाप्त होते जी हुए हाँ, जाएंगे। जी बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से देखिए टर्टल छुड़ाया वहां पे हायाबुसा ने। रैटरी जो है पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन शॉर्ट शैडो लगाते हुए फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए बालो बचेंगे। पंचर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे लैंसलॉट ने खुद को बचाने के लिए, और बहुत ही कम एचपी पीछे हटेंगे। उसी के साथ मेज का जो आया लालटेन फ्लेयर उठा के सीधा फेंका गया हायाबुसा को टावर के अंदर, और वो डैमेज लेते हुए सीधा धाराशायी किया जा गया उनको। और देखिए पारी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रही है। अभी स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे होती है हमें दिखी है, लेकिन खाता जो है वो अभी तक नहीं खुला है। और खाता इस बार जो है ओनिजी स्पोर्ट्स खोलने में दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा है। स्टेज के साथ साथ जो यहाँ पे फेडरन पिक हुआ है बेहतरीन तरीके से वर्क करता हुआ हमें दिख रहा है। तो वही बात रहने वाली है यहाँ पे, किस प्रकार से जो है यहाँ पे खेला जाएगा। इस बार जो है रोटेशन थोड़ा अच्छा आता हुआ दिख रहा है हमको। जो स्टार्टिंग से ही मैच की जो ग्रिप है वो अपनी तरफ करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से और लेट की तरफ गेम जाता है तो वो किस प्रकार से जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि लेट गेम में जो है अनेक ही स्पोर्ट्स वो जो है कम बैक कर सकती हैं। और अभी जो है थोड़ा सा ही अभी जो स्थिति है थोड़ी सी ही अभी जो है वीकेंड के फेवर पे चाहती हुई दिखे। चलिए एक रोटेशन आता हुआ दिखेगा, हायाबुसा के ब्लू के ऊपर मार्क किया जा सकता है। क्या यहाँ पे इन्वेट करने की संभावना बढ़ सकती है? तो अकेले जरूर रहेंगे हायाबुसा, और इसके साथ छोटा सा क्रीप जो है वो चुराने का प्रयास जरूर किया, लेकिन ब्लू ओपन में रहेगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ 4 बंदे यहाँ पे आया कि ब्लू पे रहेंगे, और पीछे से बदांग आए कोशिश करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा लाडेन का इस्तेमाल करके उड़ाया जाएगा और सारा डोमच को रोकते हुए। लेकिन एक अच्छा सेट बदांग की तरफ से, और सीधा एसएस को दिया जाएगा मृत्यु का दंड, और एक बढ़िया पारी यहाँ पे बदांग की तरफ से। पता था कि उनको कि यहाँ पे एक बंदे को निकालना ही पड़ेगा, और एसएस सबसे कमजोर कड़ी वहां पे थे, तो उनको ये सीधा यहाँ पे धाराशायी किया। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ये देखिए दूसरा टर्टल यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला टर्टल बहुत ही बढ़िया रिट्रीब्यूशन के साथ कैप्टन हैवक ने लिया था। तीसरा टर्टल दूसरा टर्टल क्या ले पाएंगे? जरूर लेंगे, और ले बात है वापसी भी करेंगे। ये क्वाड शैडो का इस्तेमाल करके पीछे हटे, टॉन्ट यहाँ पे आता हुआ, लेकिन बहुत ही बढ़िया डॉज यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन नहीं, पंक्चर के साथ विन यहाँ पर किल चुराते हुए। लेकिन ये देखिए रिटेलिएशन यहाँ पर हो चुका है। आगे बढ़े हैं लापू लापू केजेंस्की अपने ब्रेवेस्ट फाइटर के साथ, यहाँ पर उनको रोक दिया जाएगा जरूर। 1 के बनाम 1, 2 के बनाम 1 का ट्रेड यहाँ पर बना है टीम वीकेंड ऑन थर्सडे, लेकिन नहीं, उतने पे नहीं होंगे संतुष्ट। तीसरी किल भी बटोर लेंगी टीम वीकेंड यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। जी बिल्कुल, और उसके साथ देखिए इसका फायदा उठाया गया पीछे से जो है, अरे टावर ले गए। लैंसलॉट जो है टीम फाइट पे प्रेजेंट रहे पूरे टाइम पे, और चलिए वहां पे उनको धाराशायी शटडाउन दिया गया हायाबुसा के द्वारा। और
यही बात रहती है। आप यहाँ आपने उठाया लैंसलॉट ज़रूर है, लेकिन टावर आपने जो है अपने छोड़ दिए, किल आप लेके जा रहे हैं और उसी के साथ अगर टावर छोड़ दिए तो फिर जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। और उसी के साथ यहाँ पे लापू लापू अल्टीमेट का इस्तेमाल ज़रूर किए रहेंगे, पीछे हटना पड़ेगा। लापू लापू वो अकेले रहेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लालटेन पीछे से आएँगी और एक और किल अपनी टीम के लिए यहाँ पे जुड़ाते हुए। तो इस बार बॉटम का जो टावर है वो टॉप के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे रोका जाएगा? पीछे से आएंगे क्रोनोस का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन एसएस का हील लगातार हील करता हुआ जाएगा। क्या यहाँ पे सस्टेन किया जा सकता है? प्रयास करना चाहते हैं बदा, यहाँ पे बाल बचते हुए बचेंगे। उसी के साथ एक अच्छा डैमेज आता हुआ दिखेगा। एरेथ प्रयास करना चाहते हैं, एक बढ़िया खेल निकाला अपनी टीम के लिए। पीछे से फेडरेन आएंगे, पोक का इस्तेमाल किया है, रोका जाएगा। क्या ईव यहाँ पे धाराशायी हो सकती है? अल्टीमेट अभी भी बचा हुआ है, लेकिन बदांग खुद को सेक्रीफाइस करेंगे ईव के लिए और एक बेहतरीन यहाँ पे एक रोमर का रोल प्ले अदा करते हुए दिखे हमें बदांग। भाई मजा आ रहा है देखने के लिए एरेंस्की का गेम। पहले टर्रेट लेते हैं, अपना बिल्डअप करते हैं, गोल्ड लाते हैं, डैमेज लाते हैं, फिर अटैक करते हैं, आगे रोटेशन देते हैं। डबल किल यहाँ पर मिलता हुआ टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स की टीम को 7 बनाम 9 का ये स्कोर का जो बढ़त, जो माइक्रो का बढ़त लिया था विकेट ऑन थर्सडे ने स्टार्टिंग फेज में, उसको अभी सेटल करती हुई टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स वापसी करती हुई इस गेम पे 3-0 यानी कि 3-0 यानी कि एक क्लीन स्वीप देने की वो चाहत रखती हुई ये टीम आगे बढ़ रही है अपने लैंड क्वालिफायर के वो एक स्टेप दूर। आखिरी गेम है ये अरुणोदय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का, आखिरी गेम है ये लैंड क्वालिफायर का। एक टीम मिलेगा हमें लैंड क्वालिफायर के लिए वीकेंड ऑन थर्सडे। अगर ये मैच जीतती है तो फिर ये आखिरी गेम नहीं है, इसके बाद और भी 2 गेम होंगे। अगर नहीं जीतती है तो फिर टीम ओनिक्स स्पोर्ट्स को कांग्रेचुलेट करने के लिए हर एक हाथ जो है आज बढ़ेगा। तीसरी टर्टल अपना बनाया है, टर्टल स्लेयर का वो खिताब लिया है। उसी के साथ यहाँ पर हील आता हुआ, अल्टीमेट हील, लेकिन एफपी फॉल करेंगे। हायाबुसा अंदर गए थे, बैकलाइन को यहाँ पर क्लियर आउट किया है, पीछे आएंगे। उससे पहले ये देखिए दूध पिलाने वाले को, यहाँ पे जी हाँ, दूध पिलाने वाले को जो है उसके ही दूध में जहर घोल दिया है ईव ने और उनका जो है खात्मा कर दिया है। ये देखिए टोन रोज आता हुआ, साथ ही साथ पंक्चर का इस्तेमाल करके पीछे हटे हैं। एकदम से समा बदल दिया, एकदम से वक्त बदल दिया, एकदम से जज्बात बदल दी। टीम ओनिक्स स्पोर्ट्स वापसी करवा दी। जी बिल्कुल, देखिए यही एक वो रहता है थोड़ा-सा नुकसान। अगर आपके पास एक मार्क्समैन होता है तो वो आप जो है थोड़े डिफेंड बेटर तरीके से कर सकते हैं, वेव हैंडल बेटर तरीके से कर सकते हैं। आपका जो है यहाँ पे लैंसलॉट आपने उठाया था और उसी का भुगतान अभी कर रहे हैं। बॉटम का टरेट जो है पूरा जा चुका है, टॉप का टरेट जो है वो जाने की कगार पे है। और इस समय बात करें किल्स की तो देखिए 10-9 का ही यहाँ पे जो स्कोर है वो है, लेकिन फार्म डिफरेंस इस समय जो है अभी होने की स्पोर्ट्स 6 के से आगे है। और इसी के साथ देखिए होली शील्ड लेने का प्रयास किया जाएगा और लगता है कि गेम जो है जल्दी खत्म करने का प्रयास करना चाहते हैं। शायद 10 मिनट के अंदर ये गेम जो है दोबारा खत्म होता हुआ हमें दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे शट डाउन दिया जाएगा। हायाबुसा को शैडो लगता है लेकिन अंदर ही फंस गए। और इसके साथ यहाँ पे फेडरन का जो चेन सीसी है वो आएगा, क्राउड कंट्रोल देते हुए उनको जो है धाराशायी किया। एक पारी यहाँ पे जरूर रहेगी लैंसलॉट की और नीचे जो है पुश करते हुए जाएंगे। लॉर्ड अभी कुछ ही देर में यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर आएगा और इस लॉर्ड के लिए यहाँ पे जो है फाइट वो होते हुए दिखेगी। देखना पड़ेगा इस बार लॉर्ड जो है वो कौन लेके जाएगा, क्योंकि अगर ये लॉर्ड मिलता है टीम ओनिक्स की स्पोर्ट्स को तो वो नहीं बख्शने वाले, वो सीधा जो है एंड करेंगे इस लॉर्ड के साथ। जी जरूर, यही तो उनकी चाहत है, यही तो उनकी कला है और ऐसा ही करते हैं वो। और अभी तक एक भी न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव हाथ तो में आने नहीं दिया टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स का, ओनिक्स ई स्पोर्ट्स ने टीम वीकेंड ऑन थर्सडे को। ये देखिए सब कुछ इस्तेमाल कर दिया, सारे रिसोर्सेज यहाँ पर बर्न आउट किया, लेकिन वो हैरत का किल यहाँ पर हाथ नहीं लगा। और ये देखिए टियर, ये खासियत है। आप कभी भी देखेंगे ओनिक्स पैराडॉक्स के ओनिक्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को तो वो टरेट चुराते रहेंगे और हर एक जगह से वो सेकंड टियर्स को खाली कर चुका है। सिर्फ इनहिबिटर्स 3 पड़े हैं और उसमें से दोनों इनहिबिटर का जो होली शील्ड है वो भी टूट चुका है। सिर्फ मिड का जो इनहिबिटर है उसी का होली शील्ड बचा है। और अभी इजी लॉर्ड, अनकंटेस्टेड लॉर्ड यहाँ पे लेते हुए बदांग फेरीडॉट यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जोन वहां पे देते हुए कि उनके पास पहुंचने का मौका ही नहीं दे रहे। और ये देखिए पहला लॉर्ड यहाँ पर मिल गया है। समय है 9 मिनट 59 सेकंड का। 10 मिनट वाला मार्क जो है वो पूरा हो चुका है। मैंने बोला था ये मैच इतना इजी नहीं है 10 मिनट के अंदर खत्म करने का, लेकिन स्कोर जो है वो सेम हो चुका है। अभी जो पहले बढ़त में थी वीकेंड ऑन थर्सडे स्कोर और किल्स, स्कोर और अब गोल्ड की बात करें दोनों में, वो बढ़त गोल्ड की जो है वो अभी ओनिक्स ई स्पोर्ट्स के हाथों में है और किल जो है वो समान है। लॉर्ड के साथ आगे बढ़ती हुई टीम निचली भाग में लॉर्ड जाता हुआ, क्या ये समाप्त है?
क्या ये समाप्ति है चिन्ना भाई? देखिए एंड करने में जो टीम ऑनिक ई स्पोर्ट्स है वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ काम करती है, काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ उनका जो है जो आता है एक तरीके से कहते हैं ना कि माइक्रो जो आता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो शायद हो सकता है एंड होता हुआ हमें दिख सकता है, लेकिन एस्टेस का जो हील है वो दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है, लेकिन उसी के साथ एक ब्यूटीफुल सेट लगाते हुए एस्टेस यहाँ पे फ्रीज़ का इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन लॉर्ड अभी भी देखिए चार्ज करता हुआ जाएगा बेस की तरफ, मिनियंस का आने की प्रकार यहाँ पे रहेगी और उसी के साथ एक अच्छा ये अल्टीमेट आएगा ईव का और रोकने का प्रयास किया गया है। मिनियंस गायब होंगे, पंचर का इस्तेमाल किया है, लैंसलॉट यहाँ पे रहेंगे लेकिन अल्टीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं पीछे से शैडो किल लगाते हुए हायाबुसा 2 किल यहाँ पे जो है धाराशाही करेंगे, डबल किल ट्रिपल किल लेने का प्रयास करेंगे, क्या यहाँ पे ट्रिपल किल मिलेगा देखने की वाली बात होगी और लैंसलॉट एक अच्छा प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं लेकिन ट्रिपल किल हायाबुसा के हाथ लगेगा और ये गेम जो है एंड की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा। सिर्फ एप्स्टीन यहाँ पे जिंदा रहेंगे, क्या वो ये डिफेंड करने का प्रयास करेंगे जरूर, क्या वो लेकिन डिफेंड कर पाएंगे ये जरूर बात होगी। जी नहीं, बिल्कुल मेगा किल उठा लिया है और लेकिन जो टाइम है वो भी आ चुका है। उसी के साथ एस्टेस वो आए जरूर बचाने का प्रयास करना चाहते हैं, टीम पूरी तरीके से जुटी हुई होंगी। इसके साथ यहाँ पे लैंडिंग फ्लेयर का इस्तेमाल करते हुए रोकने का प्रयास किया जाएगा, मिनियन जरूर बेस पे रहेंगे तो एक अच्छा कोशिश रह सकता है। प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, लैंसलॉट आ चुके हैं और ये जो है उन्होंने भी जो ऑनिक्स स्पोर्ट्स उन्होंने भी भाव कर लिया, इसलिए पीछे हट जाएंगे इस समय, ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, उनको पता है कि अभी पीछे हटना पड़ेगा। ये अच्छा क्रोनो डैश आएगा, लैंसलॉट अकेले पकड़े जाएंगे और मेगा किल यहाँ पे देके जाएंगे एरएनसी के हाथ में और इसी के साथ एक भारी गलती। अब अपना बेस बचाइए लैंसलॉट जी, अभी आपको जो है बेस की जरूरत है किल्स की नहीं और इसी के साथ यहाँ पे लैंसलॉट को जो है रिकॉल स्प्रॉन की तरफ भेजा जाएगा और लेन्स अभी भी लगातार प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि लेन्स अभी तो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन एक गलती हो सकती है एरएनसी की, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, अगर आप पकड़े जाएंगे अभी तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्रोनो डैश लगाएंगे अंदर घुसते हुए टावर के अंदर, एक अच्छा सेट आता हुआ हमें दिख सकता है लेकिन लैटिन फ्लेयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लापू लापू बहुत ही कम एचपी बचेंगे, लेकिन यहाँ पे धाराशाही होने के पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद पंचर आता हुआ पीछे से डैमेज देने का प्रयास, एक अच्छा सेट बदांग की तरफ से खूबसूरत सेट लगाते हुए, क्या यहाँ पे एंड होगा देखना पड़ेगा और उसके साथ हायाबुसा एक बढ़िया किल उठाते हुए ट्रिपल किल उठा चुके हैं। उसके साथ पीछे क्रोनो डैश आता हुआ और इस क्रोनो डैश के साथ एक ही मिनट के साथ यहाँ पे जो गेम है वो एंड होता हुआ जाएगा और उसी के साथ 3-0 आता हुआ हमें देखा। बेहतरीन पारी यहाँ पे चलती हुई और इसी के साथ जॉनिक्स स्पोर्ट्स है एक दबदबा सेट करते हुए गई आगे, 3-0 का स्कोर एसटीजी यहाँ पे। 3-0 के साथ कांग्रेचुलेशन टीम ऑनिक्स esports को for getting that spot into the LAN qualifier, into the LAN of Arunoday Esports Championship, which is going to happen at Arunachal. LAN क्वालिफाई कर गई है ओनिक्स esports और सिर्फ LAN ही नहीं बल्कि दिल को क्वालिफाई कर गई है क्योंकि 3-0 वो भी 10 मिनट मतलब पहले तो 9 मिनट 59 सेकंड, फिर 9 मिनट 30 सेकंड, फिर 11 मिनट तक 11 मिनट के बाद जो है गेम थोड़ा चला गया था। मायने नहीं रखता, जीत मायने रखता है। 3-0 हर एक मैच पे। ये मैच लड़खड़ाए थे स्टार्टिंग में। लगा था कि टीम वीकेंड ऑन थर्सडे जो है वापसी करेगी, लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा किस तरीके से इनके जो कोर मेंबर है एरेंस्की मैच को चेंज करते हैं। बंदा स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं किसी भी टीम फाइट में, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी नहीं दिखेगा, पूरा सेफ खेल रहा होगा। तुरंत अपना स्पाइक मिलेगा, 5-7 मिनट कटेगा अपने लेन में, एक टरेट गिराएगा, फिर उसका रोटेशन आप देखोगे जब भी रोटेशन देता है बंदे का डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि भाई पूरा गेम को चेंज करके रख देता है। इसी के साथ-साथ जो है एमवीपी मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं एरेंस्की ही ले रहे हैं शिन्ना भाई क्योंकि भाई और कौन है यहाँ पर एमवीपी लेने वाला? गेम तो चेंज किया बंदे ने, एक्स फैक्टर है, कैरी किया। अब बोल सकते हैं कि हायाबुसा ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको सिक्योर किया है पूरे गेम में। जी, बिल्कुल, लेकिन मेरे को भी लगता है शायद यहाँ पे एरेंसी के ही बनने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है डैमेज उनका बहुत भरपूर आ रहा था टीम फाइट्स पे। अंदर गए थे टावर के अंदर क्रोनो डैश लगा के जिस प्रकार से उन्होंने खेला था और उसी प्रकार से एक टीम फाइट पे भी पूरी तरीके से लेकिन कहीं न कहीं आप कह रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा कि हायाबुसा उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव लिए हैं फाइट पे। फिर बात हो टर्टल लेने की, लॉर्ड लेने की और उसके साथ आप नोटिस करेंगे एक चीज़ उन्होंने जो है टावर पुश वो भी किया था। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है शायद यहाँ पे जो है एमवीपी वो बनते हुए दिखेंगे, लेकिन एक बड़े यहाँ पे जो एमवीपी बनते हुए हमें दिखे, बिग ब्रेन जो है यहाँ पे, ईव जो है वो यहाँ पे एमवीपी बनती हुई दिखी। एक बेहतरीन तरीके से इनको कैसे भूल सकते हैं।
पूरे ही टीम फाइट पे अवेलेबल थी, डैमेज अच्छी तरीके से दे रहे थे बार-बार और एक बढ़िया पारी चलती हुई। बढ़िया यहाँ पे गेम प्ले आता हुआ दिखा था। एमवीपी हाइलाइट्स की बात करें, देखिए बादाम का वो सेट आता हुआ मैं दिखा, सीधा लॉकडाउन किया था एसटेस के ऊपर। उनको पता था कि ये कमज़ोर कड़ी है और इसी के समय यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से खेला इन्होंने। ज़रूर, ये एमबीपी हाइलाइट्स दिखा रही है किस तरीके से जो है उनका पोजीशन और उनकी टीम फाइट पार्टिसिपेशन कामयाबी दिलाई है उनकी टीम को। जब फाइट बैक कर रही थी टीम तब उनका ज़रूरत था और आपने देखे होंगे कि टॉप लेन पे एक फाइट हुई थी जहाँ पे फेडरन उनके ऊपर हावी हो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े से एचपी में वो बच गए थे और अपना अल्टीमेट भी यूज़ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस हिसाब से इस चीज़ को गिराया था वहाँ पर सेकंड टियर के पास जो फाइट हुई थी रेड बफ के पास, वो जगह पे आप अगर देखोगे जो डैमेज थी बिग ब्रेन की तरफ से वो बहुत ज़्यादा थी। ये वाली फाइट मैं इसकी बात कर रहा था। देखिए जहाँ पे एक थोड़ा-सा जो लगा था कि मोमेंटम चेंज करने वाला मौका मिला था टीम ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स को। तो यहीं से ही तो जी। सब कुछ स्टार्ट हुआ, इसी लेन से ही। यहीं पे जो है रोटेशन दिखने को मिला था हमें हैरिथ का, यानी कि एरेंस्की का। हुँ। तो यहीं से वो गेम चेंज हुआ था। वो किल्स का जो सिलसिला है, वो ये देखिए, ये वाला वो मोमेंटम था जहाँ पे सब कुछ बदल दिया था एरेंस्की ने। एक रोटेशन दिया था, निचली भाग से ऊपरी भाग का ये जो सफ़र था उनका, सफ़र दे दिया, इंग्लिश वाला सफ़र दे दिया उन्होंने टीम वीकेंड ऑन थर्सडे को। और आज थर्सडे है नहीं, वेडनेसडे है, लेकिन आज भाई आज ही वीकेंड कर दिया, आज ही पोटला बाँध के उनको भिजवा दिया और खुद का पोटला जो है सीधा अरुणाचल प्रदेश में फेंका है। लैन क्वालीफाई कर चुकी है ये टीम। यामा ई-स्पोर्ट्स के साथ-साथ जो है आज दूसरी टीम जो है ओनिक्स ई-स्पोर्ट्स, दोनों जो है कांग्रेचुलेशन के खिताब है। ये दोनों ने जो है आज लैन क्वालीफाई वाला गेम खेला था। एक 3-1 से जीता है, एक 3-0 से जीता है। स्टार्टिंग अच्छा हुआ था, एंड जो है वो अच्छा नहीं गया टीम वीकेंड ऑन थर्सडे का इस तीसरी गेम पर डू और डाई गेम था। अपना सब कुछ झोंकना था यहाँ पर और झोंके भी थे। एक अच्छी ड्राफ्ट के साथ आए थे, एक माइंड प्ले के साथ आए थे लेकिन एंड तक जो है चला नहीं वो माइंड गेम। एंड तक जो है ड्राफ्ट का भरोसे जो मैच चल रहा था वो चला नहीं, वो लैंसलॉट गोल्ड लेन जो है वो चला नहीं। जी, बिल्कुल। और देखिए वही भारी पड़ गया वहाँ पे उनके ऊपर। लेकिन एक बेहतरीन तरीके से जो पारी यहाँ पे चलते हुए दिखी थी और उसी के साथ यहाँ पे कुछ देर पे जो है मैच रिज़ल्ट वो भी आप सभी के सामने आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से वो आएगा और बेहतरीन पारी यहाँ पे चल रही थी टीम्स की। एक बेहतरीन जो है यहाँ पे पारी चली उन्होंने 0-3 यहाँ पे देना 0-3 उसके साथ-साथ 2 गेम्स आपके जो है 10 मिनट के अंदर-अंदर ही खत्म किए थे। और उसी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे बनते हुए जाएँगे, बिग ब्रेन 9.9 का जो है यहाँ पे इनका रेटिंग्स रहा। उसी के साथ बात करें डैमेज टेकन की तो 13%, डैमेज डेल्ट यहाँ पे 29% इनका रहा, 77 जो है किल पार्टिसिपेशन और जिसके साथ एनिमाइजेशन की बात करें तो ये आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर और किल की बात करें तो 4 किल लिए थे उन्होंने, डेथ इनके 2 हुए थे, 13 असिस्ट इनके टीम में रहे और एक डिजर्विंग एमवीपी रहे यहाँ पे फूक और डैमेज उनके ही द्वारा यहाँ पे दिया गया था बेहतरीन तरीके से और उसी के साथ जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसटीजी 3 मैच, 3 अलग-अलग एमवीपी। पहले मैच में आपने देखा कि कैसे एरेंस्की ने एमवीपी लिया क्लॉट से, दूसरे मैच में हमने देखा पेरिडॉट अपने घटोत्कचा से एमवीपी लिए। तीसरे मैच पे हमने देखा कि वो बिग ब्रेन जो है, उन्होंने एमवीपी लिया और ये देख सकते हैं आप केडीए। वीकेंड ऑन थर्सडे कामयाबी नहीं दी उनकी ये आइटम्स। बनाए थे, अच्छा खेले थे लेकिन मौका इबादत में काम नहीं दिया। 22-14 का ये स्कोर, टीम ओनिक्स ई स्पोर्ट्स बनती है चैंपियन। एम्बलम सेटअप चलाने वाला है और वो उसी के साथ हमें देखने को मिलेगा कि क्या एम्बलम बनाए थे ऐसा एरेंस की इतना ज़्यादा डैमेज आ रहा था भाई। मतलब एक एक मोमेंटम भाई था कि जहाँ पे 5-2-7 उनका केडी भी कुछ कम नहीं है। एसेस ज़रूर ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर। विंगमैन बनेंगे ज़रूर बिग ब्रेन, कैरी बनेंगे ज़रूर अब हमारे दिन यानी कि आपके हायाबुसा, कैप्टन हैबॉक। हुँ। लेकिन एरेंस की गेम चेंजर, गेम को कंट्रोल किया था लेट गेम पे, लेट नहीं मिड से लेट वाली गेम पर जो है दबदबा दिखाया था और वो डैमेज भाई क्या डैमेज था, मैजिक पेनिट्रेशन कर रहे थे टैंक की मेंबर्स को। एस्टिस पीछे खड़ा था लेकिन इतना ज्यादा एंटी हिल आ रहा था कि हील काम ही नहीं कर रहा था।
और जी, ये देखिए बिल्कुल एक बार्गेन बेहतरीन हंटर, इम्प्योर रेज, ये भाई ये दोनों आइटम्स जो है खिलवाड़ वाले आइटम है भाई। और हायाबुसा को देखिए कैसे अपने मास्टर असासिन के साथ रप्चर और थोड़ा-सा जो है थ्रिल हेड टू हेड में आ गए यहाँ पर एस्टिस यानी कि वीकेंड ऑन थर्सडे के रोमर गुम गुमो गमो गमो एंड बिग ब्रेन का ये हेड टू हेड या हेड टू टो आप जो भी बोल सकते हैं भाई। मुझे कुछ नहीं कहना है यहाँ पर। जी, बिल्कुल। और देखिए ये बेहतरीन तरीके से खेले। यहाँ पे 4-2-13 का स्कोर रहा था। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो सैंडबैग हमारे जो है यहाँ पे वो रहे लापू-लापू। वो ज़रूर यहाँ पे उन्होंने जो है अच्छी तरीके से डैमेज पूरा सोक अप किया था और वही टॉप लेन पे जो है यहाँ पे गए थे। उसे देखा जाए तो रिज़गाई अपने जो है यहाँ पे हायाबुसा रहे। दूसरी साइड पे देखा जाए तो जो कैरी वो हमारे यहाँ पे जो है बिग ब्रेन रहे ईव के तौर पे और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो विंग मैन वो पेरिडॉट रहे यहाँ पे एज़ अ बादाम प्लेयर बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो सेट वो प्रदान करे थे अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को जो है विजय ध्वज की तरफ लहराते हुए 4 धराशायी यहाँ पे जो योद्धा हैं, ये इस युद्ध भूमि में खड़े आप लोगों के सामने और अपनी टीम को आगे ले जाते हुए बेहतरीन तरीके से इनका जो प्रदर्शन था, वो इस मैच की तरफ रहा। 3-0 का ये स्कोर और ओनली ओनिक्स स्पोर्ट्स जो है, वो इस मैच को आज जीतते हुए हम सभी के सामने चलती हुई जाएगी सीधा लैन के लिए क्वालीफाई करते हुए। एसटीजी। कांग्रेचुलेशन फिर से अदा करूंगा यहाँ स्पोर्ट्स को और ओनिक्स ई स्पोर्ट्स को उनकी लैंड क्वालिफिकेशन के लिए। अरुणोदय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज ऑनलाइन फेज जो है वो खत्म हो रहा है। दर्शकगण जल्द लौटेंगे, लैंड के साथ लौटेंगे। प्रदेश में होने वाली ये लैंड डेट्स और टाइमिंग जो है वो जल्द रिवील होने वाले हैं। अगर आपको जानना है, इन्फो पाना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सोशल हैंडल्स को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही जो है अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ और बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए भी। मिलते हैं। ऑनलाइन फेज तो खत्म हो रहा है लेकिन ऑफलाइन फेज यानी कि लैन फेज जो है वो आने वाला है और उसके साथ जो है बहुत ज्यादा और रोमांचक भरे फाइट्स एक्साइटमेंट वाले चीजें जो है वो भी आएंगी। मैं एसटीजी मेरे साथ चिन्ना भाई साइन ऑफ करते हैं आज अरुणोदय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप से। मिलते हैं आपको लैन में। शुक्रिया, थैंक यू, सबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार, लोकल शोज का भरमार, टीवी चैनल्स भी रेडी एवरीवन है तैयार। एंटरटेनमेंट जोरदार, are you तैयार? मेरे स्मार्ट टीवी में तो ये सब नहीं। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट टीवी बन गया है। सुपर फास्ट वाईफाई अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सुपर फास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे स्टार्स, Amazon प्राइम वीडियो मजेदार,